Depends, Verma. It totally depends. Now I'm turning off the chats, okay? I'll study in focus mode. We'll talk in break time. मैं तब chats on कर देती हूँ. अभी I turned it off. Xylem differentiation, cell division, root in stem cutting, adventitious root. Flowering in pineapple, auxin flowering in pineapple, parthenocarpy. Herbicides 2,4-D is herbicides. 2,4-D is herbicide addition. Apical dominance and prevent root and leaf drop at early stage. Auxin, Greek auxin, to grow, was the first isolated from human urine. Here, let me make it somewhere. Auxin was first isolated from urine, human urine. First isolated, okay, to grow. Means to grow. Growth promoting EGR, isn't it? Plant growth promoter, auxin, gibberellin, and cytokinin. Plant growth promoters. Example, auxin. Plant growth promoter. Example, auxin, gibberellin, and cytokinin. Plant growth regulator. Plant growth promoter. Plant growth promoters, auxin, gibberellins, and cytokinin. Auxin, gibberellin, and cytokinin. Plant growth promoters. Example, auxins, gibberellins, and cytokinins. The PGR of other groups may play an important role in plant response to wounds and stress of biotic and abiotic origin. They are also involved in various growth inhibiting activities such as dormancy and abscission. Dormancy and abscission. The PGR, abscisic acid belongs to this group. Okay, abscisic acid, carotenoid, right? ABA, yeah. The gaseous PGR ethylene could fit either of the group but is largely an inhibitor of growth activities. Okay, auxin, to grow, means to grow. First isolation. First isolated from human urine. First isolated from human urine. Human urine. They are first isolated from human urine. The term auxin is applied to the indole 3-acetic acid IAA and to other natural and synthetic compounds having certain growth regulating properties. Auxin includes ICLUDS includes indole 3-acetic acid SY synthetic and natural auxin. Synthetic and natural
compounds. So other synthetic and natural compounds having the growth regulating properties. They have growth regulating properties. 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 Okay. Plant growth regulator, first isolated from human urine, includes IAA, indole 3 acetic acid. Synthetic and natural compounds are also included. They are generally produced by growing apices of stamen roots. They are generally produced by growing apices. Produced by growing apices. Growing apices, root and shoot. Growing apices of a stamen produced by growing apices, roots and shoot, roots and stem, roots and stem, produced generally by growing apices, stems and roots. From where they migrate to the region of their action. They migrate to their region of action, auxin. Migrate from tip or apices to the region of action. Migrate to region of action. Migrate to region of action. Migrate to region of action. Auxin like IAA, indole 3 acetic acid and indole butyric acid IBA have been isolated from plants. Auxin isolated from plant. Isolated from plant. Plants are IAA, indole 3 acetic acid, and IBA, indole butyric acid. These are indole 3 acetic acid and indole butyric acid. These are the two auxins isolated from plants. NAA, naphthalene acetic acid, and 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic. 2,4-dichlorophenoxyacetic. 2,4-dichlorophenoxyacetic are synthetic auxin. Okay, naphthalene, Na, naphthalene acetic acid, and 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic. 2,4-dichlorophenoxyacetic are synthetic auxins. All these auxins have been used extensively in this affecting large area in horticulture and agriculture and horticulture practices. Auxin, plant. Auxin isolated from plant is IAA, indole 3 acetic acid, indole butyric acid. Synthetic auxin. Synthetic auxin are, number 1, we have NAA, naphthalene, NAPTHELE, naphthalene acetic acid is synthetic auxin. Acetic acid, naphthalene acetic acid, auxin, growth promoter. Okay, the another synthetic auxin is NA, naphthalene acetic acid, and the other one is Na and 2,4-D, 2,4-dichloro, phenoxyacetic, 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic, 2,4-dichlorophenoxyacetic. NAA, naphthalene acetic acid, 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic are synthetic auxins. Auxins are used in extensively, SIVELY, extensively used in
Agriculture, agriculture, CULTURE, agriculture and horticulture, HORT, horticulture. Auxin means to grow. Okay, growth. Okay. First isolated from human urine, it includes IAA, indole 3 acetic acid, IBA, indole butyric acid, NAA, naphthalene acetic acid, along with 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxy acetic. Okay, it can be both synthetic and natural. Growth regulating properties. They have auxin have growth regulating properties produced by growing apices of root and stem. From there, they migrate to their action region of action. Auxin isolated from plants are IAA and IBA. Synthetic auxin are NAA and 2,4-D. Extensively, they are used in horticulture and agriculture. Okay. They help to initiate rooting in stem cutting. Okay, this is the function. Okay, helps to initiate rooting in stem cuttings, an application widely used for plant propagation. Auxin promote flowering in pineapples. They help to prevent fruit and leaf drop at early stages, but promote abscission of older mature leaves and fruits. Okay, these are the functions of TIONS, functions of auxin. Functions of auxin. First, they helps in rooting. They helps in rooting in stem cutting. CUTTNG. Propagation of plant traits. Application widely used for plant propagation. Plant propagation. It's okay. Plant propagation. It helps in rooting in stem cutting. Plant propagation. The other one is induce flowering in pineapple. Auxin promote flowering in pineapple. Promote flowering in pineapples. Promote flowering. Flowering in. Promote flowering in pineapple. Okay, auxin promote flowering in pineapple. Then we have it helps prevent. Okay, helps prevent, PREVENT, to prevent fruit and leaf drop. LEAF, leaf drop, DROP. Helps prevent fruit and leaf drop at early stage. Helps to prevent fruit and leaf drop at early stage. Stage. Helps to prevent leaf drop at early stage. Promote the abscission of older mature leaves and fruit. It promotes abscission. 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 They promote abscission in old plants, older leaves and fruit. Older leaf and older mature. Okay, leaf and fruits. FRUITS. Mature. Older mature leaves and fruit. Okay, these are the 4 functions. They help to prevent abscission of younger leaves and fruit, or we can say they helps to prevent leaves and fruit abscission when they are
at their young stage. The other one is they promote abscission of older leaves and fruits. They promote flowering in auxin promote flowering in pineapple, and it is used for rooting, plant propagation. These are the four functions of auxin. In most higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of lateral axillary buds, a phenomena called apical dominance. Removal of shoot tips, decapitation, usually results in the growth of lateral bud. Okay. In most higher plants, growing apical bud inhibits the growth of lateral axillary buds, a phenomenon called apical dominance. Okay, so what is apical dominance? Apical dominance. Apical dominance. Promote, PROMO, promote the growth of apices, shoot apices, right? The growing apical bud inhibits the growth of lateral. Okay, promote the growth of apices. Apices only. Apical bud inhibits the growth of lateral axillary bud. Growing apical bud inhibits. Apical bud inhibits. Birds inhibit. Apical birds inhibit. Apical bud inhibits the growth of lateral birds. Lateral birds. Okay, promote the growth of apices only. Apical bud inhibits the growth of lateral birds. Lateral birds, axillary, AXILLARY, axillary birds. Lateral birds are axillary birds. A phenomenon called apical dominance. Removal of shoot tip. Decapitations usually result in the growth of lateral birds. Removal of shoot tip. Decapitation. I am too embarrassed. Decapitation. 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 Removal of upper tip. Removal of shoot tip. Decapitation usually result in the growth of lateral birds. Decapitation helps to overcome apical dominance. Apical dominance. Decapitation helps to overcome apical dominance. Decapitation, removal of stem tip, helps to overcome apical dominance. Decapitations. Result, RESULT, resulting in the growth of GROWTH, growth of apical not apical, it's lateral birds, resulting in the growth of lateral birds. Okay, growth of lateral birds. It is widely applied in tea plantation and haze making. Applied in tea plantation and hedge making. Apical domination, decapitation, growth of lateral birds. Okay, then we have, it is application seen in tea plantation and hedge making. That's it. Most higher plants, the growing apices bud inhibits the growth of lateral axillary bud, a phenomena called apical dominance. Removal of shoot tip, decapitation usually results in the growth of lateral buds. Okay, tea plantation, haze making. Auxin also induce parthenocarpy. Example in tomatoes. They are widely used as herbicides. Okay, induce parthenocarpy. I have written it here. Flowering plant, parthenocarpy in tomato. Okay.
Auxin also induce parthenocarpy, example in tomatoes. Okay. They are widely used as herbicides. Auxins are usually used as herbicides. 2,4-D, widely used to kill dicotyledonous weed. Okay, dicotyledonous weed. 2,4, excuse me, 2,4-D. Dichlorophenoxyacetic. Widely used to kill dicotyledonous weed. Does not affect mature monocot plants. Does not affect mature monocotyledonous plant. It is used to prepare weed-free lawns by gardeners. Auxin also controls xylem differentiation and helps in cell division. Auxin functions. Number 1, parthenocarpy. Parthenocarpy induces parthenocarpy in tomato. Parthenocarpy in tomato. Induce parthenocarpy. Then we have induce, okay, function of auxin. Induce parthenocarpy in tomato. Then other we have, okay, 2,4-D as herbicides. CIDES. Herbicides kills dicotyledonous weed, promoting the growth of monocot. Then we have parthenocarpy. Okay, dicot को growth लाई promote गर्छ, dicot को growth लाई monocot को growth लाई promote गर्छ, dicot को के हुन्छ weeds लाई eliminate गरिदिन्छ. Then what else we have? Okay, weed-free lawns by gardeners. Auxin also controls xylem, xylem differentiation, xylem differentiation and cell division. It also controls xylem differentiation and helps in cell division. Helps in cell division. Controls xylem differentiation and helps in cell division. These are the function of auxin. Here we have some mere plant growth hormone. Phytohormones. These are phytohormones. Okay. Adenine derivatives. Purines or kinetin, cytokinin. Okay. N6-furfurylamino-purine. N6-furfurylamino-purines, kinetin. Terpenes, gibberellic acid. PGRs are involved in promoting activities such as cell division, cell enlargement, pattern formation, tropic growth. Cell division, cell enlargement, pattern formation, tropic growth, flowering, fruiting and seed formation. Flowering, fruiting and seed formation. Formation of seed. Okay, seed formation. Seed formation. Buttercup, heterophily, buttercup, terrestrial habitat, water habitat, environment, juvenile and adult, coriander, larkspur and cotton. FW went, oat, bacani, foolish seedling, rice seedling, fungal pathogen, Gibberella fujikuro, E. kurosawa. Gibberellic acid, F. Skoog and co-worker, internodal tobacco stem, internodal segment of tobacco stem. Skoog and Miller crystallized the cytokinin. Okay, kinetin, cytokinin. Okay, cytokinins is promoting active substance. Okay.
abscisic acid. Cousin volatile ripened orange, volatile substance. Okay, this is PGR, gaseous PGR ethylene, gaseous PGR ethylene. Gibberellins, they are derivatives of terpene, right? Derivatives of gibberellic acid, terpenes. Gibberellic acid, terpenes. Gibberellins are another kind of PGR, plant growth regulator. There are more than 100 gibberellins reported from widely different organisms such as fungi and higher plants. Okay, gibberellins. These are gibberellins. 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 Terpenes. Gibberellic acid. Gibberellic. Gibberellic acid. Terpenes, gibberellic acid, terpenes, gibberellic acid. Is it gibberellic acid? Terpenes, 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 gibberellic acid. Okay. Gibberellins are another kind of PGR, another plant growth regulator, PGR. Hundreds of gibberellins are isolated. More than hundreds of gibberellins reported from widely different organisms such as fungi and higher plants. Hundred of gibberellins, Gibberellins, gibberellins. Hundreds, more than hundreds of gibberellins are reported from widely different organisms such as fungi and plants. From fungi and higher plants. Fungi, gibberellins from fungi and higher plants. Higher plants, okay. Gibberellic acid. Okay. Hundreds of gibberellins from fungi and higher plants. Hundreds of gibberellins from fungi and higher plants, okay. Gibberellins reported from widely different organisms such as fungi and higher plants, okay. They are denoted as GA1, GA2, GA3 and so on. They are denoted as gibberellic acid 1, gibberellic acid 2 and GA3 and so on. However, GA3, gibberellic acid, was one of the first gibberellins to be discovered. First discovered COVERED, discovered gibberellin, GIBBERELLINS, gibberellins is GA3, that is gibberellic acid. GIBERELLIC, gibberellic acid, GA3, gibberellic acid, GIBBERELLIC. Gibberellic acid, GA3, was the first gibberellins to be discovered and remains the most extensively studied. GA3, most extensively studied. GA3, gibberellic acid, most extensively, SIVELS, extensively studied, most extensively studied. Okay, GA3. GIBBERELLINS are denoted by GA1, GA2, GA3 and so on.
However, gibberellic acid Ga3 was one of the first gibberellins to be discovered and remains the most intensively studied from all GAS are acidic. However, gibberellic acid Za3 was one of the most G1, Ga2 and Ga3 and so on. However, gibberellic acid is Ga3. First discovered gibberellins, Ga3 gibberellic acid, was one of the first gibberellin to be discovered and remains the most extensively studied from all GAS. Okay, all GAS, all gibberellic acids or gibberellins are acidic. All GAS are acidic. All GAS are acidic. They are acidic. They produce a wide range of physiological response to plant. Their ability to cause, they produce a wide range of physiological response in plant. Their ability to cause an increase in length of axis is used to increase the length of grape stalk. Gibberellins cause fruit like apple to elongate and improve its shape. They also delay senescence, thus the fruit can be left on the tree longer so as to extend the market period. Ga3 is used to speed up the malting process in brewing industry. Sugarcane stores carbohydrate as sugar in their stem. Spraying sugarcane crop with gibberellins increase the length of the stem, thus increasing the yield by as much as 20 tons per acre. Spraying juvenile conifers with the GAS hasten the maturity period, thus leading to the early seed production. Gibberellins also promote bolting, internode elongation just prior to flowering in beet, cabbages, and many plants with rosette habitat or habit. I'll watch a video lecture, okay? Plant growth and development. Mritu ma'am. जल्दी लर्न कर लोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है. ध्यान से सुनो. Produced in shoot wherever there is cell division. Wherever there is cell division. अब तुम मुझे बताओ, शूट के अंदर सेल डिवीजन तुम्हें कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा? शूट एपेक्स में मिलेगा, ठीक है? शूट एपेक्स में मिलेगा क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, ठीक है? ऑक्सिन भी प्रोड्यूस होता है, उससे साइटोकिनिन भी प्रोड्यूस होता है. ऑक्सिन ज्यादा होता है, जो ये टॉप वाला है ऑक्सिन ज्यादा होता है, ठीक है? लेकिन साइटोकिनिन भी होगा, तो शूट एपेक्स में प्रोड्यूस होगा. देन हर ब्रांच जो निकलती है ना बेटा, ये जो लेटरल, ये जो बड है ना, एक्सिलरी बड, मान लो ये ब्रांच बना दी है, हर ब्रांच के टिप पे भी आपका वो है एपिकल मेरिस्टम है. तो एपिकल मेरिस्टम लिखो भाई, जनरल हर एपिकल मेरिस्टम में साइटोकिनिन प्रोड्यूस हो रहा है. देन लीफ ग्रो कर रहे, तुम्हें क्या लग रहा है कैसे ग्रो कर रहे हैं? इनके अंदर भी मेरिस्टेमेटिक यंग लीव्स बन रही है, वहीं पे प्रोड्यूस होके वहीं से लीव्स की ग्रोथ करा रहा है, कॉजेस ग्रोथ ऑफ लीव्स. इसको जो मिलेगा वो ग्रो कराएगा ये शूट में, कोई इसको कोई तमीज नहीं है. यंग बर्ड्स में, ये मान लो ये बर्ड्स है, ये लेटरल बर्ड्स है, ठीक है? लेटरल बर्ड्स में मेनली साइटोकिनिन प्रोड्यूस होता है, एपिकल बर्ड में मेनली ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है? लेटरल बर्ड्स में प्रोड्यूस होता है. लेटरल बर्ड्स को ब्रांच में ग्रो करने के लिए वो करेगा, इंस्टिगेट करेगा. तो इसकी बात नहीं मानती, ये कहता तो है साइटोकिनिन आओ ब्रांचिंग करेंगे, तो इनका बाप ऊपर से रोक देता है ऑक्सिन की. एपिकल डोमिनेंस कहाँ जाएगी? तो साइटोकिनिन हमेशा ही फाइट करता है ऑक्सिन से एपिकल डोमिनेंस को खत्म करने के लिए. वैसे साइटोकिनिन और ऑक्सिन भाई भाई सेल डिवीजन कराते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा है. ऑक्सिन कहता है लेटरल बर्ड्स को ग्रो, दोनों साइटोकिनिन कहता है ग्रो कराऊंगा.
तो साइटोकाइनिन ऑब्वियसली हारता है, तभी तो एपिकल डोमिनेंस है। जैसे ऊपर वाला काटोगे साइटोकाइनिन ग्रो करेगा, ग्रो करो, ग्रो करो, चलिए 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 ऊपर वाला चलिए, अरे ग्रो करो, ग्रो करो। तो ये लेटरल बड्स में मिलेगा, यंग बड्स में मिलेगा, वहाँ पे बड्स की ग्रोथ करा देगा। लीव्स में मिलेगा, लीव्स की ग्रोथ करा देगा, शूट में मिलेगा, शूट मतलब कुछ छोड़ेगा नहीं यार ग्रोथ कराने में। इवन फ्रूट, यंग फ्रूट्स में मिलेगा, क्योंकि यंग फ्रूट्स में भी तो सेल डिवीजन हो रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है एप्पल पहले इतना सा होता है, इतना बड़ा कैसे होता है, सेल डिवीजन से ही हो रहा है ना। यंग फ्रूट्स में यंग फ्रूट्स की ग्रोथ करा देगा। हर जगह शूट में इसको कुछ भी मिलेगा, ये ग्रोथ ही कराएगा। मेरिस्टेम मिलेगा, हर ब्रांच के एंड में मेरिस्टेम है यहाँ पे, हर बड में मेरिस्टेम है यहाँ पे, सबको ग्रो कराएगा। हर लीफ में मेरिस्टेम है, उसको ग्रो करेगा। हर फ्रूट में मेरिस्टेम है, उसको ग्रो करेगा। ठीक है, हर जगह सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन का नाम कहाँ से आया? साइटोकाइनेसिस से है ना। अरे है, अरे मैं ही टच कर रही हूँ क्या इसको? साइटोकाइनेसिस से आया है ना। अरे यार shoot buds developing क्या shoot नहीं मानोगे? root aphysis developing shoot buds young fruit etc. साइटोकाइनेसिस से नाम है। साइटो मतलब सेल, काइनेस मतलब काइनेसिस, सेल डिवीजन। इसको शूट में बेटा जहाँ सेल डिवीजन वहाँ रहेगा, रूट को नहीं ज्यादा। ठीक है, इसलिए तो कैलरीज में जो साइटोकाइनिन ज्यादा डालते हैं तभी वो शूट ग्रो कर देते हैं। इसके फंक्शन हो चुके हैं बेटा। ठीक है, आगे कहाँ प्रोडक्शन होगा? एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन में सब जगह प्रोड्यूस होगा। इन शूट रैपिड सेल डिवीजन। जय माता दी बोलो। साइटोकाइनिन शुरू करें सेल डिवीजन। इसको शूट में बेटा जहाँ Produce and shoot whenever there is cell division. Produce and shoot whenever there is cell division. Whenever there is cell division. Okay. Cytokinin. Produce and shoot whenever there is cell division. Produce and shoot whenever there is cell division. Produce and shoot whenever there is cell division. Shoot apex, apical meristem. Produce and shoot whenever there is cell division. Number 1, shoot apex. Shoot apex. SHOOT. Shoot apex. Then lateral. Shoot apex, apical meristem. Shoot apex, apical meristem. Meristem. Lateral meristem. Lateral birds. Young leaves. Lateral birds. Lateral birds. Lateral birds. Growth, okay. Lateral apical apices. Shoot apex. Lateral birds. Cytokinins are found in shoot apex, lateral birds, young leaves and young fruits. Young leaves and young fruits. Young leaves, LEAVS, leaves and young fruits. Shoot apex and lateral birds. Young fruit growth causes growth. Young fruits, okay. Cytokinesis. Cytokinesis. Cytokinins. Cytokinesis. Cytokinesis. Cell division. Cell division. Cell division. सेल डिवीजन में वहां कराएगा, रूट्स को नहीं ज्यादा चलते। ठीक है, इसलिए तो कैलस में जब साइटोकाइनिन ज्यादा डालते हैं तभी वो शूट ग्रो कर देते हैं। इसके फंक्शन हो चुके हैं लर्न बेटा। ठीक है, आगे कहाँ प्रोडक्शन होगा? एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन में सब जगह प्रोड्यूस होगा। इन शूट रैपिड सेल डिवीजन, इन शूट, क्योंकि रूट में भी रैपिड सेल डिवीजन होता है लेकिन वहां नहीं प्रोड्यूस होता है। ठीक है, होता है कम होता है, होता तो ठीक है कम होता है। शूट बर्ड्स, फ्रूट्स हर जगह। ठीक है, ये सेल डिवीजन की जिप लेके आई हूँ इतनी मुश्किल से। Production of cytokinin. Area of rapid cell division. Root apex. Shoot birds. Young fruits. Production of cytokinins. Production of cytokinin. Production of cytokinin. Production of cytokinin. Cytokinin. Kinin. Production of cytokinin. Cytokinin. Area of rapid cell division. Area of rapid cell division. Cell division. Area of rapid cell division. Area of rapid cell division. Root apex. Shoot birds. Root apex. Area of rapid cell division. Root apex. Shoot birds and young fruit. Shoot birds. SHOOT. Shoot birds and young fruit. Young fruit. YOUNG. Young fruit. Area of rapid cell division. Root apex. Shoot birds and young stem. Production of cytokinin.
मैं और मेरी टीम ढूंढते हैं, तुम्हें जिफ तो देखनी पड़ेगी बेटा, तभी आगे जाएंगे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अब साइटोकाइनिन की जो डिस्कवरी हुई थी, अब ये साइटोकाइनिन क्या है, एडेनिन डेरिवेटिव है, एडेनिन का स्ट्रक्चर मॉडिफाई है, एडेनिन मिलता है डीएनए में, तो आपको डीएनए ढूंढना पड़ेगा। ये हेरिंग फिश का स्पर्म ले लो, मेरे को तो ये समझ आता है साइंटिस्ट हेरिंग स्पर्म का फिश का स्पर्म के साथ कर क्या रहे हैं, ये हेरिंग फिश का स्पर्म है, उसको ऑटोक्लेव किया इन्होंने, ऑटोक्लेव किया, हीटिंग प्रोसेस है, तो इसका डीएनए डिग्रेड हो गया। इस डीएनए डिग्रेडेड सैंपल में से हमने ढूंढा साइटोकाइनिन को, क्योंकि एडेनिन का मॉडिफिकेशन है, तो डिग्रेडेड डीएनए में आप एडेनिन पढ़ोगे, वो मॉडिफाई होकर साइटोकाइनिन में, साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन एक कॉमन नाम है, जैसे ऑक्सिन एक कॉमन नाम है, उसमें आगे बहुत प्रकार के ऑक्सिन है, जैसे साइटोकाइनिन में बहुत प्रकार के साइटोकाइनिन है, इट्स अ ग्रुप ऑफ केमिकल जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, उसमें ये जो है काइनेटिन नाम का साइटोकाइनिन है, काइनेटिन, काइनेटिन नाम का साइटोकाइनिन हम लोगों को मिला। अब ये भी चैलेंज है याद करना, बट मेरे को क्यों याद रहता है मैं बताती हूँ। दो ही प्रकार के साइटोकाइनिन है, काइनेटिन और जियाटिन। जियाटिन हमने डिस्कवर किया था जियामेज से, जियामेज इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉर्न, मक्कई का नाम है। तो जब जिया मुझे याद है, तो दूसरा काइनेटिन ही बचा, जियामेज तो जियाटिन से हुआ, सॉरी जियाटिन तो जियामेज से हुआ था, प्लांट से हुआ था, पहला प्लांट से डिस्कवर होने वाला साइटोकाइनिन तो जियाटिन ही था ना। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ वो प्लांट से हुआ ही नहीं, वो एक कॉर्डेट के स्पर्म से हुआ है। बताओ, ऑक्सिन भी पहले प्लांट से नहीं आइसोलेट हुआ, नहीं डिस्कवर तो ऑक्सिन हो गया था, खैर चार्ल्स डार्विन डिस्कवर किया, आइसोलेट नहीं हुआ था, आइसोलेट फिर वो एक कॉर्डेट के यूरिन से हुआ था। ठीक है, आ जाओ, सॉरी जियाटिन तो जियामेज से हुआ था, प्लांट से हुआ था, पहला प्लांट से डिस्कवर होने वाला साइटोकाइनिन तो जियाटिन है। Discovery of cytokinin, discovery, DIS, discovery of cytokinin, cytokinin, kinetin, sperm of a fish, sperm of which fish? Chordate. Specifically, we discovered kinetin, a modified form of adenine, a purine, from the autoclaved herring sperm DNA. Herring fish, sperm of herring, herring, sperm of herring fish, sperm of herring fish, autoclaved DNA, autoclave, CLAV, clave, at high pressure, sterilized and steam at high pressure, at high pressure. Herring fish, this is chordate, CHORDET, chordate, sperm of herring fish, autoclave. Okay, sterilized and stem. DNA degradation. लेकिन सबसे पहले जो साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ वो प्लांट से हुआ ही नहीं, वो एक कॉर्डेट के स्पर्म से हुआ है। बताओ, DNA degradation, DNA degraded cytokinin, kinetin, DNA degraded cytokinin or kinetin, cytokinin, kinetin, cytokinin, kinetin. ऑक्सिन भी पहले प्लांट से नहीं आइसोलेट हुआ, नहीं डिस्कवर तो ऑक्सिन हो गया था, खैर चार्ल्स डार्विन डिस्कवर किया, आइसोलेट नहीं हुआ था, आइसोलेट फिर वो एक कॉर्डेट के यूरिन से हुआ था। ठीक है, आ जाओ, अब जियाटिन कैसे डिस्कवर हुआ। हम क्या कर रहे थे, टिश्यू कल्चर में प्लांट एम्ब्रियोस का दो ट्रायल, टिश्यू कल्चर कर रहे थे हम, और टिश्यू कल्चर में प्लांट एम्ब्रियो पता है कैसे होता है, यहाँ पे लेक्चर होती है, यहाँ पे पॉटलेट होते हैं, प्लांट एम्ब्रियो का ग्रोथ कराना चाहते हैं, Embryo growth in tissue culture. न्यूट्रिएंट डाला, लेकिन इतना बढ़िया नहीं हुआ, फिर उन्होंने
इसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। तो इन्होंने कहा कि कोकोनट वाटर में ऐसी कोई तो चीज है जिसने इसको ग्रो कर दिया, ठीक है। सेम चीज इन्होंने कॉर्न के मतलब मकई के कर्नल के साथ मतलब उसके बीज में को क्रश करके कॉर्न कर्नल को क्रश किया और वो डाला, ठीक है। दोनों ही केसेस में सेम रिजल्ट मिला कि जब उन्होंने इसको डाला कॉर्न कर्नल्स को क्रश करके मतलब कॉर्न के मकई के बीज को क्रश कर दो, उसका जो लिक्विड है वो डाल दो, ठीक है, वो डाल दो या ये डाल दो, सेम ही चीज हुई कि एम्ब्रियो का ग्रोथ होगा बहुत बढ़िया। तो मतलब हमें पता चला कि कोई तो ऐसा इसमें बहुत बढ़िया फैक्टर है जो कि सेल डिवीजन को इंकरेज कर रहा है। तो इन दोनों से ही साइटोकाइनिन ही प्राप्त हुआ हमें। कौन सा साइटोकाइनिन प्राप्त हुआ? जियाटिन प्लांट्स में पाया जाने वाला पहला साइटोकाइनिन था, ठीक है। और क्योंकि ये सबसे पहले कॉर्न कर्नल से जिया मेज से मिला, जिया मेज की स्पेलिंग क्या है क्या? जिया मेज की स्पेलिंग मुझे स्पेलिंग नहीं पता, जिया मेज की देख लेना, ठीक है, चेक कर लेना। तो इसलिए हमने इसका नाम जियाटिन रख दिया। जिया मेज कॉर्न कर्नल कोकोनट में कॉर्न कर्नल जियाटिन जियाटिन तो it's जिया मेज। अब इसकी ट्रिक है बहुत इजी, देखो क्या क्या कराता है ये। सेल डिवीजन कराता है, तुम्हें पता है, प्रोड्यूसेस न्यू लीव्स, प्रोड्यूसेस क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, ये भी याद रखना कि भैया वैसे तो ऑब्वियस फैक्टर है जो कि सेल डिवीजन को इनकरेज। एम्ब्रियो ग्रोथ इन टिश्यू कल्चर, embryo growth in tissue culture, growth in tissue culture corn kernel CORN corn kernel 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 maize zia maize MAIZ maize powder and the other one is coconut water growth of embryo, growth of embryo कर रहा है। तो इन दोनों से ही साइटोकाइनिन ही प्राप्त हुआ हमें। कौन सा साइटोकाइनिन प्राप्त हुआ? जियाटिन। जियाटिन प्लांट्स में पाया जाने वाला पहला साइटोकाइनिन था, कल्चर ठीक है। प्लांट और क्योंकि ये सबसे पहले कॉर्न कर्नल से टिश्यू कल्चर growth of embryo due to zeatin zeatin plant based cytokinin plant based cytokinin zeatin जिया मेज से मिला। जिया मेज की स्पेलिंग क्या है क्या? जिया मेज की स्पेलिंग मुझे स्पेलिंग नहीं पता, जिया मेज की देख लेना, ठीक है। plant based तो cytokinin इसलिए इसका नाम जियाटिन रख दिया। अब इसकी ट्रिक है बहुत इजी, देखो क्या क्या कराता है ये। सेल डिवीजन कराता है, तुम्हें पता है, प्रोड्यूसेस न्यू लीव्स, प्रोड्यूसेस क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, ये भी याद रखना कि भैया वैसे तो ऑब्वियस सी बात है क्या लीव बनाएगा उसमें क्लोरोप्लास्ट भी तो बनाएगा ना। लेटरल शूट ग्रोथ क्या होती है? जो लेटरल बड से ब्रांचेस करती है, ठीक है। एडवेंटिशियस शूट ग्रोथ होते हैं एडवेंटिशियस शूट ग्रोथ क्या होती है? बस शूट ग्रोथ होती है एक प्रकार की। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस से झगड़ा है इसको, कहते हैं मैं एक दिन तुझे हरा ही दूंगा, हरा नहीं पाता वो एक अलग बात है। न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन कराता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई लीफ मान लो या कोई भी प्लांट पार्ट मान लो बूढ़ा हो, वहाँ से न्यूट्रेंट्स निकाल के ऐसे छोटे नए लीव्स को दे देना, यंगर प्लांट पार्ट को देना, वो कराता है। डिले लीव सेनेसेंस, यार ये इतना ज्यादा सेल डिवीजन कराने में विश्वास सकता है, ठीक है, कि कहाँ से लीव को बूढ़ा होने देगा है, ठीक है। डिले लीव सेनेसेंस अब ये पहले याद कर कितने 8 1 2 3 लिखे हुए 8 के 8 में याद करा दोगे, तुम्हें एक ट्रिक याद करनी है। cell division functions of cytokinin
cytokinin. Functions of cytokinin. Kinin, NN. Functions of cytokinin. Cell division produce new leaves, produces chloroplast and leaves. Cell division produces new leaves, produces new leaves, produces new leaves, produces chloroplast and leaves, produces new leaves, produces chloroplast, 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 produces chloroplast and new leaves. New leaves produces chloroplast and new leaves. Cell division produces new leaves, produces chloroplast and new leaves. Lateral shoot growth, adventitious shoot growth, adventitious shoot growth, lateral shoot growth, adventitious shoot growth, overcome apical dominance, nutrient mobility, delay leaf senescence. Okay. Lateral growth, apical, adventitious shoot growth, lateral shoot growth, lateral shoot growth, lateral shoot growth, SHOOT, shoot growth, lateral shoot growth, adventitious shoot growth, adventitious shoot growth, adventitious shoot growth, lateral shoot growth, adventitious shoot growth, overcome, okay, lateral shoot growth, adventitious shoot growth, overcome apical dominance, overcome apical dominance, NAMC, apical dominance, overcome apical dominance, nutrient mobilization, nutrients or nutrition, nutrient mobilization, delay senescence, 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 delay senescence in leaf. Cell division produces new leaves. Cell division produces new leaves, produce chloroplast and new leaves, lateral shoot growth, adventitious shoot growth, overcome apical dominance, nutrient mobilization, delay leaf senescence, delay leaf senescence, senescence. Cell division produces new cells, produces new leaves, produces chloroplast in leaves, lateral shoot growth. Cell division produces new leaves, produces chloroplast in leaves, lateral shoot growth, adventitious shoot growth, overcome apical dominance, nutrient mobilization, delay leaf senescence. Mobilization, overcome apical dominance, adventitious shoot growth, lateral shoot growth, produces chloroplast and new leaves. So there is a crazy woman called Selena. ठीक है, and वो है बूढ़ी, and Selena को बूढ़ा होना पसंद नहीं. Realize Selena is like, मुझे नहीं होना बूढ़ा, रुक जाओ भैया. Selena shoot new leaves and chloroplast to delay aging, overcome mobile addiction. Shoot. Selena is like, मुझे नहीं होना बूढ़ा. तो इसको किसी ने बोल दिया कि अगर तुम्हें बूढ़ा नहीं होना ना, एक ट्रिक है. यदि गन लो और जो नई नई पत्तियां आ रही है ना उनको उड़ा दो. ठीक है, नई पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के लिए एम करो और क्लोरोप्लास्ट को भी उड़ा दो.
ठीक है, देखना तुम बुढ़ापे से बच जाओगी। और ये जो तुम फोन चलाती रहती हो ना सारे टाइम, और फोन की एडिक्शन भी खत्म हो जाएगी। आधा बुढ़ापा तुम्हारा फोन की एडिक्शन की वजह से आया हुआ है। चल ठीक है, ट्रिक है, सेलिना शूट्स न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट्स। Selena shoots. SHOOTS shoots new leaves and chloroplast to delay CHLO chloroplast to delay senescence aging overcome. Okay, to delay aging aging overcome mobile addiction क्यों? टू डिले एजिंग एंड ओवरकम मोबाइल एडिक्शन। Selena shoots new leaves and chloroplasts to delay aging and overcome mobile addiction. Selena मतलब cell division, ठीक है? Shoots मतलब growth of lateral shoot and adventitious shoot. New leaves growth करा देती है। Chloroplast lateral and adventitious shoot adventitious adventitious shoot lateral and adventitious shoot lateral and growth of lateral and adventitious shoot growth of new leaves growth of new leaves GROWH growth of new leaves 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 growth of chloroplast growth of chloroplast chloroplast growth of chloroplasts delays leaf senescence delays leaf senescence SENE leaf senescence delays leaf senescence overcome apical dominance overcome apical dominance and nutrient mobilization ग्रोथ करा देती है। डिले एजिंग साफ साफ सही है, डिलेज लीफ सेनेसेंस। ओवरकम क्या करना है? डोमिनेंस, ये एडी एपिकल डोमिनेंस है। सो ये ओवरकम और एपिकल डोमिनेंस साथ में है। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस एंड मोबाइल के ऐसे क्या है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कराती है। ओल्ड जगहों से न्यू जगहों पे न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कराती है। ये हो जाएगा यार। Selena shoots new leaves in chloroplasts to delay aging and overcome mobile addiction. And cell division growth of lateral and adventitious shoot new leaves growth of new leaves chloroplast growth of chloroplast to delay aging. Okay, delay leaf senescence and overcome apical dominance mobile nutrient mobilization. Okay, cell division shoot growth of shoot lateral shoots and adventitious shoot. Okay, growth of lateral and adventitious shoot leaf new leaves. Okay, production of new leaves
or formation of new leaves or the growth of new leaves. Growth of new leaves, shoots, new leaves, and chloroplast. Growth of chloroplast or production of chloroplast. New leaves and chloroplast to delay easing. Okay. It delays senescence in leaf. Delays leaf senescence. Okay. Delays easing overcome mobile addiction. Okay. Overcome apical dominance and mobilization of nutrition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. First slot is completed. Okay, we'll take a break of 10 minutes. I'll open this chat. You can talk right now. We'll take a break of 10 minutes. Cell division produces new growth of new leaves. Okay, produces chloroplast and new leaves, lateral shoot and adventitious shoot. Oh, एक साथ किया नहीं. Adventitious shoot. Overcome apical dominance, nutrient mobilization, delay senescence in leaf. Well, I'm kind of hungry. BREAK break of 10 minutes. We did our first session, okay? Our first slot is completed. So how you concentrate on studies when you know a lot of people is watching you online? Actually, I'll take them as my supervisor. So they are not distraction for me. Especially when I turn off the chats. It doesn't affect. When I'm alone, I don't study that much, okay? So if I know someone is watching me, I can't use my phone, I can't scroll there in my PC. Obviously, I will study. I know there are a lot of negative people in the social media and they are always commenting bad. Like, how do you concentrate in studies? You are like faking, something like that. But it's not like that. It is actually helping me. That's why I'm studying like this, no? Why would I waste my time? We just have 2 months. I'll go and eat something. I'm kind of hungry.
genuine issue with me. हाँ तो ये फिजिकली तुम लोग तुम्हें नहीं देख रहे ना। अगर मेरे ही सामने कोई बैठा होगा तो वो मुझे एकदम से देख रहा होगा तो हाँ मुझे लगेगा कि ये मुझे क्यों देख रहा है, मुझे क्यों देख रहा है। अगर वो लोग मुझे देख भी रहे हो तो मुझे नहीं पता ना वो लोग कैसे देख रहे हैं। Yup, Anuj, you have to study. I don't even know your real name SS, बट आपको लगता है कि ऐसा लाइक मुझे देख के ना आपको डिमोटिवेटिंग सा फील हो रहा है, या फिर ये कैसे पढ़ लेती है ऐसा करके मन में कुछ हो रहा है ना और आप मेरे ही बारे में सोचे जा रहे हो ना, तो आई थिंक यू शुड लीव, क्योंकि आपको भी पढ़ना चाहिए ना। जनकपुर उधर ही है ना। 10 minute break over. Now we have to start the second slot, okay? अभी 2 बज रहा है। हाँ तो मैं 1 ही बजे उठी हूँ, मैं 7:30 में ही सो गई थी ना। Slot 2. Now I can't sleep, bro. Slot 2. I am from Sikkim. I'll pin this one. I have set the timer. Now we can study. मैं chats off कर दे रही हूँ, ब्रेक में ओपन करूँगी। Nutrient mobilization. Delay leaf senescence, overcome apical dominance. Delay leaf senescence, overcome apical dominance. Nutrient mobilization, overcome apical dominance. Growth of chloroplast, delay leaf senescence, cell division. ठीक है, ये ओवरकम एपिकल डोमिनेंस तुम्हें पता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन तुम्हें पता है, डिले लीफ सेनेसेंस। देखो ये एक लीफ है, इसको हमने काट दिया है लेकिन इसको हमने साइटोकाइनिन से ट्रीट नहीं किया तो कैसे येलोइश हो गया। ये लीफ एक है जिसको हमने साइटोकाइनिन से काट के साइटोकाइनिन से ट्रीट किया तो इसको बुढ़ापा नहीं आ पा रहा यार, ज्यादा ही जवानी चल रही है। ठीक है, साइटोकाइनिन सब चीज को जवानी रखना चाहता है। आज बस एनसीईआरटी साइटोकाइनिन खत्म है। Spoon and his co-workers observed that from internodal segment of tobacco stems in the stem, the cal as a mass of undifferentiated cells proliferated only if in addition to auxin, the nutrient medium was supplemented with one of the following: extract of vascular tissue, yeast extract, coconut milk or DNA. Miller et al. Later identified and crystallized the cytokinesis promoting active substance that is termed kinetin. कुछ गलत है इसमें।
The new medium was supplemented with one of the following सही extracts. है, but Yeast extract and coconut. So can be later identified and crystallize the cytokinin, promoting active substance kinetin. घटिया एक्सपेरिमेंट है। स्कूग का नाम जो है साइटोकाइनिन की डिस्कवरी से होता है, डिस्कवरी से अटैच्ड है घटिया स्कूग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टोबैको स्टेम से कुछ टिश्यू लिया, उसका कैल्शियम बना दिया टिश्यू कल्चर में, और उन्होंने तब तक सेल में प्रोलिफरेशन नहीं किया जब तक ऑक्सीजन के साथ साथ हमने उसके साथ कुछ और निकाला। क्या निकाला? एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ऑफ कोर्स वेस्कुलर टिश्यू में डीएनए होता है, वहां से एडेनिन से साइटोकाइनिन हमने वो कर लिया। ये एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क या डीएनए में से कुछ तो आपको डालना पड़ेगा। जब हमने डाला तो वो ग्रो करने लग गया पहले से, बाद में उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया, उसको टर्म दी काइनेटिन। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि काइनेटिन अभी मैंने तुम्हें स्पर्म हेरिंग के डीएनए से वो करवाया, ये क्या बात है? आई बड़ी cytokinins have specific effects on cytokinesis and were discovered as kinetin, a modified form of adenine from the autophagy of hairy sperm। वो कह रहे पहले सब ये चीज ना मैं जब मैं खुद पढ़ रही थी तो मैंने यहाँ पे जियाटिन पढ़ लिया था, मेरे को पता जियाटिन है, काइनेटिन है, इसलिए एंजाइम चेक करी थी। ये तो बकवास बात है। तुम कह रहे हो कि जो काइनेटिन है वो हेरिंग स्पर्म के डीएनए से सबसे पहले निकला है, और फिर क्या तुमने काइनेटिन यहाँ पे स्पून में निकाल लिया। फिर कह रहे काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स। इसको मैं चेक करके बताऊँ, ठीक है, कि भैया स्पूप वाला ने तो निकाला ही है। अच्छा, मैंने क्रिस्टलाइज भी कर ली थी बाइंड। सबसे पहले जो हमने साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया था वो हेरिंग के स्पर्म से किया था, ठीक है, डिस्कवर किया था। इन लोगों ने आइसोलेट कर दिया स्कूबोरा ने, ठीक है। तो डिस्कवरी करना किस चीज की और बाहर आइसोलेट करना, क्रिस्टलाइज करना, ये बिल्कुल दो अलग चीजें हैं, ठीक है। सो पहला जो है काइनेटिन जो है वो हेरिंग के स्पर्म से देखा था हमने, फिर इन लोगों ने क्या आइसोलेट कर लिया। अब कंफ्यूजन हमारा क्लियर हो गया। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, ठीक है। तो वो इसलिए कह रहा है कि भैया यीस्ट तो वो है ना, फंगस है ना, वैस्कुलर टिश्यू तो प्लांट नहीं है ना, तो अच्छा इनसे काइनेटिन उसको मिल गया होगा, वहां पे उन्होंने क्रिस्टलाइज कर लिया, ठीक। Search for natural substances with cytokinin-like activity led to isolation of zeatin from corn kernels and coconut milk। ये वो वाला एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको वो बताया था, जो एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए था, ठीक है। Since the discovery of zeatin, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell division promoting activity have been identified। Natural cytokinins are synthesized in regions where rapid cell division occurs। वहीं पे प्रोड्यूस होकर वहीं पे सेल डिवीजन करा दे रहा है, जैसे कि रूट एपेक्स में, शूट एपेक्स में, शूट बड्स में, यंग फ्रूट्स में। It helps to produce new leaves, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्लोरोप्लास्ट, तीसरा फंक्शन लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट ग्रोथ, चौथा फंक्शन ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, पांचवा फंक्शन प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन जिसकी वजह से विच हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, छठा फंक्शन, ठीक है। सातवां फंक्शन क्या है भैया? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। 7 फंक्शन है, 7 के सब पूरे हो रहे हैं यहाँ पे। 2 3 4 5 6 7, ठीक, बढ़िया आ जाओ जिब्रेलिन्स आ जाओ, मस्त है जिब्रेलिन्स। 5 मिनट में 10 मिनट में जिब्रेलिन्स खत्म हो जाएगा अगर तुम फोकस करोगे तो। जितना टाइम लगना था ना ऑक्सीजन में लिया बेटा, बाकी एक इथाइलिन में लगेगी। इथाइलिन भी पागल है, 13 फंक्शन है, पागल बना रखा है। साइटोकाइनेसिस में कोई टाइम लगना, जिब्रेलिन में कोई टाइम लगना, एब्सिसिक एसिड में कोई टाइम लगना। जिब्रेलिन्स क्रेजी होती है, क्रेजी। इसको हमने कैसे लिखना? गब्बर माली, गब्बर माली। ये भाई इतना लंबा नहीं लंबा, और इसको चाहिए कि सब लंबे हो जाए। जिब्रेलिन का है कि खाना सब लंबे हो जाओ, कोई मिले लंबे हो जाओ, स्टेम मिले लंबे हो जाओ, फ्रूट मिले लंबे हो जाओ, शुगर केन मिले लंबा हो जाओ, सबको ये लंबा करता है। ग्रेप्स की स्टॉक मिले लंबी कर दो, सब कुछ। कोई कहता है कि जो प्लांट का कोई ऑर्गन है, तुम लंबे हो जाओ, तुम लंबे हो जाओ, तुम लंबे हो जाओ, क्योंकि खुद इतना लंबा है। गब्बर माली, गब्बर है यार, गब्बर इज अ स्ट्रॉन्ग टॉल मैन, ठीक है। माली इसलिए कि मेरी ट्रिक में तो इसकी कैसे डिस्कवरी हुई? बड़ी फनी डिस्कवरी। एशियन फार्मर्स ने अपानी इंडिया वाले ने, जापान में, उन्होंने डिस्कवर किया कि यार उनके जो राइस सीडलिंग्स है ना, उनमें से कुछ राइस सीडलिंग्स बहुत लंबे हो जा रहे हैं, बाकी राइस सीडलिंग्स छोटे, कुछ बहुत लंबे हो जा रहे हैं, और वो बेचारे इतने लंबे हो जा रहे हैं कि वो लंबे होकर खुद ही नीचे गिर जा रहे हैं, टॉपल हो जा रहे हैं, वो पूरे मैच्योरिटी पे आएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो फुलिश सीडलिंग है, बेवकूफ सीडलिंग है, पहले इतना तेज क्यों ग्रो कर रहे हो? ये तुम्हें सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा तुम्हारी लेंथ को, क्योंकि स्टेम है वो तो मोटी नहीं हुई, स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, बहुत लंबे हो गए और गिर गए, मर जाए। इसको नाम दिया ना फुलिश सीडलिंग का। बाद में इसी डिजीज को हमने नाम दिया बकाने डिजीज, बकाने डिजीज। तो ई कुरुसावा करके साइंटिस्ट है जिनकी मैं फोटो लेके आई हूँ, आई लाइक हिज फेस। ये तो देखिए किस तरह है ई कुरुसावा, ठीक है। ई कुरुसावा यार क्या कर रहे हैं, ई कुरुसावा नाम का बंदा था, साइंटिस्ट है। तो उन्होंने कहा कि मैं पता लगाऊंगा कि ये फुलिश हो रहे हैं तो हो क्यों रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये प्लांट जो है ये अपनी मर्जी से ऐसा बेवकूफी नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली बीमार प्लांट्स हैं, दिस इज अ डिजीज दैट दे हैव, और ये डिजीज कॉज करी है फंगस ने। फंगस का नाम है जिब्रेला क्यूजीकुरम। जिब्रेला जैसे सिंड्रेला होता है, क्यूजी क्यूजू नहीं क्यूजी,
will shift to Giberellin. स्पेलिंग देख लेना, तुम्हें पता है स्पेलिंग मेरा हाथ में है, Gibberella Physiological. तो इन प्लांट्स पे एक्चुअली वो फंगस ग्रो कर रहा है ऐसे, और ये फंगस क्या कर दे रहा है, बहुत सारा केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जिब्रेलिक एसिड, प्रोड्यूसेस जिब्रेलिक एसिड नाम का केमिकल ये फंगस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जिब्रेलिक एसिड प्रोड्यूस तो ये प्लांट तो जिब्रेलिक एसिड की वजह से लंबा हो जा रहा है, ठीक है। यहीं से जिब्रेलिक एसिड की जो है वो डिस्कवरी हुई है। दो एसिड पढ़ने में, एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। एनसीईआरटी में दिया है, दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। जिब्रेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन कराता है, ठीक है, और एब्सिसिक एसिड सीड डोर्मेंसी कराता है। दोनों लड़ाई चलती है बहुत ज्यादा। अगर सीड के अंदर एब्सिसिक एसिड डाल देता है तो वो डोर्मेंट हो जाता है, अगर जिब्रेलिक एसिड जाता है तो वो जर्मिनेट कर जाता है। दोनों एसिड की लड़ाई चलती है। तो इन्होंने डिस्कवर किया कि ये जो फूलिश सीडलिंग या बताने डिजीज है, ये ऐसे नहीं है, पागल नहीं है, एक्चुअली दे आर नॉट वेरी फूलिश, दे आर बीइंग टेरराइज्ड बाय अ फंगस कॉल्ड Gibberella Physiological, and that fungus is producing huge quantity of a chemical called gibberellic acid, and that gibberellic acid is being given to the plant by the fungus, and that plant is growing tall, and वो इतना लंबा अगर अपना की वेट संभाला वो इसी गिर जा रहा है, नीचे गिर जा रहा है। तो ये जो डायग्राम है बेसिकली इन्फेक्टेड, यहाँ ये फंगस से इन्फेक्टेड राइस प्लांट है, ये नॉर्मल राइस प्लांट, ठीक है, इस पे इन्फेक्टेड है। यू अंडरस्टैंड द डिस्कवरी, ठीक है। सबसे गंदी तो मेरे को डिस्कवरी लगी साइटोकाइनिन की डिस्कवरी लगी, स्कूप आया बड़ा नलायक। आगे देखो, तो इसने करा देना स्टेम इलॉन्गेशन, मतलब मेजर फंक्शन अगर स्टेम इलॉन्गेशन किसने करानी तो जिब्रेलिक एसिड ने करानी है। देखो स्टेम का टॉप पार्ट जो ग्रो करता है, टॉप पार्ट ये ऑक्सिन की वजह से ग्रो करता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन स्टेम का जो ये वाला पार्ट जो ग्रो कर रहा है, ये वाला जो पार्ट ग्रो कर रहा है, ये हमेशा इंटरनोडल ग्रोथ जो है, इंटरनोडल ग्रोथ ये आपकी जिब्रेलिक एसिड है। इसलिए जिब्रेलिक एसिड का सबसे बड़ा हाथ होता है स्टेम ग्रोथ, क्योंकि मेजर ग्रोथ सबसे फास्ट ग्रोथ है वो यहाँ से आती है, नीचे से आती है, ठीक है। ये जिब्रेलिक एसिड को जीए भी लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे अब तो मतलब उस टाइम पहले डिस्कवरी हुआ था भैया, अब तो 100 से ज्यादा जिब्रेलिक मिल चुके हैं। जैसे ऑक्सिन तो फिर भी है ना, दो सिंथेटिक, दो नेचुरल हम याद कर लेते हैं, साइटोकाइन भी दो ही है, चाहे और किसी अटेंड करता है, लेकिन तो प्लांट्स में मिलता नहीं है। तो जिब्रेलिक 100 तो कहाँ याद करें, तो उन्होंने सिर्फ एक का नाम दिया, उन्होंने कहा GA3 जो है सबसे ज्यादा यूज है, सबसे ज्यादा स्टडीड है, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड 3। तो भैया जहाँ स्टेम ग्रोथ आ गई, तुम ये मान लो, अब तुम कहोगे कि यार मैम आपने कहा था ऑक्सिन जो है वो एपिक्स में होता है, यार ठीक है, साइटोकाइनिन और वो कराते हैं, जैसे लैंग्वेज पे क्वेश्चन आंसर डिपेंड करेगा। ऑक्सिन में तुम्हें वो कभी नहीं कहेगा स्टेम ग्रोथ, ठीक है। साइटोकाइनिन में तुम्हें कभी वर्ड यूज करेगा स्टेम ग्रोथ, वो यूज करेगा शूट ग्रोथ, लेटरल शूट ग्रोथ, मेन शूट ग्रोथ, एडवेंटिशियस शूट ग्रोथ, जो भी शूट ग्रोथ वर्ड यूज कर देगा ना बेटा, शूट को ग्रो कराना वो साइटोकाइनिन। जब आएगा स्टेम ग्रोथ, ठीक है, जैसे गन्ने को इलोंगेट करते हैं हम, क्या गन्ने के पेड़ पर जिब्रेलिक एसिड छिड़क देते हैं, तो वो गन्ना ही लंबा होता है। अब गन्ने के स्टेम में ही सारी शुगर है, तो यील्ड बढ़ जाती है, गन्ने की स्टेम लंबी होगी, ठीक है, 20-20 उसका टन तक की तो यील्ड बढ़ जाती है, ठीक है। स्टेम ग्रोथ जहाँ बढ़ रहा है वो जिब्रेलिक एसिड। फंक्शन देखो, 8 फंक्शन है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ स्टेम, इलोंगेट फ्रूट। अच्छा, ये किसी को लंबा करने छोटा, ये कह रहा है एप्पल ऐसे हो गया, ये कह रहा है मुझे सुंदर ही लगता है, फार्मर्स को ये लंबे एप्पल तो वो उसमें जिब्रेलिक एसिड छिड़कते हैं, एप्पल जो बच्चा होता है तो ये बड़ा ब्यूटीफुल एप्पल ऐसे लंबा सुंदर एप्पल, ये तुम भी तो मार्केट में जाओगे तो ये वाला एप्पल खाओगे ना, लंबे वाला, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाता है। फिर देन ग्रेप्स की लेंथ, अब नॉर्मल ग्रेप्स ऐसे हुए हैं, नॉर्मल कह रहे हैं यार चलो ठीक है, ठीक लगा लो भैया, ये नॉर्मल ग्रेप्स है ना, तुम इस पे जिब्रेलिक एसिड छिड़को। ये कहता है मैम हम बताते हैं आपको ग्रेप्स होते कैसे हैं, ये पपीते के साइज के ग्रेप्स उगा दे रहे हैं, इतना भी नहीं मेकअप मार रहे हो, मतलब अच्छे खासे बड़े ग्रेप्स उगा दे रहे हैं, समझ लो। सो डिले सेनेसेंस, अच्छा डिले सेनेसेंस दोनों का फंक्शन है, साइटोकाइनिन भी डिले सेनेसेंस करता है, ठीक है, लेकिन साइटोकाइनिन से जब तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि लीफ सेनेसेंस को डिले करता है, वो लीफ सेनेसेंस में साइटोकाइनिन में लीफ का डायग्राम लाइक है ना, जब यहाँ सेनेसेंस आएगा ये एक्चुअली में फ्रूट सेनेसेंस को डिले करेगा, ये फ्रूट्स की ग्रोथ को धीरे कर देता है, धीरे धीरे फ्रूट ग्रो करे। उससे क्या है, जिब्रेलिक एसिड क्यों छिड़कते हैं कि धीरे धीरे फ्रूट ग्रो करे ताकि वो सड़े कम, ठीक है। फ्रूट अगर ज्यादा जल्दी ग्रो करके मान लो तब तक मार्केट रेडी नहीं है, ठीक है, ये आप चाहते धीरे धीरे मेरा फ्रूट जाए मार्केट में, तो आप क्या करोगे, अगर वो जल्दी करते हो सड़ जाएगा तो आपको देना ही पड़ेगा मार्केट में। अगर जिब्रेलिक एसिड छिड़को तो धीरे धीरे ग्रो करेगा तो ट्री पे ज्यादा टाइम तक रह सकता है, तो मार्केट पीरियड्स का इलोंगेट हो जाता है। तो ये फ्रूट से रिलेटेड है इसकी सेंसेस, जो साइटोकाइनिन है वो लीफ से रिलेटेड है, ठीक है। एक्सटेंड मार्केट पीरियड ऑफ फूड को इसी की वजह से स्पीड ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस में समझाते हैं क्या होता है, लर्न कर लो, लर्न करना इस चैप्टर में ज्यादा जरूरी है, इस पार्ट में समझना सेकेंडरी है पर है समझना भी। इंक्रीज लेंथ ऑफ शुगरकेन स्टेम, अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कॉनिफर्स एंड बोल्टिंग, बोल्टिंग का कंसेप्ट पहले लर्न करो, ये आज चीज आज Functions of gibberellins. Functions of gibberellins. Gibberellins. Functions of gibberellins. Increase in length of axis or stem. Increase in length of stem. Elongate fruits like apple and grapes. Elongate fruits like apple and grapes. Elongate fruits like apple and grapes. Shoot elongation.
shoot, stem elongation, we have delay senescence, delay senescence in fruit, fruit. Delay senescence in fruit. Gibberellins delay senescence in fruit. Extend market period of fruit. Extend market period of fruit. Extend market period of fruit. Okay. Speed of malting process. Increase length of sugarcane. Increase length of sugarcane. Sugarcane. Increase length of sugarcane. 20 tons more production of sugarcane. Okay. Early seed production in conifers. Early seed production in conifers. Okay. Extend the market period of fruit. Senescence in fruit. Elongation fruits like apple and grapes. Increase length of stem. Bolting. Speed of malting process. Speed of malting process and bolting. Speed of malting process. Bolting. 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 Functions of gibberellins. Increase in length of stem. Elongation of fruits like apple and grapes. Delay senescence in fruit. 1, 2, 3. Delay senescence in fruit. Then extend market period for fruits. And we have bolting, used in malting process. Elongation of a stem. Elongation of fruits like grapes and apple. Delay senescence in fruit. Extend market period of fruit. What else is there? Gibberellin. I just forgot. Increase length of sugarcane. Early seed production in conifers. Speed of malting process and bolting. Increase length of sugarcane stem, early seed production in conifers and bolting. Bolting क्या होता है? पहले लर्न करोगे आज से. आ जाओ. जय माता दी बोलो. तो दोस्तों स्टोरी कुछ इस प्रकार की है कि एक औरत खड़ी है मार्केट के कोने में और वहां से साग लेना चाह रही है, लेकिन वो साग छोटा छोटा है, इतना सा साग है, ग्रो ही नहीं कर रहा, इतना छोटा साग है. एंड वो कह रही कौन है यहाँ पे इस मार्केट में जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वो मार्केट के कॉर्नर पे खड़ा हो के इस साग को इलॉन्गेट करा दे. कोई है यहाँ? सब लोग डर जाते हैं कि हमने तो हिम्मत ही नहीं है, हम कैसे कराएंगे. तभी गब्बर नाम का एक बोल्ड माली सामने आता है. गब्बर इज टॉल एंड ही इज बोल्ड एंड ही अप्लाइज तारपीन टू हिज बॉडी ताकि जब वो खेत में काम कर रहा हो तो उसे मच्छर ना काटे. टर्पीन्स की ओरिजिन का है ना ये गाली कैसे. एंड अपने तारपीन का तेल लगा के एंड बोल्ड माली रहता है एंड कहता है कि आई विल इलोंगेट दिस साग so that you can take this saag to your home. जब तुम ना होते तो क्या होता. ठीक है. बोल्ड माली गब्बर elongates saag SAG at market corner. बोल्ड माली गब्बर elongates saag at market corner. बोल्ड से बोल्टिंग, माली से माल्टिंग, गब्बर मतलब जिब्रेलिन. elongate किस किस को elongate कर दे रहा है वो? शुगर केन की स्टेम को, ए से एप्पल्स को, जी से ग्रेप्स को, मार्केट कॉर्नर को क्योंकि मार्केट पीरियड को एक्सटेंड कर दे रहा है फ्रूट के. कॉर्नर मतलब कॉनिफर्स की मैच्योरिटी को फास्ट कर देता है.
इसकी मेच्योरिटी? grapes extend market period of fruit, hasten conifers maturity. Malting, gibberellins elongate sugarcane stem. Apple, grapes, market is market period of fruits. Market period of fruit is elongated. Market period of fruit is extended. Market period of fruit is extended. Market period of fruit is extended. Corner, Haston conifers maturity. Haston conifers maturity. Haston's conifers maturity. इसको फास्ट कर देता है. कैसे कॉनिफर की मेजॉरिटी को फास्ट कर देता है यार? ये सीड जर्मिनेशन भी जल्दी कराता है. पहली बात तो सीड कॉनिफर्स के तो जल्दी उठते हैं, जल्दी बड़े होते हैं. ये मेजॉरिटी को फास्ट कर देता है. अर्ली सीड प्रोडक्शन करा देता है. कर सकते हो. 8 होने चाहिए. 8 है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 के 8 आपको इससे याद हो जाएंगे फिर से. गोल्ड मार्ली गब्बर elongates साग at market corner. Okay. ठीक है. Bolting, malting process, speed of malting process. Gabbar, gibberellins elongates stem of sugarcane, apples and grapes. Saag, okay. Elongate saag at market corner. Okay, market extend marketing period. And corner from corner. Oh, hasten the maturity of conifers. Hasten conifers maturity. Hastens conifers maturity. Hastens conifers maturity. Market period of fruit is extended. Market period of fruit is extended. Corner, Haston conifers maturity. Market period of fruit is extended. Corner, conifers. Hastens the maturity of conifers. Hastens the maturity of conifers. Haston conifers maturity. Elongation of stem of sugarcane, apple and grapes. Sugarcane stem, apple and grapes. Market period of fruit is extended. Market period of fruit is extended. Corner, Haston conifers maturity. Elongates. Okay, हो भाइयों. Malting process, speed of malting process and bolting. At से and से इससे मैं कभी भी ट्रिक नहीं बनाती. ध्यान रखना तुम लोग. पर से बनाई थी मैंने. ऑक्सिन में पर से पार्ट बनाया. देखो. Causes fruits to elongate. ये जिब्रेलिन के बिना, ये जिब्रेलिन के साथ है, ट्रीटेड है. ये छोटे-छोटे फ्रूट्स बेचारे. ठीक है. ये जिब्रेलिन से ट्रीटेड फ्रूट है. बड़ा-बड़ा फ्रूट है. ये छोटा. तो एप्पल और ग्रेप्स का एग्जांपल वो दिया हुआ है. बढ़िया तरीके से दिया हुआ है. देन और भी बड़े फंक्शन है. ये जैसे ग्रेप्स की स्टॉक है ना, उसको भी बढ़ा देता है. देखो ग्रेप का साइज तो बढ़ा ही रहा है. यहाँ पे ग्रेप को इलोंगेट कर रहा है. इंडिविजुअल ग्रेप को इलोंगेट कर रहा है. एप्पल को इलोंगेट कर रहा है. और भी कुछ ये करता है. मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करता है. भैया बहुत बढ़िया चीज है ये. मैं तो सोच रहा हूँ अपने घर लाके रख लूँ जिब्रेलिक एसिड को. ये ग्रेप की स्टॉक को भी इलोंगेट कर देता है. मतलब मान लो ग्रेप इस पे उगना है. इस बीच की डंडी होती है ना ग्रेप, तो एक तो नॉर्मल डंडी ऐसे हो, इतनी सी हो, उस पे ग्रेप उग रहा है ऐसे. ये डंडी भी लंबी कर देगा. ग्रेप का साइज भी लंबा कर देगा. ऐसे ऐसे. तो सोचो कितना फायदा हो जाएगा. देखो ये जिब्रेलिक एसिड के साथ है डंडी. ये ग्रेप की स्टॉक बोलेंगे इसको. एंड देन ये ग्रेप की स्टॉक यहाँ पे इतनी छोटी है. तो ना सिर्फ ये ग्रेप को लंबा कर रहा है, ग्रेप की स्टॉक को भी लंबा कर रहा है ताकि नंबर ऑफ ग्रेप्स भी ज्यादा हो सके. डिले सेनेसेंस इन फ्रूट्स. ये चाह रहा है मार्केट में मार्केट पीरियड बढ़ जाए. टू इंक्रीज मार्केट पीरियड ऑफ फ्रूट्स. प्लीज मार्केट पीरियड क्या होता है? कितने टाइम तक मार्केट में रह सकता है आपका फ्रूट. कितने टाइम तक फ्रेश रह सकता है, खराब ना हो आपका फ्रूट. तो आप क्या करोगे? जब आप फ्रूट पक रहे होंगे, आप इस पर थोड़ा जिब्रेलिन छिड़क दो. तो उससे क्या होगा? थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगी इनकी सेनेसेंस. देखो सेनेसेंस बुढ़ापा है. अब तो बोलोगे क्या फ्रूट का पकना भी बुढ़ापा है? बेटा डेवलपमेंट में कह लो चाहे बुढ़ापा कह लो, डेवलपमेंट होकर बुढ़ापा तो आना है. जब ये डेवलप हो रहा है तो ये बूढ़ा ना हो जाए, इसलिए इस पर थोड़ा जिब्रेलिक एसिड छिड़क दो ताकि मार्केट पीरियड इसका बढ़ जाए. देन माल्टिंग होता है. माल्टिंग है दारू बनाने के लिए बहुत बढ़िया प्रोसेस है. मतलब बढ़िया क्या प्रोसेस ही. माल्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप इफ यू वांट टू मेक बियर. ठीक है. 3 स्टेप्स होते हैं बियर बनाने के. पहला माल्टिंग होता है.
लास्ट स्टेप होता है जो फर्मेंटेशन वगैरह होता है। तो आप उसमें क्या करते हो, सबसे पहले आप सीड लेते हो, बार्ले ले लिया, वीट ले लिया। अब तुम्हें क्या लगता है, इनको सीधा चढ़ाना शुरू कर दोगे, फर्मेंटेशन शुरू कर दोगे? पहले आप इनकी माल्टिंग करोगे। माल्टिंग क्या होता है, हम कुछ स्टेप्स करते हैं ताकि इनके अंदर जो एंजाइम हमें चाहिए ना बियर बनाने के लिए, वो उनका संख्या बढ़ जाए उन एंजाइम्स का, प्लस हमें माल्ट शुगर मिल जाए। माल्ट शुगर क्या, इनके अंदर स्टार्च भरा हुआ है, वो स्टार्च ब्रेक डाउन होनी चाहिए एंजाइम से और उनसे बननी चाहिए शुगर्स, जिनको माल्ट शुगर्स कहते हैं। ये माल्ट शुगर्स हमें चाहिए बियर में। तो इनका ये एंजाइम से ब्रेकडाउन तब होता है जब ये सीड जर्मिनेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको हम वाटर से ट्रीट करते हैं, वाटर में ही रखते हैं हम इनको, उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ ट्रीटिंग, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छा है पहला पार्ट। ठीक है, फिर उनको जर्मिनेट कराते हैं, जर्मिनेशन कराते हैं। जर्मिनेशन में तुम्हें पता है कि जिब्रेलिन एसिड इंक्रीजेस स्पीड ऑफ जर्मिनेशन, तो हम यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड डाल देते हैं, तो ये जर्मिनेट फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, अब ये जैसे बार्ले का सीड है, अब ये बस बेचारा जर्मिनेट हुआ ही है, जर्मिनेट हुआ ही है, हमने इसको पूरा जर्मिनेट नहीं कराना, क्योंकि अगर हमने इसको पूरा जर्मिनेट करा दिया तो ये जो एम्ब्रियो है, ये जो इसका बीच का एम्ब्रियो है, ये तो सारा जो हमने स्टार्च का माल्ट शुगर बनाया है एंजाइम से तोड़ के, ये सारा शुगर और सारा सब यूज ही कर लेगा। तो हमारी बियर किससे बनेगी, बताओ क्या पिएंगे हम, बताओ दुनिया कैसे चलेगी बियर पिए बिना, बियर तो पीनी होती है। यही क्लिप काट के बच्चे यूट्यूब पे डालेंगे, देखो मैं कैसी बात करती हूँ, सैर्काज़म बोलते हैं, सैर्काज़म। तो भैया ये एम्ब्रियो में मारना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो साइड में जो स्टार्च जो कि अब माल्ट शुगर में कन्वर्ट हो गया, हमें तो वो चाहिए ना, एम्ब्रियो थोड़ा भी चाहिए। तो हम इनको जर्मिनेट, जैसे थोड़ा जर्मिनेट हो हम इनको सुखा देंगे, हीट कर देंगे, किल में भूल देंगे। अब हमारे पास उसमें माल्ट शुगर है, स्टार्च जो है माल्ट शुगर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, माल्ट शुगर क्या होती है, माल्टोजल, माल्ट शुगर में कन्वर्ट हो गया। अब तो ये पूरे प्रोसेस को माल्टिंग कहते हैं, बेसिकली स्टार्च को माल्ट शुगर में कन्वर्ट करना, माल्टोज में कन्वर्ट करना। उसके लिए आपको जर्मिनेशन एक स्टेप है, तो जर्मिनेशन आपको जिब्रेलिक एसिड लगता है। ठीक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया प्रोसेस, मैंने सोचा मैं थोड़ा बता दूं तो तुम्हें याद है, समझ गई। इंक्रीज लेंथ तो जो है, अरे हाँ यार, तुम्हें स्टेम का लेंथ इंक्रीज करना तो ऑब्वियसली जिब्रेलिक एसिड डालोगे। अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कॉनिफर्स, कुछ नहीं याद करने से, बस तुम्हें आता है ना मार्केट कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कॉनिफर। ये कॉनिफर्स की मेच्योरिटी फास्ट करता है, मेच्योरिटी फास्ट करता है तो अर्ली सीड्स प्रोड्यूस, जल्दी सीड प्रोड्यूस होंगे, जितना जल्दी मेच्योर होगा उतनी जल्दी सीड प्रोड्यूस होंगे। कुछ नहीं याद करना क्यों क्या कैसे, ये सुनो बोल्टिंग प्रोसेस समझा देती हूँ क्योंकि हम भूल जाते हैं। प्लांट विल रोजिएट ग्रोथ, रोजिएट ग्रोथ क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जो कि जमीन से ऊपर ज्यादा नहीं होते, वो यहीं पे ऐसे ऐसे अपने पत्ते ऐसे यहाँ पे ऐसे उगाते हैं, ऐसे उगाते हैं, बिजी होगा इसको रोजिएट ग्रोथ, ये रोजिएट ग्रोथ। जस्ट फ्लावरिंग करने से पहले इनकी स्टेम बिल्कुल तेजी से लंबी होती है, उससे पहले 3 एकदम से स्टेम इलोंगेशन जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से एकदम से स्टेम इलोंगेशन होती है, फिर उसके यहाँ पे फ्लावर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को जो स्टेम एकदम से लंबी होती है फ्लावर से पहले, इसको बोल्टिंग कहते हैं, इसको बोल्टिंग कहते हैं। तो ये बोल्टिंग है बेटा, एकदम से स्टेम लंबी होती है ऊपर फ्लावर। तो ये जिब्रेलिक एसिड की वजह से वैसे देखा जाए तो ये भी स्टेम इलोंगेशन ही है, स्टेम इलोंगेशन जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब रोजिएट हैबिट किन में होता है, बीट में, कैबेज में, सब तुम्हें याद है ऑलरेडी, बोल्ड मनी पर elongates SHE at market corner. खत्म बेटा, जिब्रेलिक एसिड सब खत्म। अब द पकाने fully seedling disease of rice seedlings was caused by fungal pathogen Gibberella fuji, राइट? देखो मैंने कहा स्पेलिंग करते मैंने कुराई लिखा है, RAI लिखा है, ROI है। ई कुरुसावा, कुरुसावा की स्पेलिंग कर लिखी मैंने पक्का। ई वैसे मैं तुम्हें क्यों बताती हूँ, मैं स्पेलिंग कर लिखती हूँ, खुद ही बता देती हूँ, पर ठीक है मैं तुम लोगों को इंपॉर्टेंट लेसन दे रही हूँ, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। हमें सबको अपनी अपनी गलतियां और औकात बतानी चाहिए। पर रिपोर्टेड Wheat cabbage in many plants with rosette habitat. Wheat cabbage in many plants with rosette habitat. Cabbage, CEPPEG. प्लांट विल रोजिएट ग्रोथ, रोजिएट ग्रोथ क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जो कि जमीन से ऊपर ज्यादा नहीं होते, वो यहीं पे ऐसे ऐसे अपने पत्ते ऐसे यहाँ पे ऐसे उगाते हैं, ऐसे उगाते हैं, बिजी होगा इसको रोजिएट ग्रोथ, ये रोजिएट ग्रोथ। जस्ट फ्लावर पहले इनकी स्टेम बिल्कुल तेजी से लंबी होती है, ऐसे उससे पहले 3 एकदम से स्टेम इलोंगेशन जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से एकदम से स्टेम इलोंगेशन होती है, फिर उसके बाद फ्लावर हो जाता है। इस प्रोसेस को जो स्टेम एकदम से लंबी होती है फ्लावर से पहले, इसको बोल्टिंग, इसको बोल्टिंग कहते हैं। ये बोल्टिंग है एकदम से स्टेम लंबी होती है फ्लावर, तो ये जिब्रेलिक एसिड की वजह से देखा जाए तो ये भी स्टेम इलोंगेशन ही है, स्टेम इलोंगेशन जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, अब रोजिएट हैबिट किन होता है, बीट कैबेज, सब तुमने याद है ऑलरेडी, बोल्ड मनी पर elongates SHE at market corner. Nada better, जिब्रेलिक एसिड सब खत्म। अब द पकाने fully seedling disease of rice seedling was caused by fungal pathogen Gibberella fuji, राइट? मैंने कहा स्पेलिंग करने में कुराई लिखा है, RAI ई कुरुसावा, कुरुसावा की स्पेलिंग कर दी तुमने पता है, ई वैसे मैं क्यों बोल रहा हूं, स्पेलिंग कर दी खुद ही बता देती हूं, तो तेरा जर्मिनेट हुआ ही है, जर्मिनेट हुआ है, अब इसको पूरा जर्मिनेट कराना है, तो increase length of axis पहला फंक्शन, यूज increase length of grape stalks, सब
आपको नहीं याद है ऑलरेडी बोल्ड मनी पर longest SHG at market कौन है ना मैं देखो जिब्रेलिन सब अब द पकाने fully seedling disease of rice seedling was caused by fungal pathogen Gibberella pylori मैं बता सही मैंने क्राई है RIROI ये कुसवा कुसवा की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है पक्का ये वैसे मैं तुम लोगों को क्यों बताती हूं मैं स्पेलिंग गलत लिखती हूं खुद ही बता देती हूं पर ठीक है मैं तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट लेसन दे रही हूं अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखिए हमें सबको अपनी अपनी गलतियां और औकात पता होनी चाहिए reported the appearance of symptoms of diseases in the rice seedlings when they were treated with sterile filtrates of the fungus ठीक है अगर आप फंगस का फिल्ट्रेट ले लोगे मतलब उसको क्रश करके उसका जूस सा निकाल लोगे और आप किसी और प्लांट पे भी डालोगे राइस सीडलिंग पे तो वहां पे भी डिजीज हो जाएगी The active substances were later identified as gibberellic acid. Gibberellins are another kind of promotory PGR. They are more than 100 gibberellins, ठीक है, जो कि फंजाई और हाई प्लांट से निकाले हैं. उनका नाम GA1, GA2, GA3 ऐसे है, लेकिन जो GA3 है is one of the first gibberellins to be discovered and remains the most intensively studied form. सबसे ज़्यादा यही स्टडी करते हैं हम. All GAs are acid नाम में है. They produce wide range of physiological response. Their ability to cause an increase in length of axis, पहला function. Used to increase length of grape stalks, दूसरा function. ठीक है. Cause fruits like apples to elongate, तीसरा function. Also delay senescence, चौथा function. Can be left on trees for extended market period, ठीक है, पांचवा function. Speed up malting process, छठा function. Sugar canes, सातवां function. ठीक है जी. Then 20 टन तक आप इनकी यील्ड पर एकड़ जो है वो बढ़ा सकते हो डाल के. Malting process and sugarcane. Malting process in brewing industry. Sugarcane store carbohydrate in the stem. Spraying sugarcane crop with gibberellin increases the length of the stem, thus increasing the yield of the yield by as much as 20 tons per acre. Sugarcane, ठीक है. Spraying juvenile conifers, 8वां फंक्शन. ये कैसे ज्यादा कैसे हो गए, 9 कैसे हो रहे हैं. अच्छा, स्टेम वाला मैंने अलग से नहीं किया क्योंकि स्टेम वाला अलग से फंक्शन नहीं था, ठीक है. देन यहाँ पे बोल्टिंग है. नो फंक्शंस. इंटरनोड elongation just prior to flowering in deep carriage. 8 फंक्शन है. स्टेम वाला मैंने अलग से लिखा है, यहाँ पे मैंने स्टेम वाले को फर्स्ट लिख दिया ना, क्योंकि शुगर केन स्टेम में होता है, पता है सारे स्टेम्स में होता है, तो इसलिए बेसिकली 8 फंक्शन है. डन. कमेंट में जरूर बताना कि क्या तुम इस चैप्टर को एक नई लाइट में देख पाए हो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ सवेरा हुआ है, क्या तुम्हारी जिंदगी में उजाला हुआ है. तो कमेंट्स में ये जरूर लिख देना कि मैम उजाला हुआ है क्यों नहीं, जरूर हुआ है. Ethylene and Abscisic. हार्ट भी डाल दोगे तो चल जाएगा. नमस्ते भी लिख सकते हो. सेशन को तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक कर देना. आओ देखो, कुछ नहीं बोलोगे तुम, 100% क्वेश्चन सीख करके आओगे. ये सेशन ध्यान से लगाना, ठीक है. इसकी मैंने DPP अपने टेली पे मैं डाल दूँ, टेली नाम आप डाल के नाम से. यहाँ पे ये लिंक भी आता होता है और यहाँ पे मेरा वो भी आता होता है, स्कैनर भी आता होता है, आप वहाँ से स्कैन करके भी डाल सकते हैं. ये मेरी स्लाइड में वो आपको करना ही करना है, क्योंकि चैप्टर आप कितने भी अच्छे से पढ़ लोगे, अगर आप DPP सॉल्व करोगे, अगर आप टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे, और ये क्वेश्चन ऐसे बैठे ये मैंने बैठ के बनाए हैं. जितनी बार ये क्वेश्चन एक तो अभी तुम अभी करोगे चैप्टर के, फिर तुम्हें रिवाइज करना होगा तो ये क्वेश्चन तुम दोबारा सॉल्व कर सकते हो, 3 बार सॉल्व कर सकते हो, 4 बार सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है. आ जाओ. पानी में Simple gaseous PGR. Gaseous PGR highly effective in सिंपल ripening गैसेस fruit. PGR, ठीक है. हाईली इफेक्टिव फ्रूट राइटिंग भाई अलबेली की है. फ्रूट जब कच्चा होता है तो ये फ्रूट है बड़ा हार्ड होता है, बहुत सारे सेल वॉल्स की बहुत हार्ड होती है, टेस्ट नहीं होता, फ्लेवर नहीं होता. फिर जब ये पकने लगता है, राइपन होने लगता है, तो इससे से फ्रूट से ये गैस निकलती है, इथाइल, Effective. और ये गैस फ्रूट के ऊपर ही वापस से आती है और ये इसको पकाती है. ये करती है ब्रेक डाउन सर्टेन सब्सटेंसेस सेल वॉल्स होती है. फिर अंदर शुगर है वो तोड़ती है, तो इससे क्या धीरे-धीरे फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है. फ्रूट मीठा हो जाता है क्योंकि जो स्टार्च वगैरह वो ऐसी शुगर में होता है क्योंकि मीठ होती है, जैसे फ्रक्टोज जो फ्रूट शुगर होती है, ठीक है. ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू स्वीटर शुगर्स. फ्रूट से खुशबू आने लगती है, इससे पता चलता है फ्रूट पक गया. तो ये जितना फ्रूट पकता है उतनी ज़्यादा इथाइलिन निकलती है, जितनी ज़्यादा इथाइलिन निकलती है उतना ही फ्रूट और पकता है. तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक रहता है, और इथाइलिन और पक गया, और इथाइलिन सट बड़ी अलबेली की है. फ्रूट जब कच्चा होता है तो ये फ्रूट है बड़ी हार्ड होता है, इसमें बहुत सारे सेल वॉल्स की बहुत हार्ड होती है, टेस्ट नहीं होता, फ्लेवर नहीं होता. फिर जब ये पकने लगता है, राइपन होने लगता है, तो इससे से फ्रूट से ये गैस निकलती है, इथाइलिन, और ये गैस फ्रूट Highly effective in ripening fruits. Causes abscission of leaves, flowers and fruit.
causes abscission. Abscission, CISSION, abscission in, okay. Simple gaseous PCR, highly effective fruit ripening. In fruit ripening, highly effective in fruit ripening, causes abscission in leaves, flower, and fruit. Causes abscission in leaf, flower, and fruit. Flower and fruit. फूड के ऊपर ही वापस से एक्ट करती है और ये इसको बताती है, ये कहती है ब्रेक डाउन सर्टेन सब्सटेंसेस इन सेल वॉल्स. सेल वॉल्स तोड़ती है, फिर अंदर शुगर्स है वो तोड़ती है. तो इससे क्या धीरे धीरे फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है, फ्रूट मीठा हो जाता है, क्योंकि जो स्टार्च वगैरह ऐसी शुगर में टूट जाता है क्योंकि मीठ होती है, जैसे फ्रक्टोज जैसे फ्रूट शुगर होती है. ठीक है, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू स्वीटर शुगर्स. फूड से खुशबू आने लगती है, इससे होता है फ्रूट पक गया. तो ये जितना फ्रूट पकता है उतनी ज्यादा इथाइलिन निकलती है, जितनी ज्यादा इथाइलिन निकलती है उतना ही फ्रूट और पकता है. तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक देता है, और इथाइलिन निकलती है और पक गया. और इथाइलिन सड़े हुए फ्रूट सबसे ज्यादा निकलती है. ठीक है, इससे जब आप मार्केट से कच्चा फ्रूट लाते हो तो कभी मम्मी को देखा होगा उसको ऐसे किसी चीज में पेपर में न्यूज़पेपर में रख करके और पॉलिथीन से ऐसे बांध करके छुपा के रखती है. पपीता कलर का रहता है, मैंगो कच्चा रहता है, तुमने देखा होगा, बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. तो वो क्या होता है, मम्मी को लगता है कि हो गया, तो ये पता कि पक जाता है, क्योंकि मम्मी को देखा होगा. होता क्या है कि इसलिए फ्रूट इथाइलिन रिलीज है. अब वो इथाइलिन जो है वो ट्रैप कर ले रहे हैं पॉलिथीन और न्यूज़पेपर में ट्रैप कर रहे हैं, तो वो इथाइलिन को पकड़ने में हेल्प करता है. तो इथाइलिन एक ये प्रॉपर्टी है, एक बहुत अजीब प्रॉपर्टी है कि ये किसी को नहीं छोड़ता, ये लीव्स को भी तोड़ने की कोशिश करता है, फ्लावर्स को भी तोड़ने की कोशिश करता है, सब कहता है क्या रोक देता. तो इसकी ग्रोथ को प्रमोट करने वाले फंक्शन भी है और इसके डेथ वाले फंक्शन भी, एब्सिशन भी करता है, इससे भाव भी करता है. तो ये क्या है कि सब कुछ करो, इसको जल्दी बहुत चाहिए और को इथाइलिन नाम से. ठीक है, ये सीजन में कराता है. ठीक है, वैसे मेन जो जल्दी से सीजन में नहीं रहा, पीरियड्स में सीजन में जल्दी करो, फिर ग्रोथ भी करता है, जल्दी करो. फिर फ्रूट लीफ ना आ जाए तो कहते टूट जाओ, फ्रूट आ जाए तो पका भी दे रहा है, तोड़ भी दे रहा है, मतलब सब कुछ ही जल्दी 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 बस कराने की कोशिश कर रहा है. तो मैं इसके मैं सारे के सारे याद करा दूंगी फंक्शंस, बस बने रहो. तो इथाइलिन का पहली बार लोगों ने असर देखना तब शुरू किया, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है जो मैं तुम्हें स्टोरी बता रही हूँ. पहले ना इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं थी तो कोल गैस नाम की गैस से स्ट्रीट लाइट जलने लगे थे. तो ये बंदा ये कोल गैस का लैंप है, तो उसको ठीक कर रहे हैं. तो क्या हुआ, कोल गैस में मेजर कॉम्पोनेंट होता है वो इथाइलिन होता है. तो क्या हुआ, आसपास के जो पेड़ थे उनके पत्ते झड़ गए. बाद में बहुत बात पता चला कि एक्चुअली कोल गैस इथाइलिन होता है. इथाइलिन जो है वो लीव्स को तोड़ने में विश्वास रखता है. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, लीव्स को जो है ब्रेक डाउन कर दिया. सॉरी, जो इथाइलिन है उससे लीव्स का जो ब्रेक डाउन होता है. तो लेकिन डिस्कवरी यहाँ से नहीं हुई इथाइलिन की. इथाइलिन की डिस्कवरी हुई थी एच कजन्स नाम का बंदा था. उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो ऑरेंजेस को, पके हुए ऑरेंजेस को बनाना सीधा, कच्चे बनाना सीधा, तो जो राइप ऑरेंज है, क्या गंदा लिख रही हूँ मैं, जो राइप ऑरेंज है वो रॉ बनाना के साथ अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो रॉ बनाना जल्दी पकता है. तो वो कह रहा है कि राइप ऑरेंज से कुछ तो निकल रहा है यहाँ से, एक्स, जो कि रॉ बनाना को राइप बनाना में कन्वर्ट कर रहा है. बाद में उसने देखा कि जो एक्स है वो एक गैस है एक्चुअली, जिसे हम इथाइलिन कहते हैं. और ये इथाइलिन एक्चुअली हुआ क्या था, वो एक्चुअली शिप में ट्रांसपोर्ट हो रहे थे ऑरेंजेस बनाना, किसी शिप में जाते था. तो उसमें ना कुछ ऑरेंजेस सड़ गए, रॉटन हो गए, तो उनसे बहुत ज्यादा इथाइलिन निकली, तो वो बनाना पकते. तो वहां से उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने इथाइलिन को जो है वो डिस्कवर कर लिया. तो हम लोगों को इथाइलिन का एक फंक्शन तो पता चल गया कि भैया ये फ्रूट राइपनिंग कराता है. अब फ्रूट राइपनिंग के साथ साथ हमें एक बात और पता होनी चाहिए जो कि हमारे एग्जाम में आ सकती है. इथाइलिन कॉजेस फ्रूट राइपनिंग, NING, ये नीट का क्वेश्चन है. एक और कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है फ्रूट राइपनिंग के साथ, वो ये है कि जब फ्रूट राइपनिंग हो रही होती है इथाइलिन की वजह से, तो जो फ्रूट के सेल्स हैं उनका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है. लिख दो ये वाली बात, पहला तो ये पॉइंट है. दूसरा पॉइंट, व्हेन फ्रूट्स आर बीइंग राइपन्ड बाय इथाइलिन, क्या हो जाता है, दिस सेल्स have a very high rate of respiration. अब रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है कि फ्रूट ऐसे करने लगे, फ्रूट के साथ प्लांट्स में ब्रीदिंग नहीं होती थी, ब्रीदिंग की जो मैंने करती दिखाई. रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो प्लांट के सेल्स हैं उनमें ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ब्रेकडाउन होकर एनर्जी निकलती है, एटीपी निकलता है ना, Cells प्लस have जो a CO2 very high rate निकलता है, ये of प्रोसेस फास्ट respiration. हो जाएगा. तो इसी को कहते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा. इस फिनोमिना को जब फ्रूट्स पकते हैं तो उनका जो रेस्पिरेटरी रेट है, रेस्पिरेशन रेट है, वो इंक्रीज हो जाता है. इस फिनोमिना को हम रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं. रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक.
तो ये रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कराना भी इथाइलिन का एक फंक्शन हो गया। हालांकि ये फंक्शन मैंने ट्रिक में नहीं दिया है, सिर्फ मैंने रेट ऑफ रेस्पिरेशन राइपन वाला जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन सॉरी राइपनिंग वाला फंक्शन दिया। तो राइपनिंग वाले फंक्शन के साथ आपको रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक हो जाता है, ये वाला फंक्शन आपको साथ में याद रखना है इथाइलिन की अगर बात करें तो। आओ आगे चलते हैं इथाइलिन में। रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक आप देखने के लिए इस ग्राफ में बहुत प्यार से दिखेगा आपको। जैसे जैसे इथाइलिन का एवोल्यूशन हो रहा है, ये इथाइलिन है, ये जो बिंदु वाली देख लो, ये जो ब्लैक डॉट वाली ये इथाइलिन। जैसे जैसे इथाइलिन बढ़ रहा है, ये इथाइलिन का पीक पॉइंट है, यहाँ पे डार्क बिंदु वाली इथाइलिन है और यहाँ पे इथाइलिन नीचे गिर रही है। वैसे वैसे रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ रहा है। सेकंड वाला क्या है, रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट देखो बढ़ गया, थोड़ी देर बाद जैसे इथाइलिन बढ़ी उसके थोड़ी देर बाद ही रेस्पिरेशन का रेट भी बढ़ गया, टॉप पे पहुंच गया। फिर इथाइलिन गिरी तो रेस्पिरेशन का रेट भी गिर गया, फिर इथाइलिन और गिरी तो रेस्पिरेशन का रेट और भी गिर गया। ठीक है, यही रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक है। इथाइलिन के बढ़ने से सेल्स का रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, फूड के सेल्स का, इसी को रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं। क्लियर ये वाला कॉन्सेप्ट? चलो आगे। अगली बात जो हम करेंगे, हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ इथाइलिन को, जिनसे डरने की जरूरत नहीं है। डरने का मन करता है क्योंकि 13 फंक्शंस हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एपिकल हुक फॉर्मेशन, इनको मैंने तीनों को एक फंक्शन लिया है और ये बहुत सारे बच्चे भूल भी जाते हैं और गलत भी करते हैं, बट इसको एक फंक्शन मानेंगे हम और इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप कभी ना भूलो। इसको हम याद करेंगे ट्रिपल रिस्पॉन्स के नाम से। ट्रिपल रिस्पॉन्स के नाम से। वही बात ये है कि ट्रिक में ये 12 फंक्शंस तो हैं, promote senescence, promote abscission, fruit ripening, break dormancy, germination of peanut, sprouting of potato tuber, internode elongation in deep water rice plants, increase absorption area of roots, initiation flowering in pineapple, induces flowering in mango। ये मैंगो वाला आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में दिया है तो मैंने इंक्लूड किया क्योंकि अभी मुझे एनटीए पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं जब तक कि नीट 2024 का पेपर मेरे हाथ में नहीं आ जाता। ठीक है, प्रमोट फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर, थिनिंग ऑफ कॉटन जेली वॉल्यूम। ये 12 की ट्रिक बनाई है मैंने, ये मेरी ट्रिक में इंक्लूड नहीं हुआ ट्रिपल रिस्पॉन्स। तो आपको ट्रिपल रिस्पॉन्स याद करना है खुद से और मैं आपको मीनिंग समझा दूंगी। ये 12 के लिए हमारे पास triple response functions of ethylene. Functions of ethylene, ethylene. Functions of ethylene, there are 13 functions of ethylene. Functions of ethylene, triple response. Triple response, horizontal growth of seedling, horizontal growth of seedling, SEEDLING, horizontal growth of seedling. Then swelling of axis, horizontal growth of seedling, swelling of axis, apical hook formation, horizontal growth of seedling, swelling of axis, apical hook formation, promotes senescence, senescence, promotes senescence, promotes senescence, promote abscission, promotes abscission, abscission, promotes abscission, promotes senescence, promotes abscission, fruit ripening, RIPENINGS, ripenings, fruit ripenings, break dormancy, BREES, breaks dormancy, DORMANCY, dormancy. Fruit ripening promotes abscission, promotes senescence, fruit ripening, break dormancy. Germination of peanut, sprouting of potato tuber, germination of peanut, germination of peanut, germination of peanut, germination of peanut, germination of potato tuber, sprouting of potato tuber, sprouting of potato tuber,
internode elongation in deep water rice plant. Internode elongation in deep water rice plant. Internode elongation internode elongation internode elongation in deep water rice plants. Internodal elongation in deep water rice plants increase absorption area of root. Increase absorption area of root. Increase increase absorption area of root. Increase absorption area of roots. Increase absorption area of roots. Initiate flowering in pineapple. Induces flowering in mango. Initiates flowering in pineapple. Initiates flowering in pineapple. Induces flowering in mango. Induces flowering in induces flowering in mango. Initiates flowering in pineapple. Promotes female flower in cucumber. Thinning of cotton, cherry, walnut. Okay. Promote female flower in cucumber. Promote female flower in cucumber. Promote female flower in cucumber. Thinning of THINNING. Thinning of cotton, cherry and walnut. Thinning of cotton, cherry and walnut. Thinning of cotton, cherry and walnut. बहुत बढ़िया पिक है, आ जाओ हम बात करते हैं। तो पिक है बहुत ही अजीब सी। Garnier Vitamin C Serum. Try now at ₹99 only. Dark spot reduction सिर्फ 3 दिन में। आप क्लास 8, 9 या 10th में हो या आप IIT जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हो, एक बहुत ही पतला साइंटिस्ट है। वैसे तुमने देखा होगा प्लांट ग्रोथ हार्मोन की सारी ट्रिक्स अजीब ही है, ठीक है, जितनी अजीब हो उतनी बढ़िया, उतना ज्यादा लर्न होगी। एक पतला साइंटिस्ट है, वो बहुत परेशान है कि उसकी एब्स नहीं बन पा रही है और वो दरवाजे नहीं तोड़ पा रहा है, उसको शौक है दरवाजे तोड़ने का। तो हिंद साइंटिस्ट ने एब्स बनाने के लिए क्या किया है? हिंद साइंटिस्ट एब्जॉर्ब्स, क्या एब्जॉर्ब कर रहा है वो? पीसीएम, पैरासिटामोल एब्जॉर्ब कर रहा है एंड पुलाव खाता है वो बहुत सारा। तो बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है, या आंख बंद करके इमेजिन करना पड़ेगा। एक हिंद साइंटिस्ट अपने आगे इमेजिन करो, हिंद साइंटिस्ट एब्जॉर्ब्स क्या कहता है? पुलाव खा लेता हूँ बहुत सारा और ऊपर से पीसीएम, पुलाव और पीसीएम, फिर पुलाव और पीसीएम, ठीक है, और पुलाव खा लेता है। क्यों? टू राइपन एब्स, अपनी एब्स को पकाने के लिए, बढ़िया तरीके से बनाने के लिए, एंड ब्रेक डोर्स को ब्रेक करने के लिए। मन में रिवाइज करेंगे इसको। To ripen abs and break doors. Thin scientist eats PCM and pulao. Scientists observe PCM and pulao to ripen abs doors. To ripen abs. Pulao to ripen abs and break doors. Thin scientists observe PCM and to ripen abs and break doors. बोल सकते हैं, बस आपके घर वाले ये ना मुझे कि आप लोगों को दौरा पड़ गया। Hen scientist absorbs PCM and pulao, why? To ripen abs and break doors. Liquid और जोर से बोल। Hen scientist absorbs PCM and pulao to ripen abs and break doors. क्या मीनिंग बेटा? हिंद से बना बेटा थिनिंग ऑफ कॉटन एंड चेरी। अब थिनिंग ऑफ कॉटन एंड चेरी क्या है? वॉलनट कॉटन चेरी। इथाइलिन एक इनहिबिटरी पीजीआर भी है, एक प्रोमोटरी पीजीआर होने के साथ साथ। इनहिबिटरी पीजीआर के क्या गंदे काम होते हैं? लीव्स को तोड़ देना, एब्सिशन ऑफ लीव्स कर देना, ठीक है, सेनेसेंस कर देना, सेनेसेंस का बुढ़ापा, सेल को बूढ़ा करके मार देना, ठीक है, सेल या किसी ऑर्गन को प्लांट। तो थिनिंग ऑफ कॉटन और चेरी का मतलब ये है कि जब हम पे इथाइलिन छिड़कते हैं तो इनमें लीफ ड्रॉप हो जाता है, फ्रूट ड्रॉप भी हो जाता है, ठीक है। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम कुछ फ्रूट ट्रीज में थिनिंग करते हैं ताकि कुछ फ्रूट्स जो बच्चे फ्रूट्स हैं वो उधर के गिर जाएं, ताकि जो बच्चे फ्रूट्स हैं वो मोटे हो सके, उनको स्पेस और न्यूट्रिएंट्स मिल सके ताकि वो मोटे मोटे और बड़े बन सके। तो हम जैसे मान लो एक पेड़ पे 100 फ्रूट्स लगे, ठीक है,
100 चेरीज लगी हैं, तो आप उसमें से 50 चेरीज काट दो मान लो, या इथाइलिन फेंक दो, 50 अपने आप गिर जाएंगे नीचे, ठीक है। फिर जो 50 बची हुई चेरीज है वो मोटी मोटी लगेगी, क्योंकि उनको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, इसको बोलते हैं थिनिंग, ठीक है। थिनिंग फ्रूट्स की भी हो सकती है, लीव्स की भी हो सकती है, आपको लीव्स गिराना है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट है प्रमोट्स सेनेसेंस, मतलब बुढ़ापा प्रमोट करता है, वो डेथ प्रमोट करता है सेल्स की। एब्जॉर्ब, इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ रूट्स, ये रूट ग्रोथ में हेल्प करता है और रूट हेयर ज्यादा से ज्यादा बनवाता है, जितने रूट हेयर होंगे उतना ही एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ प्लांट जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो रूट में कौन से मतलब ऑक्सिन और इथाइलिन दोनों रूट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। पीसीएम, इसके 3 फंक्शंस है बेटा। पी मतलब पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है। सी मतलब क्यूकम्बर, क्यूकम्बर में फीमेल फ्लावर्स को बढ़ा देता है ये। समहाउ जब इथाइलिन आप क्यूकम्बर फील्ड में छिड़क दोगे तो फीमेल फ्लावर्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जितनी फीमेल फ्लावर्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी, फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट होते हैं, ठीक है। जितनी फीमेल फ्लावर्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी उतना ही फ्रूट ज्यादा लगेगा, तो बेसिकली यील्ड बढ़ा देते हैं क्यूकम्बर की। देन एम से मैंगो, ये तीनों फ्लावरिंग से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। पुलाव एक अकेला चीज नहीं है, पुलाव में भी 3 चीजें हैं, ठीक है। अगर 12 चीजों की टेक बनानी है तो आपको ऐसे ही बनानी पड़ेगी। पुलाव में है चावल, पुलाव में है Okay. आलू, हमारे पुलाव में चावल और आलू डलता है, हमारे पुलाव में पीनट भी डलता है। Okay, then you're planning. No. Peanut. Fresh potato. Peanut. P-E-N-U-T. Peanut. Peanut. Promotes, okay, thinning of cotton, cherry and walnut. Germination of potato tuber, peanut and rice. Okay, rice, germination of peanut, or this is germination of sprouting of potato tuber. मतलब मूंगफली बड़ी कैसे कैसे याद रखना आपने। ये डीप वाटर जो राइस प्लांट्स होते हैं, डीप वाटर राइस प्लांट्स होते हैं, एक तो राइस प्लांट होता है थोड़ा कम पानी में उगते हैं ऐसे, एक होते हैं जो बहुत ज्यादा गहरे पानी में उगते हैं ऐसे, वो बहुत ऐसे लंबे लंबे होते हैं, लंबे लंबे वाटर डीप वाटर राइस प्लांट्स होते हैं। तो इनको ये लंबा कर देती है, ठीक है। डीप वाटर राइस प्लांट को इथाइलिन इनके इंटरनोड को लंबा कर देती है ताकि वो पानी से बाहर आके सांस, मतलब थोड़ा सा उनका हिस्सा पानी से बाहर भी रह सके। अब गलती क्या होती है, स्टेम इलोंगेशन जिब्रेलिन का पार्ट है और यहाँ पे स्टेम इलोंगेशन इथाइलिन करा रही है, ठीक है। तो आपको ये स्पेसिफिकली याद रखना है कि राइस में अगर स्टेम इलोंगेशन है, डीप वाटर राइस प्लांट्स में इथाइलिन करा रही है। आलू में ये जर्मिनेशन कराती है, जल्दी करती है कि सब जल्दी करो, उग भी जल्दी जाओ, मर भी जल्दी जाओ, ठीक है। ये आलू जैसे वो है ना, स्टेम है ना, आलू ट्यूबर है ना बेसिकली, उसमें से बर्ड्स होती हैं, उनके बर्ड्स को ग्रोथ कराती है, नई प्लांट बनाओ जल्दी बनाओ, ठीक है। पीनट, पीनट में जर्मिनेशन कराती है, जर्मिनेशन में हेल्प करती है। हालांकि जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स है वो मेन काम आपका जिब्रेलिन करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ सीड्स में हेल्प करती है जर्मिनेशन में, जैसे कि पीनट के सीड्स में। देन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और इसी के साथ रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक भी याद कर लेना आपने। एब्स, एब्स मतलब प्रमोट्स Ripening of fruit. Respiratory climatic. Ripening of fruit and respiratory climatic okay. Absorption promotes abscission. Promotes abscission, abscission, promotes abscission. Then एब्सिशन, ये एब्सिशन टूटने को प्रमोट करती है, लीव्स का टूट के गिरना, फ्रूट का टूट के गिरना, ठीक है, फ्लावर्स का टूट के गिरना, एब्सिशन को प्रमोट करती है। एंड ब्रेक्स डोर्स, ब्रेक्स डोर्स का मतलब है ब्रेक्स डोरमेंसी, किसकी, बर्ड डोरमेंसी एंड सीड डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। चीज को कहती है कि भैया बहुत बड़ी डोरमेंसी जर्मिनेट कर दो, तो जर्मिनेशन में जिब्रेलिन और इथाइलिन दोनों का हाथ होता है, मेन जिब्रेलिन होते हैं। seed क्लियर, and देखो कितने फंक्शन इसमें कवर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो कवर नहीं हुआ है वो है ट्रिपल रिस्पॉन्स, जो मैं आपको सिखा रही हूँ क्या होता है ट्रिपल रिस्पॉन्स। आपको ऐसा कैसा याद कर लेना है ट्रिपल रिस्पॉन्स। आ जाओ, इमेजिन करो, ये तो ट्रिपल रिस्पॉन्स इथाइलिन का दिखाया हुआ है एयर में, बाहर से पौधा एयर में निकल चुका है। एक्चुअली तो इथाइलिन आपको देखने के लिए मिलता है सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर। मान लो आपका एक सीड है, यहाँ जर्मिनेट कर गया और इसका ऐसे ऊपर टूट निकली, यहाँ पे ऐसे टूट निकला, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक मैकेनिकल स्ट्रेस आ गया, मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब इसको सामने पे पत्थर दिया, ठीक है, जैसे स्टोन। अब ये कैसे ऊपर गया, तो जैसे ही ये टिप इसको टच करती है, इसमें इथाइलिन प्रोडक्शन होता है। एक्चुअली इथाइलिन भी, जब भी प्लांट को स्ट्रेस आता है इथाइलिन भी रिलीज होती है, एब्सिसिक एसिड भी रिलीज होता है, लेकिन स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड को कहते हैं, इथाइलिन को नहीं। एक्चुअली जब स्ट्रेस आता है इथाइलिन भी रिलीज होती है। तो यहाँ पे प्लांट को स्ट्रेस हुआ क्योंकि अब ऊपर नहीं जा पा रहा स्टोन, तो ये करेगा यहाँ पे ट्रिपल रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा, इथाइलिन रिलीज होगी, ट्रिपल रिस्पॉन्स आएगा। ट्रिपल रिस्पॉन्स का पहला रिस्पॉन्स होता है थिनिंग ऑफ एक्सिस। तो ये एक्सिस पहले
होती है कि मैं अपने जोर तो थोड़ी ताकतवर तो है ना, तब तो मैं कुछ करूंगी। अब तुम्हें क्या लग रहा है ठीक हो कि ये पूरे पत्थर भी उठा देगी? नहीं। सेकंड रिस्पॉन्स होता है इसका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। Thickening of हॉरिजॉन्टल axis. ग्रोथ Thickening of axis. ऑफ Thickening of axis. सीडलिंग। Seedling. मतलब ये सीधा जाने की बजाय जैसे ही इसमें इथाइलिन रिलीज हुई, एक तो ये मोटा हो गया और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने लगी। Horizontal इससे growth क्या हो of गया? स्टोन की साइड में पहुंच गया, swelling of axis. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर दी। तीसरा है एपिकल हुक फॉर्मेशन। एपिकल Hook formation. हुक फॉर्मेशन माने यहाँ पे पहुंचते इसने ऐसे एपिकल हुक बना दी। तो ये पहला रिस्पॉन्स आया थिकनिंग ऑफ एक्सिस, ये दूसरा रिस्पॉन्स आया हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और ये तीसरा रिस्पॉन्स आया और एपिकल हुक ऐसे हुक बने। ठीक है, ये ट्रिपल रिस्पॉन्स आता है इथाइलिन की वजह से, इथाइलिन प्रोडक्शन की वजह से, और ये आता है डार्क में। सॉइल के नीचे डार्क होता है, अंधेरा होता है, डार्क में आता है ट्रिपल रिस्पॉन्स आता है। अब ये हमने प्लांट में करके देखा ट्रिपल रिस्पॉन्स जो कि ऑलरेडी उग चुका है। अब इस पे इथाइलिन डालेंगे तो क्या होगा? ठीक है, ये इसमें हमने कोई इथाइलिन नहीं डालते सीधा हो गया। जब यहाँ पे भी हमें डार्क रखना पड़ेगा। इथाइलिन का जो ट्रिपल रिस्पॉन्स है वो अंधेरे में आएगा, तो आप यहाँ डार्क रखोगे तभी आएगा। यहाँ पे इथाइलिन नहीं डाली, आपका देखो सीधा निकल जाता है, क्योंकि आप इथाइलिन तब थोड़े रिलीज होता है क्योंकि ऊपर हवा में निकल गया। इसमें हमने 0.10 पार्ट्स पर मिलियन इथाइलिन डाली। देखो इसमें हल्का सा ऐसे आ रहा है, थिकनिंग ऑफ हो रही है, हल्का सा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है, वैसे हुक फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे 0.2 डाला, यहाँ 0.4 डाला, यहाँ पे 0.8 डाला। आप देखो जितना ज्यादा आप इथाइलिन डालते जा रहे हो उतना ही स्ट्रॉन्ग ट्रिपल रिस्पॉन्स आपको दे रहा है, उतनी ही थिकन हो रही है जो एक्सेस है, उतना ही ज्यादा वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में जा रही है और उतनी ही तगड़ी हुक बना रही है। समझ में आ गया? सो ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथाइलिन इज व्हेन द स्टेम इट सफर्स अ मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, जो एक्सेस है उसको मैकेनिकल स्ट्रेस होता है। मैकेनिकल स्ट्रेस जनरली कब होता है? जब सॉइल के नीचे होता है और इथाइलिन जैसे ही स्ट्रेस होता है इथाइलिन रिलीज होता है। मैं रिवाइज करा रही हूँ, जैसे ही स्ट्रेस हुआ इथाइलिन रिलीज हो गई। ठीक है, जैसे ही इथाइलिन रिलीज हुई, डार्क था, अगर डार्क है और इथाइलिन रिलीज हुई है तो ट्रिपल रिस्पॉन्स आ जाएगा। ट्रिपल रिस्पॉन्स आ जाएगा तो हॉरिजॉन्टल थिकनिंग, सॉरी स्टेम थिकनिंग, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एपिकल हुक फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम आई थिंक नहीं है, ये मैंने किसी बुक से लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, आगे चलिए, ये आपके Thickening of axis. Thickening. Horizontal growth. Horizontal growth of swelling. Swelling of axis. Apical hook formation. Hook formation. ट्रिक में भी नहीं है, ये आपको खुद से याद करना है। Swell. बाकी आप लोगों को बहुत कुछ आ गया है। ब्रेक्स सीड एंड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी, सीड एंड बड डॉर्मेंसी, एंड बड डॉर्मेंसी कुछ नहीं याद करना आपको, ब्रेक डोर से याद कर लेना है। ब्रेक डोर है ना उसमें, ब्रेक डोर मतलब ब्रेक डॉर्मेंसी, किसकी? सीड और बड की डॉर्मेंसी, ये ब्रेक कर दे रही है। आगे रैपिड इलोंगेशन इन डीप वाटर आइसलैंड्स, आप समझ चुके हो। सिर्फ ये स्टेम इलोंगेशन ऐसी है जो कि इथाइलिन करा रही है, नहीं तो स्टेम इलोंगेशन जिबरेलिन का काम। ठीक है, एब्सिशन ऑफ लीव्स, देखो मैंने कहा था कि ऑक्सिन जो है वो अर्ली ड्रॉप ऑफ लीव्स को रोकती है, लीव एंड फ्रूट को अर्ली ड्रॉप को रोकती है। ठीक है, तो जब तक ऑक्सिन ज्यादा होता है तब तक गिरने नहीं देता, लेकिन जब लीव बूढ़ा हो जाता है तो यहाँ पे इथाइलिन ज्यादा होने लगती है। इथाइलिन ज्यादा होती है, यहाँ पे एब्सिशन लेयर बनाती है, यहाँ पे सेल्स को मार देती है और ये टूट के गिर जाता है। सो एब्सिशन ऑफ लीव्स कराती है ये। देन सेनेसेंस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, किसी भी सेल को मारना, बूढ़ा करके मारना, इथाइलिन का काम है। सेनेसेंस, जितना एक ऑर्गन या एक सेल बूढ़ा होता जाएगा प्लांट का, उतनी वहां से इथाइलिन रिलीज होती जाएगी और जितनी इथाइलिन रिलीज होती जाएगी उतना ही वो और बूढ़ा कर देगी। तो बूढ़ा करने का फायदा क्या है सेल को? बेटा सेल की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब वो मर रहा होता है, वो बहुत सारे एंजाइम रिलीज करता है, अपनी चीजें तोड़ता है, उसमें से न्यूट्रिएंट निकालता है और वो कोशिश करता है कि वो प्लांट को वो न्यूट्रिएंट दे के जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्लांट के पास वापस चले जाए और फिर वो मर जाए। ठीक है, तो इसमें इथाइलिन का काम है। साइंटिस्ट से हमें याद रखना है सेनेसेंस। ठीक है, थिनिंग ऑफ कॉटन एंड चेरी, वॉलनट, कॉटन, चेरी, इनमें थिनिंग होती है। तो ये मैंने ऐसे एग्जांपल दिया थिनिंग का एग्जांपल, हालांकि पीच का एग्जांपल नहीं है एनसीईआरटी में, बट आप देखो जहाँ ज्यादा पीचेस लगे वहाँ साइज कम है पीचेस का, जहाँ हमने थिनिंग कर दी है पीचेस की, कुछ पीचेस निकाल दिए तो यहाँ पे पीचेस का साइज बड़ा हो गया। हालांकि पीच का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ, कॉटन का दिया हुआ है, चेरी का दिया है, आई थिंक वॉलनट का दिया हुआ है। इनकी थिनिंग करते हैं। थिनिंग कैसे कर रहा है? ऑब्वियसली एब्सिशन करा रहा है फ्रूट्स एंड लीव्स का, तभी थिनिंग कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर, जितने बता दिया मैंने फीमेल फ्लावर्स होगी जितने ज्यादा उतने ज्यादा आपके कुकम्बर्स लगेंगे। ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, इथेपॉन, इथेपॉन एक्वस सॉल्यूशन है किसका? इथाइलिन का, जो आप प्लांट को रूट्स में देंगे और ये रूट्स इजीली इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इजीली एब्जॉर्ब, रेडिली एब्जॉर्ब लिखा है एनसीईआरटी में, वही मीनिंग है, इजीली एब्जॉर्ब। प्लांट में आपने दे दिया,
जैसे ही इजिली एब्जॉर्ब हुआ फिर वो धीरे धीरे इथाइलिन रिलीज करता है, ठीक है, लेकिन रिलीज धीरे करता है, एब्जॉर्ब इजिली होता है फिर धीरे धीरे एकदम से इथाइलिन रिलीज करेगा। aqueous solution of ethylene, aqueous ethiform solution of ethylene, ETHYLN, ethylene, easily absorbed, easily absorbed, ठीक है, तो इसमें इथाइलिन का काम है, साइंटिस्ट से हमें याद रखना है सेनेसेंस, ठीक है, थिनिंग ऑफ कॉटन एंड चेरी, वॉलनट कॉटन चेरी में थिनिंग होती है, मैंने ऐसे एग्जांपल दिए, थिनिंग एग्जांपल पीछे एग्जांपल नहीं है चेरी, बड़ा देखो जहां ज्यादा पीछे लगे वहां साइज कम है पीछे, जहां में थिनिंग कर दिया पीछे उस पीछे निकाल दिया, पीछे का साइज बढ़ाओगे, अगर पीछे एग्जांपल एग्जांपल नहीं हुआ, कॉटन का दिया हुआ, चेरी का दिया है, आई थिंक वॉलनट का दिया हुआ है, इनकी थिनिंग करते हैं, थिनिंग कैसे करा, ऑब्वियसली एब्सिशन करा है, फ्रूट्स एंड लीव्स का थिनिंग करा, ठीक है, बट अच्छा फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर्स, जितने बता दिया मैंने, फीमेल फ्लावर्स जो भी जितना ज्यादा उतने ज्यादा आपके क्यूकम्बर्स लगेंगे, ये क्वेश्चन आता है। अच्छा इथेनॉल एक्वा सॉल्यूशन है किसका, इथाइलिन का, जो आप प्लांट को रूट्स में देंगे और ये रूट्स इजीली इसको एब्जॉर्ब करते हैं, इजीली एब्जॉर्ब, रेडिली एब्जॉर्ब कैंसिटी में वही नहीं है, इजीली एब्जॉर्ब प्लांट में आपने दे दिया, जैसे इजीली एब्जॉर्ब हुआ फिर वो धीरे धीरे रिलीज करता है, लेकिन रिलीज धीरे करता है, एब्जॉर्ब इजीली होता है, धीरे धीरे एकदम से इथाइलिन रिलीज करेगा तो प्लांट के सारे पत्ते गिर जाएंगे, धीरे धीरे रिलीज का मतलब तुमको पता है, ठीक है, रिलीजेस इथाइलिन स्लोली, ठीक है, कौन एक्वा सॉल्यूशन है, आ जाए releases ethylene slowly, releases ethylene slowly, releases ethylene slowly, आ जाओ खत्म खत्म कुछ नहीं है, एक बार फिर से एनसीईआरटी में बताना कुछ नहीं है, ठीक है, कमेंट से लोग लिखना अगर आपको सारे फंक्शन इथाइलिन के याद हो गए हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये क्लास लगाने के बाद आपको एक एक फंक्शन याद हो जाएगा, एक एक और होगा, अगर हो जाए तो कमेंट करो, एक्सेप्ट द कंफर्म द रिलीज ऑफ वाइटल सब्सटेंस फ्रॉम ripened oranges that hasten the ripening of stored unripened bananas, later this vital substance gas होता है, इसका gas ठीक है, identified as ethylene, a gaseous PGR, ethylene is a simple gaseous PGR, सारे के सारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स सिंपल स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, PGR का फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया, वो मिस हो गया, आप खुद पढ़ना, वहां पे लिखा हुआ है कि वो स्मॉल सिंपल PGR होते हैं, मतलब केमिकल्स होते हैं, it is synthesized in large amount by tissue undergoing senescence, साइंटिस्ट वाली बात से याद रख लेना हम लोगों ने, ठीक है, एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में होता है, इन्फ्लुएंसर ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट्स इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, ये ट्रिपल रिस्पांस है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग, ये थर्ड है जो कि माइट्रिक में इंक्लूडेड नहीं है, इथाइलिन प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली इन लीव्स एंड फ्लावर्स, एब्सिशन को मैं चौथा कर दूं क्योंकि सेनेसेंस तो पहले से ही आ गया, ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, ये हो चुका है, इट एनहांसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, ये आपने समझा लिया, समझ लिया करिए, कितने हो गए तुम्हारे 4, ठीक है, इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बड डोर्मेंसी 5, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड 6, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स 7, ठीक है, प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड या पिट्यूल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स 7, it helps leaves and upper parts of the shoot to remain above water, ठीक है, इथाइलिन also promotes root growth and root hair formation helping in increase their surface area, absorption surface area, आपके कौन सा 8 है, इथाइलिन is used to initiate flowering and for synchronizing the food set in pineapple, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर सिर्फ बोले कि इंक्रीज इनिशिएट फ्लावरिंग कौन करता है पाइनएप्पल में, तो आप you can talk now, मैं चैट्स ऑन कर देती हूँ, और इथाइलिन दोनों का नाम लेते हो, लेकिन एक और तब ऐड हो जाती है जब आप इथाइलिन की बात करते हो, सिंक्रोनाइजिंग द फ्रूट सेट, सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट का मतलब होता है पूरे के पूरे खेत में एक साथ फ्रूट होंगे, ठीक है, ये नहीं तुम पहले उगलो तुम्हारे ताकि एक साथ पूरी यील्ड आ जाए, ये काम इथाइलिन का है, सिंक्रोनाइज करने का, ठीक है, ये ऑक्सिन के लिए ये वर्ड नहीं यूज हुआ है सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, कैसे याद कर सकते हो कि सिंक्रोनाइजिंग वाला जो है वो इथाइलिन है, तो याद करना पड़ेगा, ऐसे कर सकते हो कि भाई सिंक्रोनाइज करने की मैंने बाद में सोची, ऑक्सिन तो पहले पढ़ लिया, इथाइलिन बाद में पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ इनिशिएट करने के साथ सिंक्रोनाइज भी कर लें फ्रूट सेट को, तब उन्होंने फिर थोड़ा इथाइलिन ऐड कर दिया उसके लिए, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं, ठीक है, इट आल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, 10 सिंस इथाइलिन रेगुलेट्स सो मेनी, आपने से कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि आप हर फंक्शन डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो, आप डिटेल में नहीं बता रहे हो कि कैसे सीड या बड डोर्मेंसी को कैसे खत्म कर देता है या पीनट में जर्मिनेशन कैसे करा देता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बेटा ये चैप्टर ऐसा है, अगर आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे तो आपका फोकस उस चीज से हट जाएगा जिससे कि आपको एक्चुअली में फायदा होगा, ठीक है, फंक्शन याद करने से, इसलिए मैं बहुत ही लिमिटेड चीजों को इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसे जो मुझे लगता है डिटेल में एक्सप्लेन किए बिना आपको चलेगा ही, ट्रिपल रिस्पांस मैंने कर दिया, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक है, इस चीज को एक्सप्लेन करने से पीनट में जर्मिनेशन कैसे हो रहा है, ट्यूबर कैसे जर्मिनेट, मुझे लगता है सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और तुम्हारा ध्यान और एनर्जी कहीं और डाइवर्ट हो जाएगी जहाँ मैं नहीं चाहती कि डाइवर्ट हो, मैं चाहती हूँ आपकी एनर्जी फोकस्ड रहे जहाँ से आपको नंबर आने वाली, जहाँ से आपको फायदा होने वाला, ठीक है, बस सिंस इथाइलिन रेगुलेट्स सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर, तो मोस्ट वाइडली यूज्ड दो हैं, एक ऑक्सिन के लिए टर्म लिखी हुई है और एक इथाइलिन के लिए, वन ऑफ द मोस्ट, दोनों है, ठीक है,
The most widely used compound as source of ethylene is ethylene, ये याद रखना है आपने, ठीक है? Ethylene is an aqueous solution which is readily absorbed, तेजी से absorb होता है, लेकिन and transported in the plant but releases ethylene slowly ethylene, हमें चाहिए भी ऐसे, ethylene slowly release होने पे तो plant की बैंड बजा देगा ethylene तो बहुत fast release होता है, सारे पत्ते सारे fruit सब झड़ा देगा, गंजा कर देगा plant को यार. Ethylene hastens fruit ripening in tomatoes and apples and accelerates abscission in flowers and fruits. Abscission हमने पहले कर लिया क्या? I don't know किया है कि नहीं किया. Abscission नहीं किया कर लेते हैं यहाँ पे. 10 कितने हुए? 11. ठीक है. Then thinning of cotton, cherry, walnut. बेटा abscission of flowers and fruits की वजह से thinning होती है. ठीक है. 12. It promotes female flowers. 13. Clear? Clear है ethylene. याद होगी ट्रिक याद होगी. Can scientists मतलब thinning of cotton, cherry, walnut. मैं cotton, cherry, walnut याद करने का कोई ट्रिक नहीं निकाला. अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो आप मुझे लिख सकते हैं. Cotton, cherry, walnut. ठीक है. इनकी थिनिंग में काम आता है कि कितनी चीज का ट्रिक निकालोगे आप. ठीक है. कुछ चीजों में मुझे आपकी हेल्प भी चाहिए हो सकती है. कुछ थिनिंग में आप मुझे बताना क्या ट्रिक है. थिनिंग में फिजियोलॉजी की थिनिंग करनी है. साइंटिस्ट मतलब सेंसेस क्या होता है. ठीक है. देन साइंटिस्ट एब्जॉर्प्शन सर्फेस बनाता है. रूट के बेसिकली एब्जॉर्ब पीसीएम तीन है. पाइनएप्पल और क्यूकम्बर और मैंगो. पीसीएम एंड पुलाव में भी तीन है. राइस की लंबाई बढ़ा देता है. डिकॉट राइस प्लांट्स का. ठीक है. पुलाव में आलू होता है. आलू की ट्यूबर की जर्मिनेशन कराता है बर्ड्स की. ठीक है. देन पीनट की जर्मिनेशन कराता है. ठीक है. टू राइपन एब्स. टू से एंड से कभी भी न्यूमोनिक्स में मेरे आपको कोई वो नहीं मिलेगा. तो टू एंड की चिंता नहीं करनी आपको. ठीक है. राइपन एब्स राइपन राइटिंग ऑफ फ्रूट हम कहते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट याद रखना साथ में. राइटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी यूनिट को साथ में याद रखना. ठीक है. एब्स मतलब एब्सिशन कराता है. ठीक है. लीव्स का फ्रूट्स का फ्लावर्स का. ठीक है. एंड ब्रेक टू मतलब डोमेंसी को ब्रेक करता है. इसकी बल्कि डोमेंसी को सीड की डोमेंसी को. इसके साथ साथ अपने ऊपर रिस्पॉन्स याद रखना कि थाइमिन निकालना है. इतनी फॉर्मेशन को इंक्लूड फॉर्मेशन डन. ऐसे कैसे जाओ लास्ट 10 मिनट का ब्रेक लेंगे फिर से. ओके. हम लोगों का सेकंड स्लॉट कंप्लीट हो गया है. अयो मुझे खुशी हुई तुम्हें देख के. मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे. मुझे लगा तुम फिर से सो जाओगे. या फिर सोए ही नहीं हो. हर बार थोड़ा सो जाऊंगा यार. मुझे समझ में नहीं आया. सोया था तुम. I slept 5 hours. 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12. 4 hours and 30 minutes. जब ये सेकंड सेशन स्टार्ट किया था ना, आई थिंक 2:30 पे किया था. तो आई वाज थिंकिंग कि शुभम आएगा कि नहीं. आई थिंक वो नहीं आएगा क्योंकि वो सोएगा, ऐसा मेरा दिल में हो रहा था. मैं बोल रहा हूँ हर बार थोड़ी सो जाऊंगा कल की तरह. अब 1 घंटा नहीं सोया हूँ. अब 1 घंटा नहीं सोया हूँ. मैंने ब्रेक को पिन कर दिया है ना. कैन आई टेल यू समथिंग? आई डोंट, प्लीज़ डोंट. इफ़ देर इज़ समथिंग यू आर गोइंग टू स्पिल नेगेटिविटी देन डोंट. क्योंकि मुझे बुरा लग ही जाता है.
All the best to taxi. I think it's raining outside, but I think I should go and walk. Aris, you're welcome. Why are you sleeping? I'm not sleeping. Who said I'm sleeping? शुभम, कोई भी नेगेटिविटी फैलाए ना तो उसको ना तुम बैन कर देना, परमानेंटली भी बैन कर सकते हो.
हो गया ब्रेक खत्म। टून टैक्सी को शुभम ने डिलीट कर दिया। Become a doctor, the first thing you should do is treat the heart. किसके हार्ट को ट्रीट करना है? शुभम विल स्टे टिल। मैंने इतना सारा चाय बना लिया। This is slot 3, right? डोंट गो जब तक एलेक्स नहीं आ जाता, ओके? Name a car for edit. Let me pin this one. I'll start the session, okay? Good luck, शुभम। मैं तब तक ना चैट्स ऑफ कर देती हूँ। ब्रेक में चैट्स ऑन कर लूँगी, ओके? अभी ऑफ ही रहेगा। 1 आवर बाद ब्रेक लेंगे तब ऑन करूँगी। सेफ फास्ट। नेम अ कार फॉर एडिट सुन। व्हाट काइंड ऑफ कार? स्पोर्ट्स कार और व्हाट? मुझे ऐसे कार का कोई शौक नहीं है और मुझे ज़्यादा नाम भी नहीं पता है। आपको जो पसंद है वही एडिट कर लो ना। एब्सिसिक एसिड एक बुरा हार्मोन है। हमें लगता है कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, ये बहुत बुरा है। समय समय पर ऑर्गेनिज्म को, यहाँ पे हम जिस ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं प्लांट, समय समय पे एक ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ को रोकना पड़ता है, क्योंकि ताकि वो उस एनर्जी को जो वो ग्रोथ के लिए लगा रहा था, उस एनर्जी को वो जिंदा रहने में लगा सके। ऐसा तब होता है जब उस ऑर्गेनिज्म को अपनी जान के लाने पड़ जाते हैं। और उसकी कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रेस आ गया ऑर्गेनिज्म पे। तो जब प्लांट्स अंडर स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में मान लो किसी प्लांट में ड्रॉट आ गया, उसको पानी नहीं मिल रहा, ठीक है, या किसी प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही, तो उसको बोलते हैं प्लांट स्ट्रेस में। तो ABA उस टाइम पे रिलीज होता है और रिलीज होके वो सारी ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। कहता है रुक जाओ, पहले जिंदा रहने पे फोकस करो, ठीक है। तो वो एनर्जी डाइवर्ट कर देता है सर्वाइवल की तरफ, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ABA का बहुत बड़ा जो वो है, क्या कहते हैं, रोल है, वो है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में। ये क्यों करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा? जब प्लांट के पास पानी नहीं होता, ड्रॉट की सिचुएशन में प्यासा मर जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, स्टोमेटा बंद करवा देता है। कैसे करता है? वो बेसिकली पोटेशियम आयन को बाहर खींच लेता है, ठीक है। तो तुम्हें पता है स्टोमेटा के गार्ड सेल में से अगर पोटेशियम आयन बाहर खींच लेता है तो पानी साथ साथ में बाहर निकल जाता है, तो वो पिचक जाता है, स्टोमेटा से पिचक जाता है, गार्ड सेल से पिचक जाता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है, ताकि पानी का लॉस रोका जा सके, ठीक है। अगर स्टोमेटा बंद होता है तो आप समझ सकते हो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, कि गैसेस एक्सचेंज कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, समझ तुम ग्रोथ वगैरह सब कुछ कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फूड बनना ही आपका बंद है। तो ये आपको बचाने के लिए कर रहा है, आपने बुरा नहीं मानना है,
रिलीज बाय प्लांट इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसका और जिब्रालिक एसिड का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, टोटली ऑपोजिट एक्शन होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, स्पेशली जिब्रालिक एसिड। जीए के अगेंस्ट है ये, जीए और एबीए एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, लड़ाई मचा के रखते हैं। जीए सीड की जर्मिनेशन कराते हैं, एबीए सीड को डोरमेंसी में लेके जाते हैं। सीड को अब तुम कहोगे मैम सीड को डोरमेंसी में क्यों लेके गया, डोरमेंसी क्या होता है पहले ये समझो। डोरमेंसी होता है बेटा, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। रेशियो ऑफ एबीए टू ग्रोथ हार्मोन डिटरमाइन द फाइनल फिजियोलॉजिकल आउटकम। बहुत बढ़िया। डोरमेंसी होता है एक सीड पूरी तरीके से बन चुका है, कम हो जाएगा, समझ तुम ग्रोथ वगैरह सब कुछ कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फूड बनना ही आपका बन गया। तो ये आपको बचाने के लिए कर रहा है, आपने बुरा नहीं माना। रिलीज बाय प्लांट इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसका और जिब्रालिक एसिड का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, टोटली ऑपोजिट एक्शन होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एंड Released by plant in stressful conditions. Stress hormones, abscisic acid, stress hormone. Abscisic acid, stress hormone. Abscisic acid, stress hormone. Abscisic acid, stress hormone, released by plants in stressful condition. Released by plant in stressful conditions, antagonize the action of growth promoting hormone. Antagonizes the action of growth promoting hormone. Antagonizes the action of growth promoting hormone. Action of growth promoting hormone. Antagonize the action of growth promoting hormone. Ratio of abscisic acid to growth hormone determines the physiological outcome. antagonizes the action of growth promoting hormones, especially gibberellin। जीए के अगेंस्ट है, जीए और एबीए अगेंस्ट होते हैं, लड़ाई मचा के रखते हैं। जीए सीड की जर्मिनेशन कराता है, एबीए सीड को डोरमेंसी में लेके जाता है। सीड को अब तुम कहोगे मैम सीड को डोरमेंसी में क्यों लेके गया, डोरमेंसी क्या होता है पहले ये समझो। डोरमेंसी होता है बेटा, ये पढ़ लेते हैं एक बार। रेशियो ऑफ एबीए टू ग्रोथ हार्मोन्स डिटरमाइन द फाइनल फिजियोलॉजिकल आउटकम। Ratio of ABA to growth hormone determines ratio of ABA to growth hormone hormones determines the final physiological outcome. The final physiological outcomes. Stress hormone, closure of stomata. CLO, closure SURE. Closure of stomata. बहुत बढ़िया। डोरमेंसी होता है एक सीड पूरी तरीके से बन चुका है, इसको अच्छे सॉइल में भी डाल दिया हमने, इसको हमने पानी भी छिड़क दिया ऊपर से, उसकी अब सनलाइट प्रॉपर है, लेकिन फिर भी ये जर्मिनेट नहीं कर रहा। ठीक है, इस सिचुएशन को कहते हैं व्हेन सीड डज नॉट appropriate conditions are given to it. Appropriate, yes, you know, suitable conditions are provided. तो तुम लगता है क्या ऐसा क्यों? सब कुछ है लेकिन जर्मिनेट ये भी कहता है आज मैं सीड को जर्मिनेट कर दूं और ये फिर ग्रो ना कर पाए, मर जाए, थोड़ा सा ग्रो करे तो मर जाए, कोई फायदा नहीं। जैसे कि फिर तो हमें लगता है कि बुरा है,
बताती हूँ कितना चाहिए। कभी कभी एबीए वेट करता है हैवी रेन का। हैवी रेन से एबीए जो है वो सीड से निकल जाता है पानी की वजह से, एबीए वॉश आउट हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे एबीए वॉश आउट हो गया ठीक है, तो अब तुम समझ रहे हो क्यों एबीए ने वेट किया, पहले बारिश आएगी और मैं वॉश आउट होगा, क्योंकि एबीए को पता है कि बारिश आ रही है, अब इसको पानी मिलेगा, सीड मरेगा नहीं, इजीली ग्रो कर जाएगा। तो पानी का वेट करता है, सीजन आने का वेट करता है। तो एबीए ने तब तक निकला जब तक कि ब्रेन ने इसको एबीए को बाहर निकाल दिया। एबीए को मैं चैन से मार सकता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को पानी मिल रहा है, तो बढ़िया ग्रो कर जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ एबीए को बाहर निकालने का। सीड टॉपिक में पढ़ाऊंगी, सीड में टॉपिक नहीं एनसीईआरटी हटा दिया है, वर्नलाइजेशन के टाइम फोटो पीरियड में बताइए। When seed does not germinate, even when appropriate suitable conditions are provided. सब लोग बताऊंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, मैं 2024 का बच्चे का पेपर देखूंगी, उसके बाद ही उसके बाद में पढ़ाना करूंगी। कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। तो मुझे लगता है कि यार ऐसा क्यों, सब कुछ है कि जनरेट नहीं करना, इतना एबीए भरा हुआ था सीड, तो वो जनरेट नहीं करता। बेटा एबीए अपनी सीड को बचाने की कोशिश कर रहा है। एबीए कहता है आज मैं सीड को जनरेट कर दूं और ये फिर ग्रो ना करता है, मर जाएगा, थोड़ा सा ग्रो करेगा तो मर जाएगा, मुझे कोई फायदा नहीं। जैसे कि मैं बताती हूँ हमें लगता है कि बुरा है, मैं बताती हूँ कितना चाहिए। कभी कभी एबीए वेट करता है हैवी रेन का। तो हैवी रेन से एबीए जो है वो सीड से निकल जाता है पानी की वजह से, एबीए वॉश आउट हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे एबीए वॉश आउट हो गया ठीक है, तो आप तुम समझ रहे हो क्यों एबीए ने वेट किया, पहले बारिश आएगी और मैं वॉश आउट होगा, क्योंकि एबीए को पता है कि बारिश आ रही है, अब इसको पानी मिलेगा, सीड मरेगा नहीं, इजीली ग्रो कर जाएगा। तो पानी का वेट करता है, वो नहीं सीधा आने का वेट करता है। तो एबीए ने तब तक निकला जब तक कि ब्रेन ने इसको एबीए को बाहर निकाल दिया। अब एबीए को मैं चैन से मार सकता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को पानी मिल रहा है, तो बढ़िया ग्रो कर जाएगा। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल देती हूँ एबीए को बाहर निकालने का। सीड टॉपिक में पढ़ाऊंगी, सीड में टॉपिक नहीं एनसीईआरटी हटा दिया है, वर्नलाइजेशन के टाइम फोटो पीरियड में तीनों टॉपिक बताऊंगी क्योंकि मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं, मैं 2024 का बच्चे का पेपर देखूंगी, उसके बाद ही उसके बाद में पढ़ाना करूंगी। एक और एग्जांपल, दिस इज जस्ट एग्जांपल 1, दिस इज जस्ट एग्जांपल 1 है। दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे मैं एग्जांपल 2 कर देती हूँ। एग्जांपल 2, कभी कभी एबीए तब फीड में से इनएक्टिव होता है जिसको बहुत ही कोल्ड एनवायरनमेंट मिलता है। जैसे यहाँ पे मान लो स्नो पड़ी तो कोल्ड हो गया, जब ये कोल्ड हो गया तो एबीए जो है वो इनएक्टिव हो गया, धीरे धीरे इनएक्टिव हो गया। जब इनएक्टिव हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ से सीड होगी। ठीक है, तो इस सेंस में क्या हुआ, एबीए कहता है कि ये सीड ऐसी जगह पे पड़ रहा है जहाँ पे पड़ा हुआ है, जहाँ पे स्नो हो रही है, दैट मींस बहुत ही कोल्ड एरिया। अगर मैं सीड को पहले जमीन करने दे देता और यहाँ पे छोटा बच्चा निकल, बच्चे का स्नो गिरती तो सीड मर जाता, स्नो से बच्चे बच्चे सीड बनने के बहुत चांस होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बच्चे को निकाल दिया, मैंने कहा बैठो बेटा, हम लोग फिर स्नो एबीए को इनएक्टिव किया। ठीक है, जब तक एबीए इनएक्टिव हुआ तब तक स्नो जो है ऑलमोस्ट ऐसे पिघल गई और अच्छा मौसम हो गया, सब्जियां चली, अच्छा मौसम है, तब ये सीड जमीन में। अब इसको अच्छे से पूरा स्प्रिंग मिलेगा, बड़ा होगी, स्नो फॉल बड़ा होगी। इस तरीके से ये सीड के जो बच्चा है उसको प्रोटेक्ट करता है, को प्रोटेक्ट करता है अपने हिसाब से। हमें लगता है कि गलत है, इनहिबिटर है, इनहिबिटर काम से इनहिबिटर है ना, ऐसे कर इनहिबिटर है आउट। फिर देखो ग्रोथ मेटाबॉलिज्म इनहिबिशन आता है, सीड जर्मिनेशन का इनहिबिशन आता है, क्लोन Antagonizes the action of growth promoting hormone. Released by plant in stressful conditions. Antagonizes the action of growth promoting hormones. Antagonizes the action of growth promoting hormones. Released by plants in a stressful condition. Released by plants in stressful condition. Okay. Antagonize the action of growth promoting hormone gibberellic acid. Gibberellins. Ratio of abscisic acid to growth hormone determines the final physiological outcome. Okay. Functions of abscisic acid: growth and metabolism inhibition. Growth and metabolism inhibition inhibits seed germination, stimulates closure of stomata, increase tolerance to stress, seed dormancy, antagonistic to GA. Okay. Functions of abscisic acid. Functions of abscisic. Abscisic acid. Functions of abscisic acid. Growth and metabolism inhibition. Growth and metabolism inhibition. Inhibits seed germination. Growth and metabolism inhibition. Growth and metabolism inhibition inhibits seed germination. Inhibits seed germination. Inhibits seed germination.
inhibits seed germination, stimulates closure of stomata. Stimulate closure of stomata. Stimulates closure, clou, closure, 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 stimulate closure of stomata, stimulate closure of stomata, stimulate closure of stomata, stimulate closure of stomata. Increase tolerance to stress, increase tolerance to stress, tolerance, RENC, tolerance to stress, STRDS, stress. Seed dormancy, antagonistic to ZA, seed dormancy, antagonistic to ZA, antagonistic to ZA, antagonistic to GA. क्लोजर ऑफ स्टोमेटा कराता है, टॉलरेंस टू स्ट्रेस बढ़ाता है। टॉलरेंस टू स्ट्रेस कैसे बढ़ाएगा, तुम समझ रहे हो ना? जब ड्रॉट है और स्टोमेटा बंद हो गया तो हम ड्रॉट को ज्यादा अच्छी तरीके से टॉलरेट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा पानी नहीं उड़ रहा है ना। Yes, ma'am. सीड डॉर्मेंसी कराता है और एंटागोनिस्टिक टू जीए है। इसकी ट्रिक देखो कितनी मस्त है। ये हमारे पापा की तरह, जैसे अब्बा होते हैं हमारे पापा होते हैं। पापा हम लोगों को लगता है कि स्ट्रिक्ट है ना? क्या है पापा, आप डांटते रहते हो? क्या है पापा, आप यहाँ नहीं जाने देते, वहां नहीं जाने देते? क्या पापा, आप पॉकेट मनी नहीं देते हो? अब क्या है पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता हूँ। पापा से हमें बहुत शिकायत होती है। तो वैसे जैसे हमें एब्सिसिक एसिड से बहुत शिकायत है, वैसे पापा से बहुत शिकायत है। तो पापा से ही इसकी ट्रिक है। अब्बा फाइट्स जीए व्हेन स्ट्रेस्ड। अब्बा जब स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो वो जिब्रेलिक एसिड से फाइट करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ऑब्वियसली समझ रहे हो तुम। एब्सिसिक एसिड और जो जीए है वो एंटागोनिस्टिक है दूसरे के। ठीक है, और अच्छा अब्बा से सिर्फ एब्सिसिक एसिड नहीं है, सॉरी एब्सिशन है। एब्सिशन कराता है पहली चीज होगा। ठीक है, दूसरा फाइट्स जीए मतलब एंटागोनिस्टिक तो जीए है। व्हेन स्ट्रेस्ड मतलब ये स्ट्रेस हार्मोन। तीन फंक्शंस के यहाँ है। अब्बा फाइट्स जीए व्हेन स्ट्रेस्ड, एब्सिशन, एंटागोनिस्टिक टू जीए एंड स्ट्रेस हार्मोन। क्लोजेस डोर्स टू स्टॉप जर्म ग्रोथ। अपने घर के दरवाजे बंद कर सकता है कि नहीं नहीं जर्म अंदर आ जाएंगे, जर्म ग्रोथ हो जाएगी। बच्चे कहते हैं यार पापा पागल तो नहीं हो गए यार, हवा आने दो सांस। पापा कह रहे नहीं, आई एम वेरी पैरानॉइड, मैं सारे डोर्स बंद करके रखूंगा। ठीक है, कोई जर्म नहीं आना चाहिए। क्लोजेस डोर्स मतलब क्लोजेस टोमेटा, डोर्स मतलब डोर्मेंसी कराते हैं। ठीक है, टू स्टॉप क्या करना है, इनिबिट करना। स्टॉप इनिबिट करना। इनिबिट क्या इनिबिट कर रहा है? जर्म मतलब जर्मिनेशन, इनिबिट जर्मिनेशन। ग्रोथ मतलब इनिबिट ग्रोथ की मेटाबॉलिज्म। सारे के सारे 6 फंक्शन है, 6 के 6 आगे 1 2 3 4 5 6 7। Upper fights G. Abscission, ABSCI, abscission, abscission, ABSCI, abscission, SSIN, abscission, fights. Antagonistic to ZA, antagonistic to ZA, antagonistic to ZA, antagonist to GA, antagonist to GA, fights GA, antagonistic to GA when stressed and when stressed, stress hormone, Alpha fights C, antagonistic to ZA, abscission, antagonistic to ZA, stress hormone, close doors and close stomata, closes stomata, doors, dormancy. To stop.
stops, inhibits germ growth, inhibits seed germination, germ, inhibits seed germination, growth, inhibits growth and metabolism, inhibits growth and metabolism, inhibits growth and metabolism, inhibits growth and metabolism, inhibits growth and metabolism. सात फंक्शन मुझे लगा 6 ही है, चलो कोई नहीं, 7 के 7 फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं एनसीईआरटी पढ़ने closest रिवाइज stomata, करके dormancy, अपना फाइट्स जीए seed germination, growth and obsession fights G antagonistic to G when stress hormone and closes stomata doors मतलब dormancy में हेल्प करता है, seed dormancy में हेल्प करता है to fight a germ growth या to stop germ growth, stop मतलब inhibit, germ मतलब germination, germination को inhibit करता है। क्लियर है ये? ठीक है, ये ट्रिक्स लिख के बार-बार याद करना है। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है। इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, बहुत बढ़िया। इनहिबिट दो बार क्यों आ गया ये? स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ से दिख रहा है स्टोमेटा कैसे, ये जो ब्लैक वाला है ये पोटेशियम आयन है, तो बेसिकली पोटेशियम आयन को बाहर खींच लेगा। ये गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल्स है। अभी तो पोटेशियम आयन अंदर आया तो ये फूल गया, देखो स्टोमेटा खुल गया, है ना। ये एक्शन अब एब्सिसिक एसिड का है जब ये बाहर निकलेगी। निकल पोटेशियम बाहर गया, पानी बाहर चला गया, गार्ड सेल पिचक के स्टोमेटा बच गया। ठीक है, देन स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हेल्प करता है वो करने के लिए। इसकी मैंने आपको डिस्कवरी नहीं बताई, ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कवरी में, मुझे इसकी डिस्कवरी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है साइटोकाइनिन की डिस्कवरी, फूग आया बड़ा फूग। During mid-60s, 1960s, 3 independent researchers reported purification and chemical characterization of 3 different kinds of inhibitors. Growth inhibitors 3 साइंटिस्ट ने अलग-अलग ढूंढे, उन्होंने अपना नाम दिया। इनहिबिटर बी नाम दिया एक ने एब्सिशन 2 नाम दिया और एक ने डॉर्मिन नाम दिया। क्योंकि एब्सिशन कराता है, इनहिबिटर कराता है, ग्रोथ के इनहिबिटर कराता है, तो उसने इनहिबिटर बी दे दिया। उसने किसी ने एब्सिशन पे स्टडी किया हो तो उसने एब्सिशन 2 दे दिया, वही है ना, हाँ। और किसी ने डॉर्मेंसी पे स्टडी की हो तो उसने डॉर्मिन दे दिया। बाद में पता चला कि जो तीनों केमिकल्स इन 2-3 रिसर्चर्स ने ढूंढे हैं वो एक्चुअली एक ही केमिकल है। Later, all 3 were proved to be chemically identical. It was named abscisic acid. आओ abscisic acid पढ़ें। इसी के साथ बेटा नगाड़े बजा दो, घर में अपने ढोल नगाड़े और ढोलक बजवा लो, मिठाइयाँ ले आओ, क्योंकि प्लांट ग्रोथ हार्मोन हमारा खत्म हो रहा है। अब तो बस 3 सब्जेक्ट हो गए, वो कुछ नहीं बता, ऐसे पढ़ जाएंगे। As mentioned earlier, abscisic acid was discovered for its role in regulating abscission and dormancy. पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, but like other features, it also has other wide-ranging effects on plant growth and development. It acts as a general plant growth inhibitor. तीसरा फंक्शन एंड इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म का मैंने एक ही पॉइंट बनाया उसमें ट्रिक में। एबीए इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन, ठीक है। चौथा पॉइंट, एबीए स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, पांचवा पॉइंट। और इसका फिर ये इसकी वजह से टॉलरेंस टू स्ट्रेस हो गया, छठा पॉइंट। Therefore, it is also called stress hormone. ABA plays an important role in seed development. Seed development में भी हेल्प करता है, मैचुरेशन में भी हेल्प करता है, डॉर्मेंसी में भी। जब सीड डेवलप हो रहा होता है ना बेटा, तो ABA का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा होता है। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है सीड में मॉइस्चर बिल्कुल कम हो जाता है, 10-15% मॉइस्चर रह जाता है। ठीक है, नॉर्मल बॉडी में देखो कितना मॉइस्चर होता है, हमारी बॉडी 70% पानी है, नॉर्मल प्लांट्स कितना 80-80% पानी रहता है उनमें। ठीक है, सीड के अंदर सिर्फ 10 से 15% पानी रहता है। तुम्हें क्या लगता है इतनी हॉस्टाइल कंडीशन में सीड कैसे सर्वाइव करता है? एबीए की वजह से। जब वो डेवलप हो रहा था तो भी उसमें एबीए बनने लग जाता है, तभी वो इतने कम पानी मॉइस्चर में भी वो सर्वाइव करता है सीड। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम कर देता है एबीए उसका, तुम्हें पता है रेस्पिरेशन बहुत कम हो जाती है सीड के अंदर। ठीक है, ABA plays an important role in seed development, maturation and dormancy. By inducing dormancy, ABA helps seed to withstand desiccation and other factors unfavorable for growth. समझ गए हो? In most desiccation मतलब सूखना, मान लो सूखे में वो सीड जर्मिनेट हो जाता, उसे पानी नहीं मिलता, इसलिए ABA पहले रेनी सीजन का वेट करते कि रेनी सीजन आए तो desiccation ना होता जब पौधा निकले। ठीक है ना? In most situation, ABA is antagonistic to GA, सातवां फंक्शन। We may summarize that for any and every phase of growth, differentiation and development of plants, one or the other PGR has some role to play. Such roles could be complementary or antagonistic. देखो जैसे ऑक्सिन और साइटोकिनिन का रोल जनरली कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, मतलब एक दूसरे को हेल्प करते हैं जैसे सेल डिवीजन में। GA और एब्सिसिक का एंटागोनिस्टिक रहता है, ऑपोजिट रहता है। ठीक है, तो ऐसा अलग-अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। These could be individualistic or synergistic. Similarly, there are number of events in the life of plant where more than one PGR interact to affect the event, जैसे dormancy. ठीक है, अब
डॉर्मेंसी में कौन से दो हार्मोन्स हमारे आ रहे हैं? एक तो ब्रेक डोर आ रहा है, ब्रेक डोर किसमें आ रहा है? क्लोजेस डोर और ब्रेक डोर दो आ रहे हैं। इथाइलिन भी डॉर्मेंसी को करता है और एब्सिसिक एसिड भी डॉर्मेंसी को करता है, दोनों करते हैं, ठीक है। तो देखो एक से ज्यादा पीजीआर वहां पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। बट एब्सिशन में देखो एक एब्सिशन को रोक रहा है, जो ऑक्सिन है वो एब्सिशन को रोकता है अर्ली स्टेजेस में, इथाइलिन एब्सिशन को बढ़ाता है, ठीक है। इवन ए भी एब्सिशन को बढ़ाता है, सेनेसेंस इथाइलिन भी सेनेसेंस को बढ़ाता है और ए भी सेनेसेंस को बढ़ाता है। जिब्रेलिन सेनेसेंस के अगेंस्ट है, जवान रखता है, तभी मार्केट पीरियड आता है। साइटोकाइनिन सेनेसेंस के अगेंस्ट है, लीव सेनेसेंस को होने नहीं देता वो, है ना। एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है, साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को कम करता है। रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। भैया किसी भी ग्रोथ में प्लांट में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। इंट्रिंसिक प्लांट के खुद के फैक्टर्स हैं जो उसके अंदर से प्लांट को रेगुलेट कर रहे हैं, और एक्सट्रिंसिक उसके बाहर के फैक्टर्स हैं, जैसे सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटरफॉल हो गया, विंड स्पीड हो गया, सब एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं। इवन इंटरनल फैक्टर्स में भी पीजीआर इज ओनली वन फैक्टर, और भी बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल है। अलॉन्ग विद जीनोमिक कंट्रोल, जीन्स भी तो कंट्रोल करते हैं, and extrinsic factor they play an important role in plant growth and development, ठीक है। many of the extrinsic factors such as temperature and light control plant growth and development via PGRs। कुछ फैक्टर्स आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके ग्रोथ हार्मोन को छेड़ते हैं और फिर वो प्लांट में चीजें वो करवाते हैं, चेंज कराते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे फोटोपीरियोडिज्म में। फोटोपीरियोडिज्म में क्या होता है, एक कुछ प्लांट होते हैं जैसे मैं तो फ्लावर ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो फ्लावर कब करते हैं, जब उनको एक पर्टिकुलर लेवल का सनलाइट मिलता है, तो वो सनलाइट बॉडी को अफेक्ट करता है। बॉडी से एक हार्मोन निकलता है जो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, फ्लोरिजन नाम का हार्मोन निकलता है लीव्स से, क्योंकि लीव्स जो सनलाइट है वो लीव को अफेक्ट करती है। फ्लोरिजन जाके ऊपर वहाँ पे शूट एपेक्स पे जाता है जहाँ फ्लावर बनना है, फिर उसको फ्लोरल एपेक्स में मॉडिफाई कर देता है, फिर वहाँ से फ्लावरिंग होती है। तो मीनिंग समझ में आया इस लाइन का? Many extrinsic factors, बहुत सारे बाहर के फैक्टर्स such as temperature and light control plant growth and development, plant growth and development को कंट्रोल करते हैं via PGR, PGR को छेड़ के, PGR को कम करके PGR को ज्यादा करते हैं। टेम्परेचर भी PGR को कम ज्यादा कर सकता है, कुछ PGR को, रेनफॉल भी कुछ कम PGR को कम ज्यादा कर सकती है, ठीक है। जैसे कि रेनफॉल इज एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, उसने एब्सिसिक एसिड के लेवल को कम कर दिया सीड के अंदर और सीड जर्मिनेट हो गई, तो फिर PGR को अफेक्ट करेगा। Some of such events could be vernalization, vernalization क्या होता है बताऊंगी, flowering, dormancy, seed germination, plant clearance। We shall discuss briefly the role of light and temperature on initiation of flowering। अभी मैं तुम लोगों को ये कराती हूँ, फोटोपीरियोडिज्म कराऊंगी, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट समझ में आ जाएगा, तो छोड़ने का फायदा नहीं। तुम ये सोचो क्यों मेरी तो एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैं क्यों ही पढ़ के जाऊँ, इट विल टेक 5 मिनट्स। वर्नलाइजेशन क्यों पढ़ूं, another 5 minutes of my life, you spend more than 50 minutes of your life on Instagram every day, don't lie to me, okay? if you say मैं तो करता ही वही हूँ, सब करते भाई, मैं भी करती हूँ, कितना भी कोशिश करता हूँ। तुम्हें पता है मैं कैसे काम करती हूँ ऑफिस में, मैं अपना फोन अपनी टीम को दे देती हूँ, कहती हूँ मेरे को देना मत, मेरा फोन मैं मांगू तो भी मत देना, तब मैं काम करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, मतलब मैं कोई वो नहीं हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन गुरु नहीं हूँ, लेकिन जब एक टीचर और मैं, अब तुम कहोगे अरे मैम इतनी कम विल पावर की है, बाकी टीचर्स क्या, बहुत यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बहुत बड़े बड़े टीचर मेरी प्लेलिस्ट में है, ठीक है। और जब मैं कोई स्टेटस डालती हूँ तो वो लोग स्टेटस कब चेक कर रहे होते हैं, सुबह 4 बजे स्टेटस चेक कर रहा है, तो 5 बजे स्टेटस, रात को 12 बजे स्टेटस चेक कर रहा है, तो तुम्हें क्या लग रहा है उनके हाथ में रात को 12 बजे फोन नहीं है कि वो स्टेटस कैसे चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो हर कोई फोन से त्रस्त है बेटा, मैं अकेली नहीं हूँ, कोई तुम अकेले नहीं हो, तो इस बात को एक्सेप्ट करो और इसके तरीके ढूंढो, सोल्यूशन ढूंढो। रात दिन करना फोन अपने पास मत रखो, फोन सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी लाइफ का, इतना बड़ा कुछ नहीं दुश्मन, इतना फोन अपने पास रखना ही नहीं, ये मैं तो एयरप्लेन मोड पे करके रख लूंगा, मुझे मम्मा को फोन करना होता है, हाथ पिक नहीं आप, कुछ नहीं है, फोन अपने पास मत रखो, लाइब्रेरी को दे दो, लाइब्रेरी में पढ़ लो, फ्रेंड्स से पढ़ लो, किसी को दे दो, छुपा दो कि तुम्हें कोई बंदा फोन ना दे, कितना भी तुम्हें मत करे कि चलो मैं इसको फोन कर देता हूँ, चलो मैं इसको फोन कर देता हूँ, ओ आज देख लेते हैं, फिर तुम्हारे कोई बायोलॉजी की नई रील्स निकाल लेते हैं, enhance my knowledge through reels। जो मैं बायोलॉजी की रील्स डालती हूँ, मैं तब डालती हूँ, इसमें डालती हूँ, चलो और इधर देखोगे तो बायोलॉजी देख लो, स्पेशली फोन पर रील्स चेक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ओके, आप ये देखें। Spraying of which of the following phytohormones on juvenile conifers help in hastening the maturity period that leads to early seed production? I think this is abscisic acid, auxin, isn't it? I think it is auxin, or maybe cytokinin. Sag. I forgot. I think this one is gibberellic acid. Gibberellic acid नहीं. साग वाला कहाँ था यहाँ पर? Hasten coniferous maturity. Exactly वो gibberellin से था. Gibberellic acid. Okay. Spraying of which of the following phytohormone plant hormone on juvenile conifer, कौन से market corner याद है? Market corner किसकी ट्रिक में था? Helps in hastening the maturity period that leads to early seed production. कौन से आया है? कोना से आया गब्बर, ओल्ड माली गब्बर elongate साग at the market corner, ठीक है, market corner तो करता है, तो जिब्रेलिक एसिड 2023 का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन है यहाँ से, which hormone promotes internodule elongation? Gibberellic acid, gibberellin, gibberellic acid, Gibber, gibberellic, Gibbe,
RELLIC, gibberellic acid. Hasten the conifer's maturity. Which hormone promotes internode petiole elongation in तो व्हाट राइट deep rice water? Okay, kinetin, ethylene, 2,4-D, GA3. ये तो ट्रिक तो याद है लेकिन आंसर याद नहीं ना. अच्छा, अगेन जिबरेलिन. जो नादान बच्चे हैं जिन्होंने मैडम क्लास नहीं लगाई है, फिर तुम्हारी क्लास नहीं लगाई है, वो समझेंगे कि क्योंकि इलॉन्गेशन ऑफ इंटरनोड है तो ये जुड़ाई कैसे है, जैसे कि जीएस का मतलब, लेकिन जिन्होंने मैम की क्लास लगाई है उन्होंने ट्रिक पढ़ा है कि इंडियन साइंटिस्ट एब्सॉर्ब्स पीसीएम एंड पुलाव में पावर है, आलू है और चीजें हैं, ठीक है, टू एड्स एंड ब्रेक दोस, तो उन्हें पता है इसका आंसर इथाइलिन है. तो मैं पता मैं कुछ बोल रही थी, मैं 2 लाख तेज पर किया था, मतलब ये क्वेश्चन मेरा सही था लेकिन मैं सोचूं कैसे होगा, क्या है क्या आंसर है, खाई थी कैसे मेरे ट्रिक्स नहीं सब तक मेरी गलती है, बिना ट्रिक्स ना क्लास में जाओगे तो ऐसे ही होगा. 2022 में Ethylene. Where is it? तो नहीं है. Here, this one. UIQ 2023, I guess. 2020. the gaseous plant growth regulator is used in plants, मतलब बेसिकली थाइलिन की बात ER. है, माल्टिंग, ठीक है. Yes, ma'am. हाँ भैया मिल जाएगा, छोटा सा हार्मोन है, इतनी जल्दी लर्न करोगे तुम्हें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है. लेकिन जब एक कुछ वर्नलाइजेशन में तो 5 फोटो में तो 15 मिनट में सब खत्म कर दूंगी, तो आउट ऑफ सिलेबस है ना, लेकिन मेजर फंक्शन डिवाइड है, ठीक है. The pineapple, which under natural conditions is difficult to problem, has been made to produce fruit throughout the year by application of ethylene auxin. देखो दोनों ऑप्शन ये भी है. तो जब मैंने क्वेश्चन किया था तो मैंने कंफ्यूज किया, ये क्या बात है. एक्चुअली मैंने ये लॉजिक लगाकर आंसर किया था कि भैया सिंथेटिक है तो सिंथेटिक तो लगाओगे, नेचुरल लगाओगे. एक्चुअली नेचुरल भी आ सकता है, बट इसका आंसर सिंथेटिक है, इसका एनसीईआरटी कोई वो नहीं है, वो बस ऐसी लाइन करना है, ये पाइनएप्पल वाला तो आर्टिफिशियल वाली तो क्या तो नेचुरल वाला को पूछो, नेचुरल वाला को आइसोलेट करोगे उससे ज्यादा पोटेंट होते हैं, बट यहाँ लैब में ना भाई बिकॉज़ फॉलोइंग जनरली एक्ट एंटागोनिस्ट टू जीए, ठीक है. तो बहुत क्वेश्चन है ये, मैंने 17 क्वेश्चन लोगों को करा दिए, पता नहीं पता कैसे नंबर पता है, ये 50 क्वेश्चन तो है. इनका आप एक एक क्वेश्चन कर पाओगे, ये क्वेश्चन मैं आपको देंगे पीडीएफ के रूप में, प्लस इनके आंसर के लिए टेलीग्राम पे, आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हो तो इसमें तेरा घंटा मेरा नहीं घंटा सारा आपको ये जो नोट्स के टेलीग्राम पे मिलेंगे, मेरे द्वारा ऑफिशियल करके ऐसे एक 10,000 बच्चों का टेलीग्राम है, वहां आपको ज्वाइन करना है, ठीक है. छोटा मोटा ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है, इतने सारे पेड ग्रुप में आपको नहीं ज्वाइन करना है. पूरा पूरा नोट्स आपको वहां पे, ये जो पीवाईक्यूज है पुराने 2000 तक के पीवाई 1990 तक के पीवाईक्यूज हैं, सारे रेलेवेंट पीवाईक्यूज जो इररेलेवेंट है वो मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है, वो मैं आपको वहां दूंगी. देन इसके डीपीटीज कौन करेगा, इसके 3-4 डीपीटीज हैं, ठीक है, वो मैंने वहां पे डाल दिए, टेलीग्राम पे डाल दिए, वहां जाओ, ठीक है. देन इसका टेस्ट होना है संडे को, टेस्ट कौन देगा, तुम लोग. तैयारी कैसे करोगे, टेस्ट लोग डीपीटीज करोगे, ऐसे कोई तैयारी होती सिर्फ मेरे से पढ़ लियो और 50% तैयारी, बाकी 50% करोगे, तेरे काम से करोगे, ठीक है. चलिए करना है तो मैं सारी निकाली बेटा, समझ लो ना, ये देखो देख रहे हो देख रहे हो, ठीक है. हम सिर्फ एक चीज की बात करें, इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन फ्लावरिंग हम कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म. प्लांट्स बॉडी में कुछ रिस्पांस आएगा उस रिस्पांस को फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं, ठीक है. तो वर्नलाइजेशन में तो 5 फोटोपीरियोडिज्म में तो 15 मिनट में सब खत्म कर दूंगी, तो आउट ऑफ सिलेबस है तुम्हारा, 15 मिनट में फोकस करो. फोटो मतलब लाइट, पीरियोडिज्म मतलब समय. एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर यदि तुम सनलाइट मारो तो कितने समय के लिए उसको सनलाइट मिल रही है, उसमें उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ रिस्पांस आएगा उसके तरफ, उस रिस्पांस को फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं, ठीक है. जैसे कि अगर तुम किसी एनिमल की बॉडी पे इतनी देर का सनलाइट मारो, हर एनिमल आपकी हर ऑर्गेनिज्म आपको इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पांस नहीं देगा कि आप समझ सको कि अच्छा ये सनलाइट रिस्पांस है, ठीक है. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में ये रिस्पांस बहुत नोटेबल है. क्या नोटेबल है, अभी तक तुमको कुछ नहीं समझ आया. इसमें जिंदा ऑर्गेनिज्म पे अगर तुम सनलाइट मारोगे ना और वो सनलाइट कुछ समय तक मारते रहोगे तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को हम फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं. लेकिन क्या हम सभी की बॉडी में चेंजेस पढ़ने लगे हैं, क्या हम प्लांट के ही अंदर कितने सारे चेंजेस हैं वो सारे पढ़ने लगे नहीं, हम सिर्फ एक चेंज के बारे में पढ़ते हैं. इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन फ्लावरिंग हम कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म. प्लांट्स रिक्वायर पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग, दिस इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म. फोटोपीरियोडिज्म सिर्फ इस चीज पे लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ फ्लावरिंग हो जाती है सनलाइट से तो फोटोपीरियोडिज्म है, लेकिन एनसीईआरटी और आपके सिलेबस का स्कोप इतना है. तो आपके लिए फोटोपीरियोडिज्म क्या है, एक प्लांट को जब आप एक सनलाइट मारोगे तो उसको एक समय तक सनलाइट चाहिए, मुझे 10 घंटे की सनलाइट चाहिए तभी मैं फ्लावर करूंगा. इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, ठीक है, इज फोटोपीरियोडिज्म. बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, बच्चे सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग को मिक्स कर देते हैं. सीड जर्मिनेशन पे इफेक्ट है या फ्लावरिंग पे इफेक्ट है. फोटोपीरियोडिज्म इज स्पेसिफिकली फॉर फ्लावरिंग इन सिलेबस तो आपने पढ़ना है, ठीक है. अब प्लांट को कैसे पता चलेगा कि कितने घंटे की सनलाइट हो चुकी है तभी फ्लावर करना है. साइट ऑफ परसेप्शन लीफ होता है बेटा, लीफ पे सनलाइट पड़ती है, ये परसीव करता है, यहाँ से एक केमिकल रिलीज होता है फ्लोरिजन, ये पुराने सिलेबस में काम नहीं है. फ्लोरिजन यहाँ से मूव करके टॉप पे जाता है, यहाँ शॉर्ट एक्सिस को फ्लावर एक्सिस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, फ्लोरल एक्सिस में कन्वर्ट करता है, फिर यहाँ पे फ्लावर हो जाता है, ठीक है. पहली बात तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट क्या है, ये नीट का क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, Site of perception of leaf. Where is it? Site of perception. Well, other must be exposed to light for a period less than this.
periodic exposure to light to induce flowering. It has also seen that such plants are able to measure the duration of exposure to light. For example, some plants require the exposure of light for a period exceeding a well-defined critical duration, while other must be exposed to light for a period less than the critical duration before flowering is initiated in them. Okay, so here we have the site of perception of light is leaf. Site of perception of light. Site of perception. Perception of light. Site of perception of light is leaf. It's okay. Leaves is leaves. Site of perception of light is leaves. फोटोपीरियोडिज्म की डेफिनेशन क्या सकता है, क्या है? फोटोट्रॉपिज्म और फोटोपीरियोडिज्म में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। फोटोट्रॉपिज्म है लाइट देख के उसकी तरफ मुड़ जाना या उससे दूर मुड़ जाना, ये फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है। फोटोपीरियोडिज्म क्या है? पीरियड से याद रखना, पीरियड मतलब टाइम ड्यूरेशन, कि कितनी देर का टाइम ड्यूरेशन चाहिए आपको सनलाइट का फ्लावर करने के लिए। 3 प्रकार के प्लांट होते हैं, आपने ध्यान से सुनिए मेरी बात। ठीक है, ये डायग्राम मैं आपको दिखाई दूंगी। एक प्रकार का प्लांट होता है जो कहता है कि मुझे एक पर्टिकुलर आपको टाइम दे देगा कि इतने घंटे की सनलाइट चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर ही फ्लावरिंग करूंगा, इससे नीचे फ्लावरिंग नहीं करता। इस टाइम को बोलते हैं क्रिटिकल टाइम पीरियड या क्रिटिकल एक्सपोजर पीरियड। ये हर प्लांट के लिए अलग अलग है। ठीक है, सब प्लांट के लिए सेम नहीं है। मान लो मैं कोई XYZ प्लांट बोल रही हूँ, उसका मान लो ये 10 घंटे 10 आवर्स। वो कह रहा है 10 घंटे से नीचे अगर सनलाइट मिलेगी तो फ्लावरिंग नहीं करूंगा, जब 10 घंटे से ऊपर मिलेगी ना तभी फ्लावरिंग करूंगा। क्रिटिकल पीरियड। ठीक है, ऐसे प्लांट को बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। मतलब जितनी है, जैसे मैं लॉन्ग डे प्लांट हूँ। अब लॉन्ग डे मतलब लंबा दिन, मतलब उनको इससे लंबा दिन चाहिए, जितना उसने डिसाइड कर लिया कि मेरा क्रिटिकल पीरियड है उससे लंबा दिन चाहिए, उससे छोटा दिन नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे मैं लॉन्ग डे प्लांट हूँ, मैं कह रही हूँ कि लॉन्ग डे प्लांट कि भैया प्लीज थोड़ी सनलाइट और बढ़ा दीजिए, थोड़ा टाइम और दे दीजिए भैया प्लीज। तो मेरे इस पे शॉर्ट भी बन गई। Long day plant, short day plants and day neutral plant. अरे यार भैया प्लीज, अभी तो सिर्फ 7 घंटे हो गया, प्लीज थोड़ी और सनलाइट प्लीज, अभी तो सिर्फ 8 आवर्स हुए हैं, अभी तो सिर्फ 9 आवर्स हुए हैं। ओह 10 आवर्स क्रिटिकल पीरियड रीच। समझ लो, ये लॉन्ग डे प्लांट्स। अब 10 घंटे तो मैंने कभी मैच नहीं, किसी प्लांट 14 घंटे तो कम से कम 14 घंटे सनलाइट चाहिए, उससे ज्यादा दोगे तभी सनलाइट करूंगा, तभी फ्लावरिंग करूंगा। किसी का 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे से ज्यादा दोगे तभी फ्लावरिंग करूंगा। तो से ज्यादा वाले को बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, से लंबा पीरियड चाहिए, क्रिटिकल से लंबा। कुछ प्लांट्स हमको बोलते हैं, उनको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट, वो से कम चाहिए होते हैं। शॉर्ट डे वाले क्या कहते हैं, क्रिटिकल पीरियड से कम चाहिए, क्रिटिकल पीरियड चाहिए उसका क्रिटिकल मतलब नहीं क्रिटिकल पीरियड। मान लो इनका फॉर एग्जांपल 8 घंटे क्रिटिकल पीरियड, अगर 8 घंटे ज्यादा सनलाइट मिलेगी तो फ्लावरिंग करूंगा, देख रहा हूं। तो ये पहले फ्लावर करके बैठा है, ये पहले फ्लावर करके बैठा है। अरे यार कहां है यार, ये पहले फ्लावर करके बैठा है एंड लाइक कि रूप तेरा मस्ताना यार मेरा दीवाना। अरे भैया बहुत हो गई सनलाइट, फ्लावरिंग बंद कर दूंगा, देख लो 6 घंटे से सनलाइट ले रहा हूं, अब और नहीं चाहिए। अरे 7 घंटे हो गए, बहुत हो गया। 8 घंटे क्रिटिकल पीरियड नहीं करनी मुझे फ्लावरिंग, है कौन फ्लावर समझ आया? समझ लो, तो उनको से कम चाहिए, क्रिटिकल पीरियड से कम चाहिए, वो नीचे तो यहाँ पे फ्लावरिंग करेंगे, ऊपर नहीं फ्लावरिंग करेंगे, नहीं तो तभी तो जरा शॉर्ट है कि उससे शॉर्ट रखोगे। अगर उससे लॉन्ग रखोगे तो फ्लावरिंग करोगे, लॉन्ग अगर उससे शॉर्ट रखोगे तो शॉर्ट डे। एक हफ्ते डे न्यूट्रल को कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे प्लांट्स कितने नहीं होते बेटा, शॉर्ट डे लॉन्ग डे जैसा कुछ डे न्यूट्रल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल नॉर्मल सनलाइट देते हो, कुछ नहीं 8 घंटे 12 घंटे कुछ नहीं। जब हम मैच्योरिटी पे पहुंच जाएंगे, दे विल फ्लावर व्हेन दे रीच मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे पहुंचते ही फ्लावरिंग करेंगे, उनको नहीं है मुझे इतनी सनलाइट चाहिए, इतनी देर की कुछ नहीं। ठीक है, यही चीज आप कैसे होती है, यही चीजें रह जाती है। लॉन्ग डे रिक्वायर एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर पीरियड एक्सीडिंग वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, रिक्वायर एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर लेस देन डिफाइंड क्रिटिकल पीरियड, नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड फ्लावरिंग। ठीक है, यही चीज आपकी एनसीईआरटी में भी दिखाई गई है। ठीक है, देखो ये कौन सा क्रिटिकल पीरियड से कोई नीचे नहीं है, इससे ऊपर जा रही है, लंबा दिन चाहिए हमको, उससे ज्यादा चाहिए लॉन्ग डे। ठीक है, ये उससे नीचे फ्लावरिंग कर रहा है, ऊपर नहीं कर रहा, उससे कम चाहिए शॉर्ट डे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस मैच्योरिटी की बात करते हैं। ठीक है, आओ एनसीईआरटी पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग डे शॉर्ट डे का एग्जांपल नहीं आएगा। ठीक है, बहुत पहले क्वेश्चन आता था 2000 में कि भैया फोटोपीरियोडिज्म की स्टडी किस पे हुई थी सबसे पहले, अब नहीं आएगा। टोबैको पे सबसे पहले स्टडी हां फोटोपीरियोडिज्म इसी को, इसलिए बता रहे ताकि पीवाईक्यू सॉल्व हो जाए, इसलिए नहीं कि क्वेश्चन आएगा नीट में। ठीक है, देन साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट, ये लाइट पर प्लांट पता है जब 4 घंटे हो गए 10 घंटे हो गए, लीव्स को पता चलता है, लीव्स आर द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट। वहां से फ्लोरियन रिलीज होता है, फ्लोरियन क्यों बता दी पहले बचना है काफी, फिर ऊपर जाके फ्लावरिंग हो जाता है। ठीक है, देन और क्या बता रहे हैं, शॉर्ट डे लॉन्ग डे का एग्जांपल बोल रहे हैं आपको। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम प्लांट्स रिक्वायर पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। It is also seen that such plants are able to measure the duration of exposure of light. For example, some plants require exposure of light for a period exceeding well-defined period of time, while others must be exposed to light for a period less than 50 minutes. Former group को बोलते हैं लॉन्ग डे, बाद वालों को बोलते हैं latter, का मतलब बाद वाले, फॉर्मल होता है पहले वाले। क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। क्रिटिकल ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं होता, हर प्लांट का अपना
critical duration है. There are many plants, however, where there is no such correlation between exposure to light and duration and induction of flowering. Such plants are called day neutral plants. It is now known that not only duration of light period but also duration of dark period is also equally important. ऐसा नहीं देखो मैंने साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया. मान लो किसी का क्रिटिकल पीरियड 8 घंटे, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट मान लो, कोई शॉर्ट डे प्लांट मान लो, शॉर्ट डे प्लांट की 8 घंटे की सनलाइट मिलेगी, तो ठीक है, उससे ज्यादा मुझे दिक्कत है. तो मैंने 8 घंटे की सनलाइट मिली, तो 24 में से 8 निकाल दो, कितना हो गया 16. 16 घंटे मतलब नाइट चाहिए. साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको 16 घंटे की नाइट दी और 8 घंटे का सनलाइट दिया, तो बढ़िया फ्लावर. फिर साइंटिस्ट ने क्या काम किया, उन्होंने नाइट वाला 16 घंटे का उसमें बीच बीच में कुछ लाइट देती थी, उसको इंटरप्ट कर दिया 16 घंटे की नाइट वाला पीरियड था. तो प्लांट ने फ्लावर करने से मना कर दिया. कह रहा ना सिर्फ मुझे दिन चाहिए, मुझे रात भी चाहिए पूरी कंप्लीट जो 16 घंटे वाली है, ठीक है, और मुझे बीच में इंटरप्शन करोगे तो फ्लावरिंग नहीं करूंगा. तो डे एंड नाइट दोनों का पीरियड इंपॉर्टेंट है इस चीज में, ठीक है. Hence it can be said that flowering of cytokinin depends not only on combination of light and dark exposure but also their modify themselves into flowering apices. For example, some plants require exposure to light for a period exceeding well-defined critical period, while others must be exposed to light for a period less than critical period. Formal group को बोलते हैं लॉन्ग, बाद वालों को बोलते हैं latter. का मतलब होता है बाद वाले, फॉर्मल होते हैं पहले वाले. Critical duration is different for different plants. Critical duration कोई फिक्स नहीं होता, हर प्लांट का अपना critical duration है. There are many plants, however, where there is no such correlation between exposure to light and duration and induction of flowering. Such plants are called day neutral plants. It is now known that not only duration of light period but also duration of dark period is also equally important. अच्छा ऐसा नहीं है, देखो मैंने साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया. मान लो किसी का क्रिटिकल पीरियड 8 घंटे, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट है, मान लो कोई शॉर्ट डे प्लांट, मान लो मैं शॉर्ट डे प्लांट होगी, 8 घंटे की सनलाइट मिलेगी, तो ठीक है, उससे ज्यादा मेरे को दिक्कत होती है. तो मैंने 8 घंटे की सनलाइट मिली, तो 24 में से 8 निकाल दो, कितना हो गया 16. 16 घंटे की मतलब मुझे नाइट चाहिए. साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको 16 घंटे की नाइट दी और 8 घंटे का सनलाइट दिया, तो बढ़िया फ्लावर कर. फिर साइंटिस्ट ने क्या काम किया, उन्होंने नाइट वाला जो 16 घंटे वाला था उसमें बीच बीच में कुछ भी लाइट देती कभी कभी, उसको इंटरप्ट कर दिया जो 16 घंटे की नाइट वाला पीरियड था. तो प्लांट ने फ्लावर करने से मना कर दिया. कह रहा ना सिर्फ मुझे दिन चाहिए, मुझे रात भी चाहिए पूरी कंप्लीट जो 16 घंटे वाली है, ठीक है, और मुझे अगर बीच में इंटरप्शन करोगे तो फ्लावरिंग नहीं करूंगा. तो डे एंड नाइट दोनों का पीरियड इंपॉर्टेंट है इस चीज में, ठीक है. Hence it can be said that flowering of cytokinin depends not only on combination of light and dark exposure but also their relative durations. This response of plants to periods of day and night is termed photoperiodism. So photoperiodism is not just response to light, it is response to light and dark. दोनों का एक defined period चाहिए plant. It is also interesting to note that while shoot apices modify themselves into flowering apices, they themselves cannot perceive photoperiods. The site of perception of light dark is the leaf. इसी leaf का question. It has been hypothesized that there is a hormone substance, florigen, that is responsible for flowering. This hormonal substance migrates from leaves to shoot apices for inducing flowering only when plants are exposed to the necessary indicated photoperiod. खत्म photoperiod. बहुत बढ़िया. Vernalization करो. पानी पी ले. अब बचा ही क्या है बेटा? To the necessary indicated photoperiod. खत्म photoperiod. To the necessary indicated photoperiod. खत्म photoperiod. नहीं करूंगा. तो डे एंड नाइट दोनों का पीरियड इंपॉर्टेंट है इस चीज में, ठीक है. Hence this response of plants to periods of day and night is termed बाद होंगे, फॉर्मल होते पहले वाले, ठीक है. क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स. क्रिटिकल ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं होता, हर प्लांट का अपना क्रिटिकल ड्यूरेशन है. There are many plants, however, where there is no such correlation between exposure to light and duration and induction of flowering. Such plants are called day neutral plants. It is now known that not only duration of light period but also duration of dark period is also equally important. अच्छा ऐसा नहीं है, देखो मैंने साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया. मान लो किसी का क्रिटिकल पीरियड 8 घंटे, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट है, मान लो कोई शॉर्ट डे प्लांट, मान लो मैं शॉर्ट डे प्लांट की 8 घंटे की सनलाइट मिलेगी, तो ठीक है, उससे ज्यादा मेरे को दिक्कत होती है. तो मैंने 8 घंटे की सनलाइट मिली, तो 24 में से 8 निकाल दो, कितना हो गया 16. 16 घंटे की मतलब मुझे नाइट चाहिए. साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको 16 घंटे की नाइट दी और 8 घंटे का सनलाइट दिया, तो बढ़िया फ्लावर कर. फिर साइंटिस्ट ने क्या काम किया, उन्होंने नाइट वाला जो 16 घंटे वाला था उसमें बीच बीच में थोड़ी लाइट देती कभी कभी, उसको इंटरप्ट कर दिया जो 16 घंटे की नाइट वाला पीरियड था. तो प्लांट ने फ्लावर करने से मना कर दिया. कह रहा ना सिर्फ मुझे दिन चाहिए, मुझे रात भी चाहिए पूरी कंप्लीट जो 16 घंटे वाली है, ठीक है, और मुझे अगर बीच में इंटरप्शन करोगे तो फ्लावरिंग नहीं करूंगा. तो डे एंड नाइट दोनों का पीरियड इंपॉर्टेंट है इस चीज में, ठीक है. Hence it can be said that flowering of cytokinin depends not only on combination of light and dark exposure but also their relative durations. This response of plants to periods of day and night is termed photoperiodism. So photoperiodism is not just response to light, it is response to light and dark. दोनों का एक time period चाहिए plant. It is also interesting to note that while shoot apices modify themselves into flowering apices, they themselves cannot perceive photoperiods. The site of perception of light dark is the leaf. इसी नीचे It has been hypothesized that there is a hormone substance, florigen, that is responsible for flowering. This hormonal substance migrates from leaves to shoot apices for inducing flowering only when plants are exposed to the necessary indicated photoperiod. खत्म photoperiod. बहुत बढ़िया. Vernalization करो. पानी ले. अब बचा ही क्या है? dormancy में वैसे आती है, बचा ही क्या?
Vernalization. Some plants require exposure to low temperature quantitatively flowering. This term is known as vernalization. Okay. कुछ प्लांट्स को फ्लावर करने के लिए जर्मिनेट करने की बात नहीं हो रही, जर्मिनेट करना हम डोरमेंसी में करेंगे कि कुछ प्लांट्स को जर्मिनेट करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है। मैंने बताया एब्सिसिक एसिड जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, वो जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है कुछ प्लांट्स को फ्लावरिंग करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, इसको वर्नलाइजेशन कहते हैं। बेसिक फ्लावरिंग करने के लिए अगर आपको लाइट चाहिए एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की तो वो फोटोपीरियड कहलाएगा। अगर फ्लावरिंग करने के लिए आपको लो टेम्परेचर चाहिए तो वो वर्नलाइजेशन रहेगा, ठीक है। Some plants require exposure to low temperature, quantitatively or qualitatively, for flowering. This phenomena is termed as vernalization. Vernalization का फायदा क्या है? Prevents precocious reproductive development late in the growing season. इसका मीनिंग क्या है? मान लो एक पौधा ऐसी जगह उगता है जहाँ स्नोफॉल होती है, ठीक है, स्नोफॉल होती है। अब सर्दी से जस्ट पहले लेट इन ग्रोइंग सीजन का मतलब होता है, ग्रोइंग सीजन मान लो है तो लेट इन ग्रोइंग सीजन होता है सर्दियों के पास, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के बाद। मान लो वो यहाँ पे फ्लावर कर जाए पहले, और यहाँ पे फ्लावर करके यहाँ पे फ्रूट भी बन जाए, छोटा सा फ्रूट भी बन जाए, फ्रूट बन जाए, और फिर पड़े स्नोफॉल, यहाँ पे स्नो पड़ जाए और फ्रूट जो है वो टूट के गिर जाए, फ्रूट ड्रॉप हो जाए, क्योंकि इतने ठंड में फ्रूट ड्रॉप होना बहुत ही नॉर्मल चीज है। जैसे एप्पल के पौधे हैं, एप्पल के पौधे ऐसे उगते हैं जहाँ बर्फ होती है, तो एप्पल के पौधे उस टाइम थोड़े पे एप्पल लगाए होते हैं उन्होंने जब बर्फ होती है, तब नहीं एप्पल लगाते होते क्योंकि गिर जाएंगे एप्पल तो इसमें बर्फ में। मैं रहती थी पहले किन्नौर में रहती थी, मेरे पापा वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर थे इंग्लिश के, अल्पा में किन्नौर में, तो सर्दियों में कोई एप्पल नहीं लगते थे, ठीक है, वो वेट करते थे सर्दियाँ खत्म होने का प्लांट्स, तब वो एप्पल की छोटी छोटी छूटता रहना शुरू करते थे। क्यों? अगर स्नोफॉल में एप्पल या फ्रूट मिल गया तो फ्रूट भी टूट सकता है, एप्पल जो अगर फ्लावर टूट सकता है तो ये तो बेचारा खराब हो गया ना, इसका तो हालत खराब होगी ना। प्रीकॉशंस होता है जल्दी, फालतू की जल्दी डेवलपमेंट, इतनी नहीं जल्दी डेवलप करनी है कि आप उसको संभालना हो, तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स वेट करते हैं, ये फ्लावरिंग ही नहीं करते। जब इनके ऊपर स्नो पड़ती है, स्नो पड़ती है, स्नो में काफी दिन रहने के बाद जब स्नो मेल्ट होती है उसके बाद ये फ्लावरिंग करते हैं, उसके बाद ये फ्लावरिंग करते हैं। तो इनको क्या फायदा हुआ, अब इनके ऊपर स्नो नहीं पड़ेगी, इनको अच्छा मौसम मिलेगा ग्रो करने का, जब फ्रूट भी बनेंगे तो दे विल हैव एवरीथिंग फॉर द फ्रूट्स टू ग्रो नाइसली। ये काम है वर्नलाइजेशन का। भैया फ्लावरिंग मत करने दो, ये ऑफकोर्स तुम समझ लो ऐसी ही जगहों पे होता होगा जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती होगी, क्योंकि ठंड में फिर नहीं तो प्लांट्स का फ्रूट या फ्लावर मर सकता है। Prevents precocious reproductive development late in the growing season, ठीक है। Enables the plant to have sufficient time to reach maturity, आराम से, ठीक है, आराम से, ताकि आराम से वो पूरा साल लेके अपना मैच्योर हो सके आराम से, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने कुछ फूड वेराइटीज में, जैसे कि वीट में, बार्ले में, राइस में, इनमें दो वेराइटीज होती है, स्प्रिंग वेराइटी और विंटर वेराइटी। स्प्रिंग वेराइटी क्या होती है, स्प्रिंग कब होती है, समर से पहले स्प्रिंग होती है, समर से पहले स्प्रिंग होती है। तो इन वेराइटीज में हमें कोई वर्नलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलती। स्प्रिंग में ये लगा दी जाती है, सीड लगा दी जाती है, फिर इनका पौधा आ जाता है, लेट यहाँ पे ऑटम उटम में या विंटर से जस्ट पहले यहाँ पे इनके सीड बन जाते हैं, बढ़िया फ्रूट या सीड बन जाते हैं, बढ़िया राइप हो जाते हैं, तो यहाँ से तोड़ ली जाती है, इनकी हार्वेस्ट हो जाती है, ठीक है। जो विंटर वेराइटीज होती है वो बिल्कुल अलग होती है। इनमें क्या होता है, ये ऑटम में प्लांट होती है, ऑटम में ये प्लांट होती है, सीड होता है इनका, विंटर में, ऑटम में प्लांट हुई, थोड़ा छोटा सीडलिंग आ गया, विंटर में ये फ्लावरिंग नहीं करते, ये बस पड़ रहते हैं ऐसे, विंटर को पड़ रहते हैं, झेल लेते हैं, फिर विंटर में इनकी वर्नलाइजेशन हो जाती है, यहाँ पे वर्नलाइजेशन हो जाती है, फिर आगे स्प्रिंग में ये बढ़िया अपने फ्रूट स्टार्ट लगा लेते हैं, ठीक है, स्प्रिंग या समर में इनकी कटाई हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे आके इनकी हार्वेस्ट हो जाती है, समझ रहे हो। तो इनकी जो विंटर वैराइटीज है वहाँ वर्नलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि विंटर के बाद ही अपनी फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। विंटर के बाद फ्लावरिंग तो दिखाई नहीं, बढ़िया वर्नलाइजेशन होगी, फ्लावरिंग होगी, यहाँ पे हार्वेस्ट होगी, समझ गए। तो ऐसा यहाँ पे आपको वर्नलाइजेशन का एग्जांपल देखने के लिए मिलता है। दूसरा आपको वर्नलाइजेशन का एग्जांपल देखने के लिए मिलता है बाइएनियल प्लांट्स में। बाइएनियल प्लांट्स में क्या होता है, बाइएनियल प्लांट्स होते हैं, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ वर्नलाइजेशन वाला टॉपिक, क्योंकि मुझे पता है कि इतना डीप में क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आ गया तो ठीक है, ये पूछेंगे वर्नलाइजेशन क्या होता है, बट फिर भी मैं पढ़ा दे रही हूँ, जो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड उसको मिल जाए, उसको ये लगे मैं कहाँ से पढ़ूँ, बताओ, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैंने पढ़ा नहीं। सुनो, बाइएनियल प्लांट्स होते हैं जो दो ग्रोइंग सीजन्स में अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, तो ये दो बार नहीं फ्लावर फ्रूट करते हैं, एक ही बार करते हैं, लेकिन दो ग्रोइंग सीजन। पहले क्या होता है, जैसे ये विंटर है,
यहाँ पे ग्रोइंग सीजन खत्म हो गया। पहले ग्रोइंग सीजन में अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं आराम से। वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब पौधा उगा लिया, पेड़ पत्ता फूल फूल नहीं निकाला, वेजिटेटिव ग्रोथ में। यहाँ पे वर्नलाइजेशन होती है इनकी, ट्रीटमेंट विद कोल्ड हो गया। यहाँ पे फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, सेक्सुअल ग्रोथ होती है यहाँ पे, इनका फूल बनता है, यहाँ पे फिर सीड वगैरह बनते हैं। तो बाइनल्स ही होते हैं जो 2 ग्रोइंग सीजन में ग्रो करते हैं। पहले ग्रोइंग सीजन में फिर वेजिटेटिवली अपना ग्रो करते हैं, फूल फल नहीं उगाते हैं, फिर विंटर की वर्नलाइजेशन होती है, फिर आगे उनका फ्लावरिंग हो जाता है, यहाँ सेक्सुअल ग्रोथ हो जाता है, फ्लावर बनेगा तो सीड फ्रूट सब कुछ ही बनेगा। ठीक है, तो बाइनल्स में आपको ये देखने के लिए मिलता है। खत्म वर्नलाइजेशन, समझ गया ना तुम फोटोपेरिडिज्म क्या होता है, वर्नलाइजेशन क्या होता है। देयर आर प्लांट्स व्हिच फ्लावर in which flowering is either quantitatively or qualitatively dependent. Quantitatively मतलब कितनी देर के लिए ठंड चाहिए, quantity, qualitative मतलब कितनी ज्यादा ठंड चाहिए, ठीक है। Dependent on exposure to low temperature. This phenomenon is termed vernalization. It prevents precocious reproductive development late in growing season. Late in growing season में आपके फूल ना निकल आए जो कि विंटर में भी सड़ जाए, and enables the plant to have sufficient time to reach maturity. Vernalization refers to especially to the promotion of flowering by period of low temperature. Some important food plants जैसे कि wheat, barley, rye have 2 kinds of varieties, winter and spring. The spring variety is normally planted in spring and comes to flower and produce grains before the end of growing season. मतलब सर्दियों से पहले इनकी कटाई हो जाती है। Winter varieties, however, if planted in spring, would normally fail to flower or produce mature grain, क्योंकि उनको तो क्या चाहिए, उनको चाहिए टॉर्चर, जब तक ठंड नहीं मिलेगी तब तक फ्लावर नहीं करेंगे, ठीक है। And over winter come out as small seedlings, resume growth in the spring, ठीक है, and are harvested usually around middle summer. Another example of vernalization is seen in biennial plants. Biennials are monocarpic plants. Monocarpic मतलब एक बार flowering fruiting करने वाले, that normally flower and die in the second season. पहले में तो वो फ्लावर करते ही नहीं। Sugar beets, cabbage, carrots are some of the common biennials. अच्छा ये इस पे भी क्वेश्चन आया था, बहुत पहले आया था, कैरेट पे क्वेश्चन आ जाता है, बताओ कुछ ऐसा वर्नलाइजेशन से रिलेटेड। Subjecting to the growth of biennial plant to cold treatment simulates ठीक है। तो क्वेश्चन इसके एग्जांपल पे आ गया था। अब इसका मैंने कोई निमोनिक नहीं बनाया था, मैंने सुका का भी बनाया था, सुका का भी, लेकिन सुका का भी तो किसको याद रहेगा ना। शुगर बीट का सू, कैबेज का का, कैरेट का बी मतलब बाइनल, ये बाइनल्स होते हैं और ये वर्नलाइजेशन को चाहिए होता है, ठीक है। अब इससे अच्छा निमोनिक हो तो प्लीज मुझे बताएं, सुका का भी तो मुझे नहीं लगता किसी को भी एग्जाम में याद होने वाला है, ठीक है। वर्नलाइजेशन हो गया है। डोरमेंसी सुनो, डोरमेंसी यही पढ़ा देती हूँ, तुम्हें आता है डोरमेंसी, फिर तुम्हें याद करना है किन से डोरमेंसी होती है और किन से डोरमेंसी हटती है। There are certain seeds which fail to germinate even when the external conditions are favorable. Such seeds are understood to be undergoing a period of dormancy which is controlled by not by external environment but by endogenous control. बाहर का environment तो अच्छा ही है, अच्छी पानी मिल रहा है, अच्छा टेम्परेचर सब कुछ है, फिर भी डोरमेंट है तो तुम्हारे अंदर ही कुछ दिक्कत है। और conditions within the seed itself, impermeable and hard seed coat. कुछ सीड्स कहते हैं कि हमारा सीड कोट बहुत हार्ड है, ठीक है, जब तक ये सीड कोट नहीं तोड़ोगे तब तक जर्मिनेट नहीं होगा, हम डोरमेंट करेंगे। तो इसका तुम्हें रीजन बताओ नेचर में क्या है, सोचो। नेचर चाहती है कि मेरे सीड दूर दूर डिस्पर्स हो, एक प्लांट चाहता है कि मेरे सीड दूर दूर डिस्पर्स हो, बिल्कुल मेरी जड़ में ना यहाँ पे नया पौधा हो जाए, क्योंकि फिर तो कॉम्पीट करेगा मेरे साथ ही रिसोर्सेज के लिए, है ना। तो वो क्या करती है, टेस्टी टेस्टी फ्रूट बनाती है, उनके अंदर सीड रख देती है प्लांट। अब जब वो कोई एनिमल, जैसे कोई एनिमल है तो वो उस फ्रूट को खाता है तो सीड को भी खाता है, तो वो सीड जब एनिमल के इंटेस्टाइन से पास होता है तो उसका हार्ड सीड कवर जो है वो छिल जाता है एंजाइम्स की वजह से। फिर वो एनिमल कहीं दूर जाके पॉटी करता है, तब तक उसका हार्ड सीड कवर जो है वो टूट चुका होता है, तो वो इजीली वहां पे जर्मिनेट कर जाता है। तो प्लांट कहता है जिस मेरे फ्रूट को एनिमल ने नहीं खाया वो मेरा, वो कोई एनिमल, जैसे कोई एनिमल है वो, and enables the plant to have sufficient time to reach maturity. Vernalization refers to तो भी एग्जाम में याद होने वाला है, ठीक है। वर्नलाइजेशन हो गया है, चीजें डायग्राम में के लिए लॉन्ग मतलब एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता मेरे आसपास कोई जर्मिनेट, क्योंकि एनिमल ने नहीं खाया, यही पढ़ रहेंगे मेरे, वो कोई एनिमल, जैसे कोई एनिमल, बट बाय एंडोजीनस कंट्रोल, बाहर का एनवायरनमेंट तो अच्छा ही है, अच्छी पानी मिल रहा है, अच्छा टेम्परेचर है, सब कुछ है, फिर भी डोरमेंट है तो अंदर ही दिक्कत है। और कंडीशन विद द सीड इटसेल्फ, इम्परमेबल एंड हार्ड सीड कोट। कुछ सीड्स कहते हैं कि हमारा सीड कोट बहुत हार्ड है, ठीक है, जब तक सीड कोट नहीं तोड़ोगे तो जर्मिनेट नहीं होगा, डोरमेंट। इसका मुझे रीजन बताओ नेचर में क्या है, सोचो। नेचर चाहती है कि मेरे सीड दूर दूर डिस्पर्स हो, एक प्लांट चाहता है कि मेरे सीड दूर दूर डिस्पर्स हो, बिल्कुल मेरी जड़ में यहाँ पे नया पौधा हो जाए, तो कंप्लीट करेगा मेरे साथ कोशिश करेगी, तो वो व्यक्ति टेस्टी फ्रूट बनाती है, उनके अंदर सीड रख देती है प्लांट। अब जब वो कोई एनिमल तो वो सीड को खाता है, सीड को खाता है, तो सीड जब एनिमल के इंटेस्टाइन से पास होता है तो उसका हार्ड सीड जो है वो छिल जाता है एंजाइम्स की वजह से। फिर वो एनिमल कहीं दूर जाके पॉटी करता है, तब तक उसका हार्ड सीड कवर जो है वो टूट चुका होता है, तो वो इजीली वहां पे जर्मिनेट करता है। तो प्लांट कहता है जिस मेरे फ्रूट को एनिमल ने नहीं खाया वो मेरा सीड ही जर्मिनेट नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता मेरे आसपास कोई जर्मिनेट, क्योंकि एनिमल ने नहीं खाया, यही पड़ रहेंगे मेरे तो फ्रूट और सीड, यही नीचे जर्मिनेट कर जाएंगे। बताओ मेरे ही नीचे छुप के मेरे ही बच्चे मर जाएंगे, क्योंकि मैं इतना बड़ा हूँ, मान लो धूप नहीं आ रही नीचे,
या मेरे बच्चे मुझसे मिनरल्स के लिए कॉम्पीट करेंगे, तो वो उसके सीड्स तभी डोरमेंसी से हटते हैं जब उनकी सीड कोट को मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, खिल दे तो तोड़ दे कोई, तो वो एनिमल्स की गट से होता है। अब नॉर्मली अगर तुमने कोई फ्रूट लिया, अब तुम तो नहीं करोगे कि फ्रूट खा के बीज निकाल के फिर उससे पौधा उगाओगे, नहीं, तुम उसको नाइफ वगैरह से ऐसे करते हैं ना, तो वो मैकेनिकल उससे भी उसकी डोरमेंसी खत्म हो जाती है इस केस में जब हार्ड सीड कोट होता है। तो प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स कौन कौन से याद रखने हैं? APP है ये, ठीक है। ये भी कोई निमोनिक नहीं है मेरे पास, तो मैंने निमोनिक खुद बनाना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। वैसे मैंने पहले जब मैं याद करी तो मैं ACC सीमेंट चलते, जैसे ACC सीमेंट है ना, टूटता नहीं है, तो वैसे ये सीड्स हैं में डोरमेंसी उगते नहीं है। APP से याद किया मैंने। एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड एंड पैरास्कॉर्बिक एसिड, ये तीन होते हैं, अगर सीड के अंदर भरे हुए होते हैं तो डोरमेंट रहता है सीड। एंड इमेच्योर एम्ब्रियोज आर सम ऑफ द रीजंस व्हिच कॉज सीड डोरमेंसी। दिस डोरमेंसी however can be overcome through natural means and various other man-made measures. For example, seed coat barrier in some seeds can be broken by mechanical abrasions such as knives, sandpaper, yeah, vigorous shaking. In nature, these abrasions are caused by microbial action and by passage through digestive tract of animals. Effect of inhibitory substances can be removed. कैसे कैसे रिमूव हो सकता है? ठंड में डाल दो, एब्सिसिक एसिड इनएक्टिव हो जाता है ठंड में, ठीक है, या पानी से वॉश आउट हो जाता है, जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट कर दो, ठीक है। Subjecting the seeds to chilling condition, application of certain chemicals जैसे कि gibberellic acid या nitrates, changing the environment conditions such as light and temperature, other methods to overcome seed dormancy। बताओ चैप्टर क्वेश्चन करने हैं बस अब हमें, बताओ। यहाँ तक आ गए बेटा, मैं तुम लोगों को सलाम करती हूँ जो बच्चे इतने घंटे का लेक्चर लगा के यहाँ तक पहुंच चुके हैं। आप लोग रियली में डेडिकेटेड हैं। आप उन बच्चों में से नहीं है जो कि हर 5वें छठे दिन स्ट्रैटेजी देखते हैं, हाउ टू क्रैक नीट इन 6 months, हाउ टू क्रैक नीट इन 5 months, हाउ टू क्रैक नीट इन 4 months, हाउ टू क्रैक नीट इन 1 month, हाउ टू क्रैक नीट इन 1 day। वो बच्चा 1 day वाली भी स्ट्रैटेजी देखेगा। तुम उन बच्चों में से नहीं हो, यही तुम्हें एक सीरियस नीट कैंडिडेट कैटेगरी में लेके आता है। सिर्फ इतनी सी बात ही, 10 लाख बच्चा जो 20 लाख बच्चा भरेगा ना, 10 लाख बच्चा तो 150 का स्कोर नहीं क्रॉस कर पाएगा नीट में, ठीक है। ये कंपटीशन तुम्हारा 20-25 लाख बच्चों से नहीं है, कंपटीशन तुम्हारा ऊपर के 2-3 लाख बच्चों से है। बाकी वो जो 18 लाख बच्चा है, वो जो 17 लाख बच्चा है ना, वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देख रहे हैं बैठ के कि हाउ टू मेक तुक्का, कैसे तुक्का अच्छा लगाना है, हाउ टू क्रैक इन 15 days, हाउ कैन गेट सीसीसी और सीसीसी एनालिसिस। कुछ नहीं होने वाला, ऐसे नहीं आता सीसीसी और सीसीसी, पढ़ना पड़ता है। आप में से एक को अगर आपने लेक्चर लगा लिया तो कमेंट में जरूर अपना नाम लिख के बता देना कि भैया मैंने लगा लिया ये लेक्चर, ठीक है ना, आई हैव कंप्लीटेड, तो खुशी होगी मुझे। बढ़िया। द साइड ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन ग्लास रिपोर्ट पर रिस्पॉन्स परसीव करता है नील, मतलब किस क्वेश्चन है। मतलब 20 ये कॉलेज नॉट इनहिबिटिव सब्सटेंस डोंट सी डोंट को इनहिबिटिव सब्सटेंस याद रखिए, एब्सिसिक एसिड, ये पैरास्कॉर्बिक एसिड और एक और बाकी कैसे करते हैं ना, तो जिब्रेलिक एसिड तो नहीं होगा, तो काका बी और एपीपी कैसे मैं क्या करूं, तुम लोग बता देना मुझे। व्हाट इज द साइड ऑफ परसेप्शन, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 प्लीज। व्हाट लाइक स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन, ये क्वेश्चन होगा बे। Just calculation of absolute growth, absolute growth, absolute growth, growth 10 centimeter minus 5 centimeter, 5 centimeter square is equals to 5 centimeter square. It's already 50 centimeter. 50 centimeter square minus total minus 55, total 55 centimeter minus 50 is equals to 5 centimeter square. Okay, relative growth, relative growth, relative growth is, this one is absolute growth, relative, okay, absolute, final minus initial, final minus initial, absolute growth, relative growth, final minus initial, relative growth considering initial parameter 10 minus 5 upon 5
Initial parameter 55 minus 50 upon 50 into 10 into 100. 10 minus 5. Final minus initial upon initial into 100. 5 upon 5 equals to 100% relative growth. Whereas here it is 55 minus 50 upon 55 into 100. 5 upon 55. 5 on the 5. 5 11 से 55. Please 5. Okay. 58. 5 upon 50. 5 tens is equals to 10% relative growth. 10% relative growth. Absolute growth, actual growth without understanding, considering initial parameter. Okay, considering relative growth. Considering initial parameter. Initial parameter. PAREMETR. Final minus initial upon initial into 100. Meristematic cell. Plasmatic growth. Differentiation. Cell division. Cell death. Senescence. Mature cell. Maturation. Expansion or elongation. Characteristics. Phase of plant growth. Maturation, elongation and meristematic. Maturation, thick wall. Deposition, lignin, cellulosic. Protoplasm decreases. Meristematic, dense protoplasm, thin wall cellulose. Plasmodesmata connection. Elongation, vacuolation. Vacuole size increases. Storage, protoplasm contained. Cell wall deposition. Pectin. Deposition of pectin in cell wall. Plasticity. Plant follow different pathway in response to environment or phases of life to form different kinds of structure. Phase of growth. वैस्कुलर किंगडम है और यहाँ पे फर्स्ट किंगडम होता है सारा ये ऐसे गर्त बड़ा होता है ठीक है दोनों सेकंड में सेकंड में बड़ा है ठीक है इस डायग्राम में कुछ ये टेंशन लेनी है क्लियर है ये लंबाई और ये मोटाई बढ़ा है ठीक है ये सब पढ़ो तुम कोई कर लिए ग्रोथ रेट्स पढ़ो कोई कर लिए डायग्राम देखो ये बेसिकली ग्रोथ बढ़ रेडिकल से ऊपर अब ग्रोथ लेकर क्या है सेगमेंट बना दिया ए बी सी डी ये फॉर एग्जांपल देखिए बहुत लंबी होगी तो सबसे ज्यादा ग्रोथ आपकी कहां पे है सबसे नीचे ए बी सी डी में सबसे ज्यादा ग्रोथ है ई एफ जी में ज्यादा ग्रोथ है तो ये ऐसा क्यों है कि जो ए बी सी डी ठीक है वो जब हम बाहर की ग्रोथ नहीं समझ आता है ये बेसिकली जोन ऑफ इलोंगेशन जोन ऑफ मैचुरेशन है सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक जोन ऑफ एबीसीडी इमीडिएटली रेंडर इज इलोंगेटेड द मोस्ट ये आपका मेरिस्टेमेटिक जोन है ए से नीचे ये ज्यादा इलोंगेट हुआ इलोंगेशन सबसे ज्यादा होती है यहां पे जस्ट इसके पीछे एक्चुअली पैरेलल लाइन टेक्निक जो है ये जोन ऑफ इलोंगेशन को भी ढूंढने के लिए मैचुरेशन गलती बोल रहा है ये जोन ऑफ मैचुरेशन तो मैचुरेशन क्या है साइज थोड़ा ही बढ़ता है जितना बढ़ना होगा उससे थोड़ा और ज्यादा बढ़ता है ठीक है मेनली वहां पे क्या मैक्सिमम डिफरेंशिएशन रहता है मैक्सिमम मॉडिफिकेशन रहता है साइज मैच्योर सेल सबसे ज्यादा होता है इलोंगेटेड सेल से थोड़ा और बढ़ता है लेकिन जहां सबसे ज्यादा साइज का डिफरेंस आता है वहां पे जोन ऑफ इलोंगेशन ये फिर मैचुरेशन वाली जोन ठीक होगी ये तो ये डायग्राम आज आपको बताना है कि एबीसीडी जोन ऑफ इलोंगेशन है ठीक है ये क्वेश्चन आ सकता है तो डायग्राम देखिए ठीक है ये पढ़ो ये सब हो गया बहुत बढ़िया ये सब हो गया बहुत बढ़िया देन ये पढ़ो सारा का हम पढ़ चुके हैं पढ़ो इसको ठीक है ये एब्सोल्यूट रिलेटिव ग्रोथ वाली बात आ गई है डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट्स both aid we have increased the area by 5 cm square in a given time to produce even then the absolute growth same है लेकिन relative growth बिल्कुल भी same नहीं है मैं बता देती हूं quantitative comparison between the growth of living systems can also be made in two ways the measurement and comparison of total growth per unit time is called absolute growth rate तो definition आ सकती है इस चीज की measurement and comparison of total growth कितना total growth है इससे से शुरू हुआ उसका कोई मतलब ठीक है total growth कितना हुआ तो absolute growth rate बोलते हैं ठीक है the growth of given system per unit time is expressed on a common basis ठीक है example per unit initial parameter is called the relative growth अगर आपने growth ली per unit time expressed on a common basis कोई आपने common denominator लिया कि भैया ओरिजिनल मान लो कितना एरिया मान लो जैसे आपने ले लिया इंक्रीज एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया अगर आपने कॉमन चीज ले ली ओरिजिनल एरिया ले ली तो आपने जो ग्रोथ निकाली वो रिलेटिव ठीक है पर इतना एक्सप्रेस होना कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर पर यूनिट एरिया ले लो मान लो ठीक है इस कॉल रिलेटिव ग्रोथ रेट समझो क्या इंक्रीज एरिया 5 है अगर आपको 5/5 कर दूं मैं जो ओरिजिनल एरिया इसका 5/50 ओरिजिनल एरिया तो चेंज हो जाएगा इसका ग्रोथ रेट क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला बढ़ा प्रति 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और बढ़ा इसका क्या ग्रोथ रेट है 0.1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ने ओरिजिनल ले से 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर नया बना है हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ दिस लीफ से 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर नया लीफ बना है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल लीफ ने 1 सेंटीमीटर का अपने से एक जगह खुद नहीं और नया लीफ बना है तो रिलेटिव ग्रोथ जो है आपको किसी ना किसी कॉमन बेसिस पे लेना पड़ेगा मतलब नीचे से डिनोमिनेटर आपको लेना पड़ेगा ओरिजिनल जो चीज है ओरिजिनल पैरामीटर का डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा
कितना इंक्रीज एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी इंक्रीज एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आया? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आप सीधा कितना ग्रोथ हुआ है पर यूनिट टाइम आप बोलता है भाई, एक दिन में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मैं चार्ट्स ऑन कर दे रही हूँ। अगर आप इस नीचे डिनोमिनेटर ले ओरिजिनल पैरामीटर है, ओरिजिनल पैरामीटर ओरिजिनली कितना सरफेस एरिया था भाई, बढ़ तो गया इतना, लेकिन ओरिजिनल कितना तब आप रेडी ग्रोथ रेट, ठीक है? रेडी ग्रोथ रेट कितना है आपका, जितना बढ़ गया Now you can talk. समथिंग अपॉन ओरिजिनल पैरामीटर को डिनोमिनेटर लो, ठीक है? इसमें ना 2 leaves A and B are drawn that are different sizes but show absolute increase in the area given time to give A1 and B1. However, one of them shows much higher relative growth rate. इसका absolute growth rate दोनों same है, much higher relative growth rate, ठीक है? इसका है, इसमें हर सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और बनानी है, इसमें हर सेंटीमीटर स्क्वायर से 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। भैया प्लीज देखो, मुझे नहीं पता मैं अच्छे से समझा पाई हूं या नहीं एब्सोल्यूट रिलेटिव वाला, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर तुम्हें समझ में आया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट समझ में आया, मैं क्वेश्चन बन रहा हूं तो भगवान की देखो मुझे पीजीआर में टेंशन नहीं है, मुझे समझ में आया क्योंकि उसमें रट्टा हूं सब मैंने रट्टा मारो, रट्टे से बात क्वेश्चन निकल जाएगा, उसमें टेंशन नहीं। ग्रोथ एंड फिजिकल टेंशन हर क्वेश्चन से कम आते हैं, बट आगे गलत तो तुम्हें पता है, तो प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन, ठीक है? कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, चलो भैया ये मैं तो पढ़ते थे हमने ये बात, व्हाई डू यू नॉट ट्राई टू राइट डाउन व्हाट यू थिंक आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर ग्रोथ, द लिस्ट मे हैव 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ओके, ये कौन सा वाला स्लॉट कंप्लीट हुआ? मैंने पिन किया था ना? नहीं पिन, स्लॉट 3 था। ओके, तो ये वाला नहीं। विल टेक 10 मिनट वाला ब्रेक। ओके, आई याद करने वाला रह जाएगा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शायद हो जाए। ब्रेक, BREAK, ब्रेक। शायद आई Are you there, शुभम? Or you slept? हाँ ब्रो, क्या चल रहा है? सो गए क्या? पिन कर दिया है, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। ओके, आइए, वो मुझे 10 मिनट नहीं लिखा। So you are there. I thought you'll sleep. 10 मिनट का ब्रेक। आई थिंक जब तक सुबह होगी ना, वी विल कंप्लीट 4 आवर। इतनी खुशी हो रही है। मैं यहाँ पर भी तो कर देते हैं।
5 बज गए हैं लेकिन ना सवेरा नहीं हुआ है, मतलब कि क्या बोलते हैं, अंधेरा नहीं हटा, मुझे वो वर्ड नहीं आ रही है एक्चुअली में। अभी भी हम लोगों के पास 4 मिनट 30 सेकेंड्स इतना है। हाई ITZ, मुझे ठंड लग रहा है। हार्डली 3 मिनट है, लेकिन मैं फिर से गर्म करके आती हूँ पानी, नमक वाला पानी पीऊँगी और फिर पढ़ाई करूँगी। टेम्परेचर नहीं पड़ता लेकिन बहुत ठंड है। यहाँ पर 9 डिग्री दिखा रहा है, 1 मिनट अच्छे से चेक कर लेती हूँ, लेकिन 9 डिग्री से कम ही है, आई नो। हाँ अभी दिखा रहा है 8 डिग्री सेल्सियस, अच्छे से चेक कर लेती हूँ, रुको। सेमेस्टर एग्ज़ाम, ये मेरा प्लेस नहीं है। रावंगला, हाँ 8 डिग्री सेल्सियस है। क्यों पूछा वैसे? शुभम, मैं ना वैसे टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पानी गर्म लेके करके आती हूँ। हाँ
ठंड है अभी भी इसलिए पूछा। काफ़ी ठंड है, स्पेशली कुछ दिन से बारिश हो रही है ना, तो और भी ज़्यादा ठंड है। अब हमारा कौन सा स्लॉट रहेगा? स्लॉट 4, राइट। और दो यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, मुझे तो इससे भी कम लगा था। फील ऐसा आ रहा है। स्लॉट 4। जब मैं पानी लेने गई थी तो ये बिप किया था क्या? मुझे बाहर से सुनाई नहीं दिया। अभी मैं चैट्स ऑफ कर देती हूँ, ओके। ये सेशन ख़त्म होने के बाद फिर से ऑन कर दूँगी। हाँ किया था। ओ ओके। gaseous PBR। इतनी तो सा नींद आ रहा है मुझे। water, oxygen, nutrients, and various essential elements for growth. The plants is growing size by cell enlargement. Cell enlargement कैसे होती है? Return requires water. Water से होती है ना, water बन जाता है। फुल है, केमियम। ये पैन टाइम सेल है। आपको ना कल्चर मीडियम को फॉर्म कैल्स, ठीक है? तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है? आप एक परमानेंट सेल को ऐसे केमिकल देखते हो कि मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये मेरिस्टेम करके यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल बनाता है। हालांकि इसको ट्यूमर नहीं बोलते, ट्यूमर तो बाय गॉड। बस ये वो है ऑक्सिन, साइटोकाइन और जिबरेलिन। जो ग्रोथ इनहिबिटर एक्चुअली इसमें एक ही मेन है, एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन मुझे वैसे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि इथाइलिन के बोथ इनहिबिटिंग एंड प्रोमोटिंग एक्शंस दोनों ही होते हैं, तो ये दोनों ही कैटेगरी में आ सकता है। तो ज्यादा कौन से एक्शन होते हैं? ज्यादा एक्चुअली इसलिए कह रही हूं, मैंने गलत लिखा है क्योंकि माइनर एक्शन इसका इनहिबिटरी होता है। माइनर एक्शन इनहिबिटरी है, इसका मेजर एक्शन प्रोमोटरी है। तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली में एक और यहाँ पे डंडी बना के इथाइलिन लिखना बढ़िया है। इथाइलिन का मेजर एक्शन प्रोमोटरी है। अभी तुम पढ़ोगे तो तुम्हें अजीब सा लगेगा यार, मैं इथाइलिन लीफ को भी गिरा रहा है, ठीक है, सेल्स को पूरा भी कर रहा है, सेल्स भी कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है इनहिबिटरी एक्शन। किसी को गिरा दो, किसी को तोड़ दो, किसी को पूरा कर दो, किसी को मार दो, ये इनहिबिटरी एक्शन। प्रोमोटरी एक्शन होता है किसी को बढ़ा दो, लीफ की ग्रोथ को बढ़ा दो, स्टेम की ग्रोथ को बढ़ा दो, ठीक है। inhibitor of growth inhibitor लीफ के साइज को बढ़ा दो, रूट के साइज को बढ़ा दो, जो कि प्रोमोटरी एक्शन बढ़ाने वाले एक्शन, ग्रोथ को प्रमोट करने वाले एक्शन। इसके मेजर एक्शन प्रोमोटरी है बेटा, और माइनर एक्शन ठीक है जी। अब इसमें जो एक और चीज याद करिए कि इनका केमिकल नेचर क्या होता है, हम भूल जाते हैं। ऑक्सिन का केमिकल नेचर होता है इंडोल। इसको हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो टाइप ऑफ ऑक्सिन होते हैं उनके नाम में ही इंडोल आता है, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड, और क्या होता है इंडोल एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसमें
एडिनिन डेरिवेटिव होता है, ये वही एडिनिन है जो तुम्हारा डीएनए में नहीं होता, एडिनिन जो कि थायमिन के साथ बाइंड करता है, एक्चुअली एडिनिन जैसा ही जो होता है, कहते हैं इसका साइक्लिक रिंग होता है, ठीक है। तो इसमें साइटोकाइनेस मिलता है इस जगह से जहाँ पे डीएनए हो, डीएनए पढ़ा हो वहीं से साइटोकाइनेस मिलते होते हैं, ठीक है। जैसे कि साइटोकाइनेस बहुत बड़ा सोर्स है, क्या कहते हैं कोकोनट का जो एंडोस्पर्म या जो कॉर्न का जो कैमल है, ठीक है, ये जहाँ से डिस्कवर हुआ था, वो हेरिंग के स्पर्म के डीएनए से डिस्कवर हुआ साइटोकाइनेस। तो हेरिंग का स्पर्म हेरिंग मछली होती है, उसके स्पर्म में डीएनए होगा, वो डीएनए का डिग्रेडेड सैंपल से वहाँ पे हमें ये मिला साइटोकाइनेस मिला था, उसको काइनेटिन में बोला। तो साइटोकाइनेन इज बेसिकली डिग्रेडेड डीएनए सैंपल से आपको मिलता है, इसलिए एडेनिन डेरिवेटिव होता है, आपको याद रखना है। अगला जिबरेलिन्स, ये टर्पीन होते हैं, ठीक है। अब आपको याद कैसे करना है, जिबरेलिन को आपने याद करना है गब्बर से, गब्बर से। और गब्बर है हमारा माली, माली है ये, मतलब लंबा थोड़ा सा माली, ठीक है, माली है गब्बर। तो गब्बर क्या है कि काम करता होगा अपने खेत खलिहान में, तो मच्छर काटते होगा, तो तारपीन का तेल लगाता होगा पूरी बॉडी में, मच्छर ना काटे, स्मेल से काट देता है ना, मच्छर पेट्रोलियम वगैरह स्मेल से, तो हमने तो तारपीन से याद रखना है, ठीक है, टर्पीन है जिबरेलिन। देन एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि जब प्लांट को स्ट्रेस होता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मतलब कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है, उसके पास कोई ब्रेन नहीं है मेंटल स्ट्रेस के लिए, उसको स्ट्रेस इज एनीथिंग एक्चुअली जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की को अनकंफर्टेबल करे। जैसे कि अगर मुझे बहुत ठंड लग रही है तो ये मेरी बॉडी को स्ट्रेस है, या मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो मेरी बॉडी को स्ट्रेस है, मुझे खाना नहीं मिल रहा, मुझे भूख लग रही है, खाना नहीं मिल रहा है, प्यास लग रही है, पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि बॉडी के लिए स्ट्रेसेस होते हैं। वैसे ही प्लांट को जब स्ट्रेस होता है, जैसे प्लांट को मान लो ड्रॉट हो, ड्रॉट माने सूखा हो, ठीक है, या प्लांट को मान लो पानी, कोई सूखा पानी नहीं है, सेम बात, या मान लो सनलाइट नहीं है, या जरूरत से ज्यादा सनलाइट है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस वाली कंडीशंस में एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो हमने ऐसा रखना है कि एब्सिसिक एसिड को जब स्ट्रेस होता है तो वो गाजर का, गाजर का याद है, कैरेट, कैरेट में कैरोटिनॉइड होते हैं बहुत सारे, तो कैरेट से आप लिख सकते हो कि एब्सिसिक एसिड जो कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव है, ये हाईली इज अ गैस, आपको केमिस्ट्री में भी पता है। अभी तक मैंने सिर्फ तुम्हें 5 पीजीआर लग रहे हैं, एंड एपिका ईसीजी, ठीक है, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, साइटोकाइनिन और गिबरेलिन, वो याद होगा तुम लोगों को। फिर मैंने कहा कि दो प्रकार के प्रोमोटर और इनहिबिटर, एक्चुअली 4 के 4 प्रोमोटर ही होते हैं, जो ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, गिबरेलिन है, बट क्या प्रोमोट रिएक्शन है, इन्हें बोलेंगे पीजीआर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन बोलेंगे, या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलेंगे। ऑक्सिन, एब्सिसिक, एथाइलिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। अब हमारे पास 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जिन्हें कि पहले तो हमें वो 5 ग्रोथ रेगुलेटर्स लग रहे हैं, अगर कोई प्लस वन का बच्चा तो उसके लिए तो यही चैलेंज है कि पहले ये 5 कैसे आते हैं, सब बन जाए। जैसे कि वर्ड बोलते हैं, कहते वॉल्यूम की मुझे एंटी वर्ड की पहली वर्ड है, तो मेरे पैकेज की फंक्शन ऐसा है, तो ऊपर इतना है, बहुत टेंशन है, ठीक है। प्लांट्स शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनमें से प्लांट्स में डिवाइड करता है नॉर्मल सेल सेल, इसमें कोई दिक्कत होती है, जैसे वायरस वगैरह अटैक कर लेते हैं, फिर बैक्टीरिया कर देते हैं प्लांट में, इसको डी डिफरेंशिएट करके मेस्मेटिक कर देते हैं, डी डिफरेंशिएट करके ये डेवलपमेंट वाली बात हो गई, ठीक है, क्लासिक हो गई, ये पढ़ाने की आई डोंट थिंक आपको जरूरत है, चलो मैं रीड कर देती हूं, आपको खुद चीज है। डेवलपमेंट इज द टर्म दैट इंक्लूड ऑल चेंजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन टू और द सीड टू सेंसेस, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। टोटल ग्रोथ, दिस क्वेश्चन क्रिएशन करें, ठीक है, उसकी एक्सपायरिंग मैच्योरिटी, टिश्यू की बात करिए तो तुम फॉर्थ केमिकल से बना हुआ परमेंट क्या होता है, फॉर्थ होता है प्लस सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, और वैस्कुलर केमिकल से बना हुआ परमेंट होता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लूइड, सेकेंडरी फ्लूइड। तो ये तुम लोग लिस्ट याद कर सकते हो, तीनों टर्म्स आपको मीनिंग समझ में आ गया? यस मैम। मीनिंग समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत चलो अब अपने को चलना है डेवलपमेंट पे। बहुत छोटा सा मीनिंग टॉपिक है, तुम्हारे टोटल में 2 टॉपिक रह गए पढ़ने के, बाकी सब हो गया, मतलब पीजीआर तो छोड़ के ऑफ कोर्स। डेवलपमेंट क्या? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। एक और डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट की बड़ी हो क्या है, सीक्वेंस ऑफ ऑल द इवेंट्स फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू डेथ ऑफ द प्लांट इज डेवलपमेंट, है ना। अब देखो ये बेसिकली डेवलपमेंट का चार्ट दिखाया हुआ है बेटा, जो कि एनसीईआरटी में इतना सुंदर नहीं है, तो हमने खुद का भी बना के देखा है चार्ट, मैं आपको दिखा दूंगी, पर ये डेवलपमेंट के यू नो इवेंट्स हैं, डेवलपमेंट के इवेंट्स हैं। एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसको समझो ध्यान से, कुछ नहीं है इसमें, डरने की जरूरत नहीं है, जितना दिख रहा है ना ऐसे दिख रहा है, कुछ है नहीं। एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, वो क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, ठीक है, प्लस वो अपने सेल्स को इंक्रीज करेगा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ करेगा, मतलब सेल डिवीजन करेगा प्लस सेल साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब 2 चीजें सेल डिवीजन करनी है, अब वो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक सेल ही बना सकता है, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट भी बना सकता है, मेरिस्टेमेटिक सेल भी बना सकता है। मान लो उसने फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल ही बनाया, तो वापस से सेल डिवीजन बना के फिर और मेरिस्टेमेटिक सेल बना देगा, डिवीजन करेगा प्लस सेल साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब 2 चीजें सेल डिवीजन, अब वो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक सेल ही बना सकता है, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट भी बना सकता है, मेरिस्टेमेटिक सेल भी बना सकता है। मान लो उसने फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल ही बनाया, तो वापस से सेल डिवीजन बना के फिर और मेरिस्टेमेटिक सेल बना देगा। मान लो उसने आगे परमानेंट सेल बनाया, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट वैसे दोनों ही सेल बनाता है, तो ये दोनों ही पाथवे सही है। पहला पाथवे 1 जिसमें उसने और मेरिस्टेमेटिक सेल बना लिए, व्हिच इज नॉट अ बिग डील। पार्ट 2 क्या है कि आपने परमानेंट सेल बना लिए। परमानेंट सेल्स में क्या है, आपने अपने सेल की डिफरेंशिएशन करी, ठीक है, उसकी एक्सपेंशन करी, मैच्योरेशन करी, ठीक है। डिफरेंशिएशन में दोनों ही चीजें आती होती है, एक्सपेंशन भी आती है, मैच्योरेशन भी आती है, ठीक है। मैच्योर सेल बन गया, मैच्योर सेल ने अपना काम किया जिंदगी में, फिर काम कुम करके वो मर गया, बूढ़ा हो गया और उसकी डेथ हो गई। ये सारा डेवलपमेंट है। मेरिस्टेमेटिक सेल से नए सेल्स बने, ये भी डेवलपमेंट है। नए सेल से फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल ही बने, वो भी डेवलपमेंट है। मेरिस्टेमेटिक सेल से मैच्योर सेल बन गया, मतलब कि परमानेंट टिश्यू बन गया, ये भी डेवलपमेंट है।
परमानेंट टिश्यू ने अपना काम किया, ये भी डेवलपमेंट है, परमानेंट टिश्यू में मर गया, ये भी डेवलपमेंट है। तो आप इसको और अच्छी तरीके से ऐसे समझ सकते हो, मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ किया, सेल डिवीजन किया, वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल बना दिया। अगर परमानेंट सेल बनाया तो डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, मैचुरेशन किया, मैच्योर सेल बनाया, बुढ़ापा आया, मर गया। सिंपल है वाला डायग्राम, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आगे डेवलपमेंट को छेड़ने वाले कौन कौन से फैक्टर्स? मैं अभी टाइमर स्टार्ट करूंगी। मैं टाइमर स्टार्ट करना भूल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं है, अब मैं अच्छे से पढ़ूंगी। ये वाला मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है ना। मैंने स्लीपर कहीं छोड़ दिया है, पीछे की तरफ रख दिया। Okay. Plant growth regulator characteristics. The plant growth regulator PGR are small, simple molecule of small trouble करने के लिए small simple molecule of diverse chemical composition. They could be indole compound. They could be indole 3 acetic acid. Okay, indole compound, indole 3 acetic acid, indole bata auxin, indole auxin, adenine derivatives, N6 phosphoryl aminopurine, N6 phosphoryl aminopurine derivatives, N6 derivatives of adenine, DNA जहाँ छ त्यहाँ पठाउँछ adenine derivatives, N6 phosphoryl aminopurine, N6 phosphoryl aminopurines derivatives, adenine derivatives, N6 phosphoryl aminopurines, kinetin, N6 phosphoryl aminopurine, kinetin. इफ़ यू आर देयर शुभम एंड यू आर लिसनिंग, मैं ना इसके बाद ये सेशन एंड करने के बाद ना मैं 1 आवर जितना का ब्रेक लूँगी, ओके? क्योंकि मेरा 4 आवर कंप्लीट हो जाएगा ना। Adenine derivatives, N6 phosphoryl aminopurine, kinetin. Kinetin is mainly cytokinin. Kinetin is mainly cytokinin. Indole compound are basically auxin. Indole compounds are basically auxin. Okay. Adenine derivatives, N6 phosphoryl aminopurine, N6 phosphoryl aminopurine, kinetin. Derivatives of carotenoid, abscisic acid, ABA. Derivatives of carotenoid, abscisic acid, ABA. Terpenes, gibberellic acid, terpenes, gibberellic acid, terpenes, gibberellic acid, GA3, or gaseous ethylene, C2H4. Plant growth regulator are variously described as plant growth hormone or phytohormones, plant growth substances, plant hormone or phytohormones in literature. Gibberellins, gibberellic acid from terpenes, gibberellic acid, adenine derivatives, N6 phosphoryl aminopurines, kinetin, N6 phosphoryl adenine derivatives, N6 phosphoryl aminopurines, kinetin, N6 phosphoryl aminopurines, kinetin. Kinetin are mainly cytokinin, okay? N6 phosphoryl aminopurine and kinetin. Indole compounds are auxin. Abscisic acid, derivatives of carotenoids. ABA, abscisic acid. The PGRs, okay, PGRs are simple complex molecule, simple molecule of diverse
chemical compound. Diverse chemical composition. Small and simple. They are small and simple. The PGRs can be broadly divided into two groups: plant growth hormone or promoting, and other is inhibitory. One is promotory, other one is inhibitory. Functions, okay, based on their functions in a living plant body, PGRs can be broadly divided into two groups based on their functions in a living plant body. One group of PGRs are involved in growth promoting activities. One group of PGRs are involved in One group of PGRs are involved in growth promoting activities such as cell division, cell enlargement, and pattern formation. PGRs, okay. The PGRs can be broadly divided into two groups based on their function in a living plant body. One group of PGRs are involved in growth promoting activities. PGRs can be broadly divided into two groups based on their function in living plant body. Plant growth promoters, example, auxins, gibberellin, and cytokinin. One group of PGRs are involved in growth promoting activities such as cell division, cell enlargement, pattern formation. Pattern, fruits, leaf, flower की necessary order पे होना, okay. Pattern formation. Pattern formation, tropic growth, sun and gravity, okay. Tropic growth, flowering, fruiting, and seed formation. Flowering, fruiting, seed formation, cell division, cell enlargement, tropic growth, pattern formation. These are all plant growth promoters. Example, auxin, gibberellin, and cytokinin. Auxin, gibberellin, and cytokinin are plant growth promoter. Plant growth promoter. Example, auxin, gibberellin, and cytokinin. मैं यहाँ पर लिखती हूँ. Plant growth and development. Development. The plant growth regulator PGRs are small. ये सब नहीं पढ़ना है. कहाँ से पढ़ोगी ये? Indole compounds, auxin, indole 3 acetic acid, indole compound, auxin, AUXIN, auxin. Number 2, terpenes, TERPENES, terpenes. Example, gibberellic acid, GIBBERELLIC, gibberellic acid. Number 3 is carotenoids, derivatives of carotenoids, derivatives of carotenoids, derivatives of carotenoids. Abscisic acid, example, abscisic acid, abscisic
abscisic acid, derivatives of carotenoid. Terpenes, gibberellic acid. I was, it's okay. Adenine derivatives. Adenine derivatives. Adenine derivatives. Kinetin. We have kinetin. That is cytokinin. And N6 for furyl. FURYL for furyl. Aminopurine. N for furyl aminopurines. Plant growth promoter. Plant growth, GROWTH, growth promoters. We have plant growth auxin, AUXIN, auxin. Number 2, cytokinin. Number 3, gibberellin or gibberellic acid. Okay, auxin, gibberellins and cytokinin. GIBBERELLINS, gibberellins. Okay, PGR promoters, they are plant growth promoter. Seed formation, fruiting, flowering, tropic growth, pattern formation, cell division, cell enlargement. Okay, plant growth promoter. The PGRs of the other group play an important role in plant response to wounds and stress of biotic and abiotic origin. The other group plays an important role in plant responses to wounds, stresses of biotic and abiotic origin. They are also involved in various growth inhibiting activities such as dormancy and abscission. Okay, dormancy and abscission. Plant inhibitor, plant growth inhibitor. Plant growth, GROWTH, growth inhibitor. Plant growth inhibitor. Dormancy, example. Plant growth. Okay, kullita cytokinin, gibberellin, auxin. The plant growth promoter, abscisic acid, ABA. Okay. PGR, abscisic acid, belongs to this group. The gaseous PGR, ethylene, can fit either of the group, but it is largely an inhibitor of growth activity. It is largely an inhibitor of growth activity. Ethylene. Dual function. DUAL. Dual role. It acts as promoter and inhibitor. Ethylene can act both as promoter and inhibitor. The discovery of plant growth regulator. Interestingly, the first discovery of each of the 5 major groups of PGR have been accidental. All this started with the observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin, which they observed that the coleoptile of canary grass, coleoptile of canary grass responded to unilateral illumination by growing towards the light source, phototropism. Okay, growing towards the light source, phototrophism.
phototrophism. 7. PHOTO, phototrophism. Phototropism. Phototropism, growing towards light. Growing towards light. Light. Example, canary grass. Canary grass. Grass. Canary grass. Okay. Phototropism. Phototropism. After a series of experiments, it was concluded that the tip of coleoptile was the site of transmittable influence. After a series of experiments, it was concluded that the tip of coleoptile or coleoptile was the site of transmittable influence that caused the bending of the entire coleoptile. Auxin was isolated by F.W. Wendt from tip of coleoptile of oat seedling. Auxin was isolated by F.W. Wendt. Okay, auxin. F.W. Wendt from tip of coleoptile of oat seedling. Avena curvature. Oat. Avena sativa. Sativa. Avena sativa. Scientific name of oat. Avena sativa. Avena curvature test given by F.W. Wendt. F.W. Wendt gave Avena curvature test. Okay. F.W. Wendt isolated auxin. Auxin was isolated by F.W. Wendt from tip of coleoptile of oat seedling. Coleoptile of oat seedling. Avena sativa. F.W. Wendt gave Avena curvature test. Avena curvature test was given by F.W. Wendt. He isolated the auxin from oat seedling. Avena sativa. Experiment used to demonstrate that tip of the coleoptile is the source of auxin. Tip of the coleoptile is the source of auxin. Arrow indicate the direction of light. Cell gets large auxin cells. Okay, auxin formation. Remove auxin, no bending. Agar with auxin. F.W. Wendt isolated auxin from oat seedling. Avena sativa. Avena curvature test. Okay. Bakani or I don't know, whatever. Bakani, foolish seedling, disease of rice seedling. Foolish seedling disease of rice seedling was caused by a fungal gibberella. Fungal pathogen gibberella. E. Kurosawa. Gibberella fusicuroi. E. Kurosawa. Gibberella fusicuroi produces gibberellic acid. E. Kurosawa. E. Kurosawa. कितना बड़ा मत घुस गया है रूम के अंदर. वहां पर है. The Bakani foolish seedling disease of rice seedlings was caused by a fungal pathogen Gibberella fusicuroi. Gibberella fusicuroi. मैं इसको मार दूं क्या स्केल से देके? रुको, इसको मैं अभी मार देती हूँ. अगर मैं इसको नहीं मारी ना तो ये अपना विंग का सारा डस्ट ना यहाँ पर गिराएगा और उससे इचिंग होती है. यहाँ पर है, मैं इसको कैसे पकड़ूं? टेप भी नहीं है ना, वरना टेप से कर सकते हैं. वेट, मेरे पास एक आइडिया है.
इसके अंदर रखा है। ये फंस गया है क्या? नहीं उड़ रहा है। भाग गया। Foolish seedling Bacani disease of rice seedling was caused by fungal pathogen Gibberella fusicuroi. E. Kurosawa reported the appearance of symptoms of the disease in uninfected rice seedling when they were treated with a sterile filtrate. फिर से बाहर निकल गया इसको ना मैं। अब मैंने बेडशीट चेंज नहीं किया ना तो ये फिर से मुझे खुजली करवाएगा। आई हेट मॉथ्स। बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा आते हैं और वो ब्लैंकेट वॉर्म भी। पकाने पुलिस शेडलिंग पुलिस लिविट। मेरा सारा ध्यान ही वहीं पर था। The Bakani it's not Bakani, it's Bakani because it's Japanese Bakani. Foolish seedling disease of rice seedling was caused by fungal pathogen Gibberella fusicuroi, which was studied or reported by E. Kurosawa. Appearance of symptoms of the disease in uninfected rice seedling when they were treated with a sterile filtrate of the fungus. The active substances were later identified as gibberellic acid. Gibberellic acid. Bakani. Foolish seedling Bakani. Okay, gibberellic acid. Bakani. E. Kurosawa. Kurosawa K-U-R-O. E. Kurosawa. Auxin. FW went. Rice seedling. Auxin oat seedling. FW went. Skoog and his co-worker observed that from the internodal segment of tobacco stem, the callus, a mass of undifferentiated cell, proliferated only if, in addition to auxin, the nutrient medium was supplemented with one of the following: extract of vascular tissues, yeast extract, coconut milk, or DNA. Excuse me. Yeast extract,
coconut milk, yeast extract, coconut milk or DNA. Yeast extract, coconut milk or DNA. Skoog and Miller. Skoog and Miller. Skoog, Skoog and Miller. Skoog and his co-worker observed that internodal segment of tobacco stem, the callus proliferated only if in addition to auxin, the nutrient medium was supplemented with one of the following: extract of vascular tissue, yeast extract, okay, extract of vascular tissue, yeast extract, coconut milk or DNA. Skoog and Miller later identified and crystallized the cytokinases promoting active substance that they termed kinetin. Kinetin promotes cytokinesis. Skoog and Miller, kinetin. Okay, promote cytokinesis. Skoog and Miller, okay. In the nutrient medium, if the nutrient medium was supplemented with extract of vascular tissue, yeast extract, coconut milk or DNA, okay. Internodal segment of tobacco stem, nodal segment of tobacco stem, TOBACCO, tobacco stem. कुछ तो करना ही होगा इसमें. You will really do it. During mid-1960s, 3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 different kinds of inhibitors. Inhibitor B, abscissin 2 and dormin. Inhibitor B, abscissin 2 and dormin. Later, all the 3 were proved to be chemically identical. It was named abscisic acid, ABA, cousin conferring the release of volatile substance from ripened orange, HH cousin, that hastened the ripening of stored unripened banana. Later, this volatile substance was identified as ethylene or gaseous PGR. Ethylene, ENE, double bond वाला है. H4, C2H4, ethylene. HS cousin, COUSIN, cousin. Gaseous, 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 PGR, ethylene, 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 ripening, RIPENING, ripening of fruits. Physiological effect of plant growth regulator. Gibberellin, cytokinin, abscisic acid. Zalim chandan trick. Zalim chandan root and flower पर herbicide addition बंद करो. Okay. Xylem differentiation chandan, cell division. Xylem differentiation, function of auxin 8. Okay, cell division, root in stem cutting, adventitious root. Okay, root and stem cutting. Flowering in pineapple, auxin promote flowering in pineapple, auxin. Parthenocarpy in tomato, induces parthenocarpy in tomato. Herbicide 2,4-D is herbicide addition. Apical dominance, prevent root and leaf drop at early stage. Xylem differentiation, cell division, root and stem cutting, adventitious root. Okay. Flowering in pineapple, promote flowering in pineapple. Parthenocarpy in tomato. Herbicide 2,4-D is herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic herbicide.
Addition is apical dominance. Apical dominance. Prevent fruit and leaf drop at early stage. Prevent fruit and leaf drop at early stage. Auxin means to grow. First isolated from human urine. Includes IAA. Includes IAA. First isolated from human urine. Includes indole 3-acetic acid. Synthetic and natural compounds both are found. Okay. Regulating properties. Growth regulating properties produced by growing apices, roots and stem. Okay. First isolated from human urine. Includes IAA, synthetic and natural compound. First isolated from human urine. Includes IAA, synthetic and natural compound. First isolated from human urine. Indole acetic acid, synthetic and natural compound. First isolated from human urine. Includes indole 3-acetic acid, indole 3-acetic acid, synthetic and natural compound. Growth regulating properties. Produced by growing apices, roots and stem. Migrate to region of action. Auxins isolated from plants are indole 3-acetic acid and indole butyric acid. Synthetic auxins are Na, naphthalene acetic acid and 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic. Extensively used in agriculture and horticulture. Two are synthetic, two of these are synthetic, two of them are natural. Migrate to region of action. Produced by growing apices, root and stem. Auxins are produced by growing apices, roots and stem. Growth regulating properties. Growth regulating properties. First isolated from human urine. First isolated from human urine. Includes IAA, indole acetic acid. Functions of auxin: helps in rooting in stem cutting. Helps in rooting in stem cutting. Plant propagation: helps in rooting in stem that have been cut. Plant propagation, okay. Promote flowering in pineapple. Helps prevent fruit and leaf drop at early stage. Help prevent fruit and leaf drop at early stage. Fruit and leaf drop at early stage. Promote abscission in older leaf and fruit. Promote abscission, okay, ये भी करता है. Promote abscission in older leaf and
fruit, mature. Okay. Apical dominance. Auxin is related to apical dominance. Promote the growth of apices only. Apical bird inhibits the growth of lateral birds, axillary birds. Apical bird inhibit the growth of lateral bird or axillary birds. Decapitation helps to overcome apical dominance. Decapitation helps to overcome apical dominance. Decapitation helps to overcome apical dominance, resulting in the growth of lateral bird. Resulting in the growth of lateral birds. Promote the growth of apices only. Apical bird inhibits the growth of lateral birds. Decapitation. Capitation helps to overcome apical dominance, resulting in the growth of lateral birds. Applied in the plantation of tea and haze making. In tea plantation. Applied in tea plantation and hedge making. Applied in tea plantation and hedge making. Applied in tea plantation and hedge making. Function. Parthenocarpy in tomato. Functions of auxin. Another other function of auxin is induces parthenocarpy in tomato. 2,4-D. 2,4-dichlorophenoxyacetic is a herbicide, kills dicot weed, promoting the growth of monocot. Xylem differentiation. Controls xylem differentiation and helps in cell division. Controls xylem differentiation and helps in cell division. ऑक्सिन को xylem differentiation DIFFEREN differentiation controls auxin controls xylem differentiation, helps in cell division. Promote growth of growth of root and shoot apices. Induces parthenocarpy in tomato. Auxin induces parthenocarpy in tomato. Flowering in pineapple. Prevent leaf and fruit fall in young stage 6, 7, 8. Fruit falling in young stem. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Root and stem. Parthenocarpy. Herbicides. 2,4-D. Herbicides. CIDs. Herbicides. 2,4-D. Herbicides. 2,4-D. 2,4-dichlorophenoxyacetic. Shows the phenomena of apical dominance.
Root and flower. Root and stem cutting. Rooting and stem cutting. Rooting and stem cutting. Flowering in pineapple. Parthenocarpy in tomato. Flowering in pineapple. Parthenocarpy in tomato. Apical dominance. करो. Chandran. Root and flower. Flower per parthenocarpy. Herbicides 2,4-D herbicide ऐड करना. Apical dominance बंद करो. बंद this. Close. Stops. Prevents the falling of leaf and fruit. Drop at early stage. Done. Done with auxin. Auxin, from Greek auxin, to grow, was first isolated from human urine. The term auxin is applied to the indole 3-acetic acid IAA and to other natural and synthetic compounds having certain growth regulating properties. They are generally and synthetic compounds having certain growth regulating properties. They are generally produced by the growing apices of stems and roots. Migrate to the region of their axon. Auxins like IAA and indole butyric acid IBA. Indole butyric acid IBA have been isolated from plants. NEA, naphthalene acetic acid, and 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic synthetic auxin. All these auxins have been used extensively in agriculture and horticulture practices. They help to initiate rooting in stem cutting. An application widely used for plant propagation. Auxin promote flowering in pineapple. Helps to prevent fruit and leaf drop at early stages, but promote the abscission of older, mature leaves and fruit. In most higher plants, the growing apical buds inhibit the growth of lateral axillary buds, a phenomenon called apical dominance. Removal of shoot tips, decapitation usually result in the growth of lateral buds. It is widely applied in tea plantation, hedge making. Auxin also induces parthenocarpy, example in tomato. Fertilization without the formation of fruit without the fertilization. Formation of fruit without fertilization is parthenocarpy. Induces parthenocarpy. Fruit formation without fertilization. Seedless fruit. Tomato के auxin. Auxin treated. It's just a bike. Auxin also induce parthenocarpy, example in tomatoes. They are widely used as herbicide. Auxins also induces parthenocarpy, example in tomatoes. They are widely used as herbicide. 2,4-D, widely used to kill dicotyledonous weed. 2,4-D, widely used to kill dicotyledonous weed, does not affect mature monocotyledonous plant. It is used to prepare weed-free lawns by gardeners. Auxin also controls xylem differentiation and helps in cell division.
gibberellins, cytokinin, cytokinin, cytokinesis, cell division. Produced in shoot whenever there is cell division. Cytokinesis, cytokinin, cytokinesis, cell division. Produced in shoot whenever there is cell division. Produce in shoot whenever there is cell division. Produce in cytokinin, produce in shoot whenever there is cell division. Shoot apex, apical meristem and lateral buds growth. Okay, young leaves and promote young leaves growth and young fruit and young leaves along with lateral buds growth. Growth of lateral buds, young leaves and young fruit. Shoot apex, apical meristem. Production of cytokinin, area of rapid cell division. Area of rapid cell division in stem, root, apex, shoot, bud, young fruit. Discovery of cytokinin. Swarm of herring fish. Got it. Autoclave. Heated at high pressure. DNA degrade. Cytokinin. Kinetin. Kinetin. Sperm of herring fish. Got it. Overcome apical dominance.
Addiction. Overcome apical dominance. Okay. Overcome addiction is overcome apical dominance. Overcome apical dominance. Mobile. Nutrient mobilization. Nutrient mobilization. Prevent easing. To prevent delay. Easing. Easing. Cell division. Lateral shoot. Adventitious. Lateral and adventitious shoot growth. Shoot and adventitious shoot growth. Growth of lateral and adventitious shoot. Growth of lateral and adventitious shoot. Okay. Shoots. Leaf. New leaf. Growth of new leaf. Growth / formation of new leaf. Growth of new leaf. New leaf and growth of chloroplast. Growth of chloroplast. Okay. To prevent aging or to delay senescence. Delay senescence. SENESCENCE. To delay senescence and to delay senescence. Growth of new leaf. Growth of chloroplast. Delay senescence and overcome apical dominance. Overcome apical dominance. Overcome apical dominance. Mobilization of nutrition. Mobilization of nutrients. Nutrients. Cell division. Growth of lateral and adventitious shoot. Growth of new leaves. Growth of chloroplast. Delay leaf senescence. Overcome apical dominance. Nutrient mobilization. Cell division. Produces new leaves. Produces chloroplast in new leaves. Lateral shoot growth. Adventitious shoot growth. Lateral shoot growth. Adventitious shoot growth. Overcome apical dominance. Nutrient mobilization. Delay senescence in leaf. Plant-based cytokinin. Plant-based cytokinin. Plant-based cytokinin. Plant-based cytokinin क्या होता है? Plant-based cytokinin. Plant-based cytokinin. It is zeatin. 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 Animal-based cytokinin. Animal-based cytokinin. It is kinetin. It's from corn. Zea maize. Zea maize. Okay. And this one for fish. Kinetin from fish. Herring fish. HERRING. Herring fish. Sperm. SP. Sperm of herring fish. Zeatin. Okay. Zeatin. Kinetin.
Cell division produce in shoot whenever there is cell division. Shoot apex, apical meristem, lateral buds growth, young leaves and young fruits. Area of rapid cell division: stem, root apex, shoot buds, young fruit. Okay, discovery of cytokinin. Okay, cytokinin. Then we have gibberellins. Functions of gibberellin: cytokinin, ethylene, abscisic acid. Terpenes, gibberellic acid. Another PGR, hundreds of gibberellin from fungi and higher plants. Gibberella fusikuroi Bakani, fully shielding in rice. Okay. First discovered gibberellin is Ga3, gibberellic acid. Ga3 most extensively studied. Gibberellins are denoted by Ga1, Ga2, Ga3, so on. All GAs, gibberellic acids are acidic. They are acidic. Ga3 most extensively studied and first discovered. Terpenes. Functions of gibberellins: increase in length of stem, elongate fruit like apple and grapes, delay senescence in fruit, delay senescence in fruit. Delay leaf senescence. Okay, यहाँ पर लिखते delay leaf senescence, delay senescence in fruit. Cytokinin also delay senescence. Senescence, SCENC, SCENC. Cytokinin also delay senescence in leaf. That's okay. Delay senescence in fruit. Okay. Senescence in leaf. Delay senescence in fruit. Increase in length of stem, elongates fruit like apple and grapes. Delay senescence in fruit. Extend market period of fruit. Increase in length of stem, elongates fruit like apple and grapes. It even elongates the stalk of grapes. Delays senescence in fruit. Okay, cytokinin delays senescence in leaf. Gibberellins delay senescence in fruit. Extend market period of fruit. Increase length of sugarcane to increase the yield. Early seed production in conifers, speed of malting process, and bolting in rosette plants like beet and cabbages. Sugarcane stem, bolting, malting, gibberellin elongates sugarcane stem, apple, grapes, and elongate grape stalk too. Okay, market period of fruit is extended. Delay senescence. It delays senescence of fruit. Cytokinin delays the senescence in leaf. Conifers hasten maturity of conifers, and the production of seed is early. Production of seed in conifers is early by the actions of gibberellins or gibberellic acid. Cytokinin. Functions of cytokinin. Functions of cytokinin. Kinin shoots, new leaves, and chloroplast. Chloroplast delay senescence. SENESCENC. Senescence. So,
Over mobile diction mobile cell division, lateral shoot and adventitious shoot growth. Growth of new leaf and chloroplast. CHLOROPLAST. Growth of new leaf and chloroplast. Delay senescence in leaf. Cytokinin delay senescence in delays senescence. SENESCENC. Senescence in leaves. Whereas gibberellin delays senescence in fruit. Senescence delay. Old age. Okay. Overcome apical dominance. Apical dominance. Cytokinin. Overcome apical dominance. Mobility of nutrition. Mobility of nutrients. Mobility of nutrients. Function of gibberellins. GIBE. Gibberellins. 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 Functions of gibberellins. Function of gibberellin. Increase the length of stem. Increase the size of apple and grapes. It also increases the stock of grapes. Okay, elongates root like apple and grapes. Okay, elongates root like apple and grapes. Increase the length of stem. Delay senescence in fruit and increase the market. Extend the market period of fruit. Increase length of sugarcane. Early seed production in conifers. Speed up malting and bolting process. Speed of malting and bolting process. Speed of malting and bolting process. Speed of malting and bolting process. स्लॉट 4 कंप्लीट. मैं चैट साउंड कर देती हूँ, तुम लोग बात कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा कंप्लीट करूँगी अपने साइड से. Increase in length of the stem, elongates roots like apple, grapes, delay senescence in fruit, extend market period of fruit, increase length of sugarcane, early seed production of conifers, speed of malting process, bolting. Bold Mali Gabber elongates SHE. Bold Mali Gabber elongates SHE. Market corner. At market corner. Okay. Bold Mali Gabber elongates Mali Gabber elongates SAG at market corner. At market MAR market corner. RNER corner. Bolting in rosettes. Rosettes. Cabbage and beetroot. Is it beetroot or just beet? Okay. Mali malting process. MALTING process. Speed up malting process. Gibberellin. GIBBERELLIC. Gibberellic acid or gibberellin. Elongates stem, apple, grapes and grape stalk. GRAPS, grapes stalk. Market extend market period. Corner. Hasten maturity of conifers. Seed production. Early seed production. Okay. Apple, sugarcane stem.
Stem of sugarcane, sugar, sugarcane. Stem of sugarcane elongates, bolting. Gibberellins elongates sugarcane stem. Apple, grapes. Fruit. हाँ, अब तो मैं इतना लंबा वाला ब्रेक लूंगी, कितना खुशी मिल रही है। हाँ किया था। तुमने ये अभी लिखा क्या? ओह सच्ची में? हाँ, क्योंकि मैंने 4 आवर कंप्लीट किया ना। मैं कब से चाह रही थी कि मैं ऐसा लंबा वाला ब्रेक लूँ। 6:20 हो गया। आज तो देखो सुबह सुबह ही 4 आवर कंप्लीट हो गया। तो अभी 4 एक्स्ट्रा कर लेंगे तो 8 आवर्स इतना तो हो ही जाएगा। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। और सही है। लेकिन अभी तो मैं तो ब्रेक लूँगी लंबा वाला। मैंने सोचा था कि मैं 1 आवर का लूँगी, लेकिन मैं आई थिंक 30 मिनट का लूँगी। बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन ये लास्ट वाला सेशन ना मेरा इतना अच्छा नहीं था। मेरे दिमाग में इतना सा चीज़ें घूम रहा था। आई थिंक 2 और करने से ना मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं टेस्ट दूंगी। खूब सारा मोटिवेशन वीडियो देखूंगी भर भर के। मैं रात भर से पढ़ाई कर रहा हूँ। सही है। फिर सो जाओ तुम। पुराना है। ओके। यूल स्टडी शुभम। मैं चली जाऊंगी। मैं एक लंबा वाला वो लेती हूँ, ब्रेक लेती हूँ। बाय। पेपर है कल। ऑल द बेस्ट। मैं चली जाती हूँ। हाँ शुभम, लेकिन थैंक यू 3 बजे आने के लिए शुभम। अच्छी बात है ना AK वाइन्स। तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए गुड लक। अस्तगफिरुल्लाह। You're welcome. मैंने इसमें नमक पानी पहले पिया था, फिर मैंने इसमें चीनी वाला चाय पिया, तो कभी नमक वाला टेस्ट आता है, कभी चीनी वाला। लेकिन अभी मैं चली जाती हूँ। ओके बाय बाय। स्पेशली सबको बाई, लेकिन स्पेशल बाई टू शुभम, क्योंकि वो मेरे साथ पढ़ता है ना। बाय बाय AK वाइन्स।